Okay. So we'll just copy this. 5500. So we'll go with 550C, new WPT. Config wise, everything is same. Yes, just ignore the other storage type. Okay. किधर गया staging, yeah, GR. We'll save it. Then indicator. 5Z. Okay. 5500Z. Okay. Then determination. So 5Z. Then 550S head. Okay. Just maintain this. And then I will maintain this into the product /o/SAWM/mat1. Okay, we'll just take a product number. So is mat1 and mat2. Okay, maybe we'll go with mat1. Okay, mat1 5500. Okay, description. So this is the material number. Okay, so इसके जो WPT है यहाँ पे will maintain this one. Okay, ये तो strategy वगैरह का है. We just remove this indicator also, and also this section also. Okay, now we'll create one delivery, or we'll create new order. Okay, 100 quantity. Last time हमने क्या देखा था? HU देखा था, right? Creation का. Here Yes, we sir. can Yes. see. Yes. आपके साथ और एक था ना? 3 लोग थे ना आप? Yes, sir. Abhishek. अभिषेक किधर गए वो? बहुत दिनों से दिखे नहीं है. मतलब कर रहे हैं ना SAP? तो इसका नहीं मालूम सर, पर कर रहे हैं. मतलब आप ही का दोस्त है, राइट? सो Yes, yes. इसलिए उनको टाइम नहीं मिलता सर, ऐसा ऐसा ऐसी दिक्कत है. ओके. सो VL31N. तो जब उनको टाइम मिलता है तभी वो देख के कर लेते हैं ऐसा है. होगा रिकॉर्डिंग देख के. हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है. It's said 01. सो इवन ये भी पॉसिबल है. लेट्स से अगर मैं 10 प्रोडक्ट लेता हूँ, राइट, एंड आई वांट टू पैक 5 प्रोडक्ट, इवन दैट इज आल्सो पॉसिबल, राइट? So what we have to do, for example, now I will just check is yeah, 5 okay, 5.1. Need to check the packaging. 122. Delete this. Okay, so you can pack like this. Okay, and then यहाँ पे quantity you can make 5. Okay, this 5 are packed in this HU. Okay, and then remaining this 5 into this. Okay. Right, so you can also pack partial quantity. Okay, then save it.
we'll check that delivery. So same thing, same information you can see over here, right? Now just मैंने बताया था, this is an external number range, right, for EWM. Now if you want to change for some reason, I want to change the packing. Okay, गलती से ये 2 box किसने तो create किया, it should be 1 box only, right? So 1 2 2. Okay, so this 1 box is created. Now again Sir, drag and drop. सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही. Atharva, same for you? It's visible. Let me It's stop visible, sir. and again, yeah, just let me stop and share it again. Sachin, kindly change your view. Okay, wait. Yeah, now Just click on view and click over content view. Upper right corner, Sachin. Sachin left. Okay. So you can just select over here. You can select this empty HU, right? Or else you can drag and drop like this way again. Okay, like this, right? And then save. This warning message, so it's okay. Those HU are empty, right? Now, if you do good receipt, then only that HU information will get updated. Okay. If you check in this server, only one issue is there, is a little bit slow. Okay, so just wait for a minute. Okay, it's completed. Oh, strange, but why the PPF is not triggered? Okay, the HU number is duplicated. Is duplicate. जो 7 series number जो है वो already number है system में available. So maybe I will change the HU number. Okay. Anyhow, I'm going to create a new warehouse. In that I will change the HU. Even we can also pack HU into HU, which is called nested HU. Okay. मतलब कैसे now 10 product, right? So let's say we'll pack 5. Okay. Again 5 in this and then 5 in this. Now I want to pack both the HU, let's say on big HU. So nested HU मतलब कैसा? Like this. Okay. ये bottle है, ये box में है, ये box इस carton में है, and then on this is a like 4 boxes or 8 boxes on pallet. Right, this is called nested HU. Okay, so how to pack? Now here you can see the pack material. Now is pack HU. Okay, go here, then again create packaging material. Now see this empty, right? Select this and then select this two with the weight and then pack. मतलब ये box में ये दोनों छोटे boxes है. If you check here you can see
42 में 40 और 41 है, right? Save it. Now if you check the delivery, you will see there is only one issue, right? If you click over here, you will see yeah, good receipt. So if you go here, pack, okay, see HU into HU, right? Agar let's say again ये wrong है, so I will select this and I will say empty, मतलब वो empty हो गया और वो दोनों बाहर आ गए, right? Then again save it. Okay, now if you come back, you can see again 2HU, and now I can post the good receipt by HU जो मैं कल बात कर रहा था पर last time, right? See, is partially completed. अगर मैं ये delivery देखता हूँ, तो 2 HU तो हो गए अलग अलग, पर गुड रिसिप्ट मैसेज अभी तक आया नहीं है. Yeah, it's fine. This delivery number, yeah, its delivery number is also fine. See, yes, partial quantity. Okay, status is still in process. जब मैं इसका भी good receive करूँगा, because it's final issue, then status will change to completed. Okay. ये मैं उस दिन ट्राई आपको दिखाने के लिए ट्राई कर रहा था. Yeah, again is the number range issue. So same number range is already available. That's why system will not able to update it. Maybe I will go with Yes. some new number range. Okay. Okay, sir. Yes. Yeah. Any question in this? प्रोसेस समझ में आया सर, पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई फिर से. एक बार अगेन समझे ना सर प्रोसेस. कौन सा? ये जो नेस्टेड वाला था वो. So nested मतलब कैसा? Box into box. एक बॉक्स Yes. के अंदर दो Yes. बॉक्स है, राइट? Yes. 10 क्वांटिटी. ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और फिर obviously you need to go with 5. Means you can go in any quantity. Okay, it's not mandatory to go with 50-50. You can even pack 9, 1, 8, 2 like that. Right. So मैं पहले ये 5 इसमें पैक करता हूँ. Then 5 will remain out of 10, and then those 5 I will pack in this. Okay. Then pack HU में जाके यहाँ पे मैं और एक HU क्रिएट करता हूँ. Maybe 21. Okay, not 21, 23. Let's see. Yeah, 23 is palette. See, palette. Okay. अभी ये palette में ये दो box pack है. Okay, and then save it. You can see that here. Okay. Now, if you go to the pack here, you can see वो palette के अंदर दो box है. Okay. Clear? Yes. And then if I click over here empty, means वो empty हो गया, दो box अलग हो गए. Okay, save it. So दोनों अलग अलग हो गए. And then when we do good receipt, then only it will update. Okay, ERP side. Okay. Then
ये जो बॉक्स है राइट, सो ये अगर ऐसा बॉक्स आता है, we receive box like this one, so obviously we'll do the put away also, right? Now if I go to the put away for this 2HU, okay, so see system is going for 10 pieces but दो boxes है अलग अलग, right? Yes. तो system क्या कर रहा है, लूज प्रोडक्ट कंसिडर कर रहा है, राइट? 10 के 10 पीस। सी इट शुड बी हैंडलिंग यूनिट, वहां पे एचयू का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, नॉट लूज प्रोडक्ट, राइट? सो ये सेटिंग क्यों है, बिकॉज SAP like there are some business, right, It is where the they bunch want of to, 10 units, huh? yes, quantity, see the required quantity, open quantity, but हमने पास में ये किया है, मर्ज किया। yes. If business say that okay no we don't want HU while doing put away, we'll always go with loose product, हम उसको open करके ही रखेंगे, Okay. right? So that in that case system simply ignore the HU, but obviously whenever we receive HU we want system should go with HU only, right? So in that Yes. case what we can do, तो उसके वजह से मैंने नया WPT क्रिएट किया, बिकॉज आपके जो WPT होगा उसमें ये सेटिंग नहीं होगी, बट नाउ इफ यू चेक फाइव 550Z new WPT, right? If you scroll down here you can see select HU without storage process, click over here and save, okay, without storage process. Now if I cancel this and again try to create warehouse task, now there is nothing in request, but if you check HU there are 2 lines. Why? Because दोनों का WPT सेम है, अगर दोनों का WPT अलग होता और एक में वो टिक होता और एक में टिक नहीं होता, then again it will look like this कि अलग अलग, एक में 5 quantity और remaining as a loose product. Clear? Clear, sir. Right. Now let's try to create warehouse task. Okay, there are some issue in strategy, no issue, we'll go with manual put away. Okay, create plus, okay, this bean, create plus save, confirmation, वो HU नंबर का कुछ तो करना पड़ेगा. Okay, oh, these are the different one. Okay, let's try to confirm one. हाँ, duplicate number available है system में, so that's why system allow नहीं कर रही है. Okay, let me check the number range. PRO. Yeah, A1 and A2 we can take, but उसमें भी possibility है कि 51. No, so it's very tricky create number range, because वो number यहाँ पे repeated नहीं होना चाहिए.
फॉर एग्जाम्पल अगर 7 है, राइट, to 7 to 7999, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो ऑलरेडी चला गया है, राइट. सो व्हाट आई विल डू, go with A1 to A999. Number interval limits, so 35001 to 35999 ओवरलैप हो रहा है ये नंबर ऑलरेडी. नाइनटीन थ्री टू ये भी ओवरलैप हो रहा है A1 के साथ. हाँ, G1 की क्या रेंज, 100 to 9. ओके, ER 2000. ओके, this one सब नंबर लेंच ले चुके हैं. डिलीट कर सकते हैं. तो नहीं चलेगा. अल्फा ओके, एक कर सकते हैं. 0102 PRO एक वर्क अराउंड शायद से काम करेगा. लेट्स सी.
Hello, can you hear me? Sorry, I was talking on mute. It look like server is down. Yeah, can you hear me? Hello. Yes, yes. Yes, sir. Yes. Yeah, सचिन आपका सर्वर काम कर रहा है ना ठीक से? आज ले लिया सर, 4 सैटरडे से बंद था, मालूम है। मैंने आज इतना गालियां दी है ना उनको। क्या हो रहा है, मेरे को टाइम मिलता था उस दिन, पूरा दिन में परेशान हो गए। तो आज जब क्या मैंने इशू है? सबको आपका कॉल इशू क्या किए, था? वो अकाउंट डिसेबल किया था, मैंने ग्रुप पे डाला था ना, ओके ओके, हाँ ओके, हाँ वो उन्हीं वो के चल हाथ ही में नहीं है रहा एक्टिव था, आगे करने नहीं के जा लिए। रहा था। पता नहीं, मैं कल भी 2 दिन से फॉलोअप ले रहा था। हाँ? हम्म। मैडम नहीं थी, कुछ ना लगी, मैंने उनको सर्वर पूरा डिटेल भेज दिया। तो आज फिर से हम्म, मैंने बहुत बार कॉल किया, तो दोपहर को चालू किया। क्योंकि क्या हो रहा है ना, हम आगे जा रहे हैं, मेरा पहले ही नहीं हुआ ना प्रैक्टिस। सेम अब क्या प्रॉब्लम होगा सबके इसमें? साथ हो रहा है। okay, my server is slow. और सुनो ना सर, मेरे को है ना, Yeah. मैंने आज वो एक बार एक पीओ सप्लायर क्रिएट करके दो ना। क्या हो रहा है ना, पीओ ही नहीं क्रिएट हो रही है। आज मैं मटेरियल क्रिएट कर रहा था, उसमें एरर, कुछ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के, फिर वो पीओ के लिए एक सप्लायर चाहिए, वो भी मेरे को नहीं आ रहा था। तो क्या रहा है, साइकिल ही नहीं आ रही ना, एक पीओ इनबाउंड डिलीवरी, यहाँ तक मैं जा ही नहीं पा रहा। हम्म, ठीक है, आपके सर्वर का डिटेल भेज दीजिए, लॉगिन पासवर्ड क्योंकि वगैरह। पीओ क्रिएट करने के लिए वहां पे वेंडर कोड डालना चाहिए, वो भी नहीं। और मेनली वो मटेरियल का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कुछ तो एरर बोल रहा था। मैं मैसेज कर रहा हूँ रेड्डी को कि सर्वर नहीं चल रहा है। ओके, इनके पास ऐसा कोई फिक्स सर्वर नहीं है? नहीं कैसा है, उल्टा ये जो सर्वर है ना अभी जो हम यूज करने वाले वो सबसे अच्छा है फिक्स, ओके। क्योंकि कॉस्टिंग बहुत महंगा है इसका सेटअप का। तो ऑब्वियसली वो जो सर्वर प्रोवाइडर जो है राइट, सो वो सबको शेयर करेंगे। सर तो हो रहा क्या है ना कि हम आगे चले जा रहे हैं, हमारा पीछे का ही रह जा रहा है। बहुत लैग हो रहा है, इसलिए बाकी कुछ या नहीं, वो सबका एक बार यही सर कंप्लेंट ये है सर। आपको ये सर्वर मिल गया ना ये वाला तो हो जाएगा। ये कब तक मिलेगा? अच्छा, ये आपको कल तक मिल जाएगा मोस्टली। उनको पिंग करना पड़ेगा या वो खुद देगी? नहीं मैंने बोला है उनको। और जो चलता है उसमें भी कनेक्शन लॉग आउट बहुत बार आता है, वो भी उन्होंने, अटेंड कुछ तो ऐसा एरर या आता है। उन्होंने में भी क्या किया होगा, लाइक नो वो सर्वर और दूसरे को दिया होगा। सेम यूजर दूसरे पास भी होगा। यस। बट ये अपने एंड का इशू नहीं है, ये उनको सॉल्व करना चाहिए। यस। उन्होंने बोला थोड़ा टाइम लगेगा जो सर्वर प्रोवाइडर है। हम्म। बट या EWM में पर कैसा है ना, हमें अभी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए क्लास चालू करके। या लेकिन आई घर कैन वाले भी अंडरस्टैंड पूछते हैं सर। अभी तो उन्हें क्या और क्या कितने हुआ? दिन चलने होंगे। यस। वही ना, वो बीच में छो दिवाली भी थी सब फिर। दिवाली या वही वही। बट या दैट लाइक उसकी वजह से सो वंस तो मैंने तो टुमारो बता दिया मैं तो घर भी फोर्स कर दूं जनवरी तक, ये जनवरी जनवरी तक तक हमारा खत्म सिलेबस करना है कंप्लीट हो कैसे भी। यस यस जाए। यस। चेक या ओके।
कैसा है, मुझे स्पीड अप करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं सर, आपने स्पीड अप किया ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा, आप जहाँ तक हो वहां तक हमारा कॉन्फ़िग आना चाहिए तब तक। नहीं तो आप स्पीड अप यस। करके आगे निकल जाएंगे, हम फिर से वही, उसके लिए वो सर्वर अच्छे से चलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं सर। क्योंकि हम कैसे सर, आप भी वैसे ही है, मतलब जॉब करके हमें टाइम मिलता है इस करने को, सो इतना टाइम नहीं मिलता, यप, और जब टाइम मिलता है तो तभी नहीं चला तो कोई मतलब, कब वही चलेगा तो फिर? हुआ ना, संडे पूरा वेस्ट हो गया सर, मालूम है, मैं इतना नहीं ना मतलब सर, जब छुट्टी रहता है तभी पूरा वही वही इशू आ जाता है। क्या। और आपके वीडियो लेक्चर्स हम देखते हैं, रिकॉर्डिंग मैंने इतनी बार देखा, वो पूरा अच्छे से मेरे को समझ में आया, WTT या WT ग्रुप, लेकिन कर ही नहीं पा रहा हो। जब टाइम मिलता है, पिछले 4 दिन से बंद, लेकिन वो मेरे को प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आपको कब डिस्कस हो, एक बार हो जाएगा तो फिर तभी कॉन्फिडेंस आता है हम जब खुद करते हैं तो। ओके, या सर ये नंबर रेज असाइन कर रहे हैं क्या? हाँ, अगर प्रॉब्लम ऐसा ना, अभी ये डेटाबेस में HU नंबर है, राइट? तो इवन इफ वी ऐड इट, will give error. So A1 और so A1 is external, A5, so ये देखो, ये एग्जॉस्ट हो चुका है 18000. So maybe what we can do, फाइव वन, इसमें एक जीरो बढ़ा देता हूँ, इसमें एक जीरो बढ़ा देता हूँ। ओके, ये हो गया 51, 52 में 17 वाली सीरीज थी, राइट? 1717 किधर गया? 17, ओके, फिर इसमें एक जीरो बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 9, यस, 51, 52. Okay, then in EWM also we need to do, but yeah, ये फिर नए वेयरहाउस में इशू मारेगा सेम. Okay, let me use this number range for new warehouse only, फिर उसमें इशू नहीं आएगा. और आप भी सेम ही करो, राइट? आपने देखा कैसा करना है, राइट? सो जस्ट ऐड 1 0, ठीक है? सर हमें तो पूरा करना पड़ेगा ना नंबर रेज असाइन फिर से। यस यस, सो आपको लेट्स से 53 54 आपको करना है, और कॉपी करके एक जीरो बढ़ा देना है, उसका डिजिट बढ़ जाएगा फिर. ओके, मतलब आपको फिर इशू नहीं आएगा नंबर रेंज का. नहीं नहीं, वैसे नहीं सर, हमने जो हम्म, पहले असाइन किया था स्टार्टिंग को, वही नंबर रेज असाइन कर रहे हैं ना आप, यहाँ पर सिर्फ एडिट कर रहे हैं यहाँ पर, या मैं अभी राइट? नंबर रेंज या असाइन चेंज करूंगा, फिर 51 52 फिर यहाँ पे मैं हमें चेंज करूंगा, यहाँ पे फिर जाके जो हम हमें कर रहे थे. नया वेयर हाउस बनाना है ना अभी, यस यस यस, तो मैं वही बोल रहा हूँ, नए तो वेयर हाउस उसमें के लिए नया नंबर नंबर रेंज रेंज. असाइन करना पड़ेगा ना। यस यस ओके सर, जो हमने शायद 001 से 00009999 किया था शायद। यस यस. हाँ।
ये सर्वर आपको मिल जाएगा कल तक। सचिन जी, आप मुझे आपके सर्वर का ये दे दीजिए, मैं आपके लिए भी उनसे बात करता हूँ। और ये नहीं, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग बिकॉज नॉट रिलेवेंट। Yes, yes, it's visible. SAP, right? Yeah, defining storage types. Yeah. Okay. Okay, so I have created new warehouse. So yeah, just few setting are still not completed. So basic setup. So I'm just doing that. Okay, it's there. Hope everyone is getting what I'm doing. Some basic configuration. So new warehouse is 7500. Okay, just a moment.
डाला क्या आपने मैसेज? या ओके। सचिन आपका हुआ है क्या सेटअप कंप्लीट? नहीं हुआ, मैं भी डालता हूँ। नो बट आपके पास तो है राइट, मतलब मैंने आपको दिया है। नहीं तो वो वाला वो बोला ना आप टेम्पररी है इसलिए। या बट मुझे लगा आपने किया होगा। नहीं मैंने किया नहीं सर सच। ठीक है फिर आप मतलब मेरा कुछ ऐसा हुआ नहीं है डिस्कशन टू बी ऑनेस्ट, बट आप जो मैंने भेजा है वो आप यूज ठीक है मैं कर देता हूँ। कंटिन्यू विद दैट। या ठीक है चलिए। so yeah, so let me just set up an strategy. So yeah, one more thing. Happy New Year to all. Yeah, Happy New Year. हैप्पी न्यू ईयर सर। Happy New Year, sir. Yes. Okay, I hope you covered all. Okay. Okay, so now we'll continue with our HU, right? So that configuration is not there, so we'll do again from scratch. So for you is also like small recap, right? I guess we have created 51 and 52, right? Last time. This is my, okay, it's packaging.
Okay, so now the number range, we'll check once. Yeah, lucky. Oh, this. So X52 is external number range. Okay. SPRO. Now we'll do the configuration for EWM. What is HU type and HU type group? Hello. Am I audible? Hello, can you hear me? Hello. Yes, sir, you are audible. Yeah. What is HU type group and HU type? HU type means maybe which type of packaging material we are used. So depends on that we decide the type. Means Like sheets, suppose thermocol in such a pallet. no. Hello. Yes. Actually, type means handling unit types, but that जो हम slotting put away के लिए use करते हैं. Slotting put away. put away के लिए use करते हैं. No. No. What's oh shit. Yeah. So within palette, right? Sometimes we have different types of palette, right? Euro
Euro pallet 1 meter, 2 meter, like that. याद आ गया? हमने Size discuss of the size के हिसाब से. yes, so pallet में भी sometime types होते हैं अलग अलग, right? आपने अगर देखा रहेगा कि in warehouse normally we have कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे यूरो पैलेट ही रखना है उन्हें, like that. Euro pallet 1 meter, Euro pallet 2 meter, right? याद आया कुछ? ये वाला फोटो हमने देखा था. हाँ, पायलट्स के टाइप दिखाए थे सर आपने. Yes, so इस ग्रुप फॉर एग्जांपल ये 2 वे एंट्री का है, ये पूरा एक ग्रुप हो गया, राइट? उसमें एचओ टाइप हो गए, फिर ये 3 सेम वे इन 4, like that. क्लियर? वीडियो देखा नहीं ना ये एक वीक? ठीक है. नाउ टेल मी नंबर रेंज का क्या हमने डिस्कस किया था? नंबर रेंज का कैसा रहता है? वो इंटरनल दोनों का सेम रहना चाहिए ना, EW और इस यहाँ का हमारा S4 का, which दोनों का सेम रहना चाहिए नंबर रेंज सीक्वेंस जो फ्रॉम और टू. ओके, बट 2 नंबर रेंज क्यों चाहिए? So 118 series is external number range. Okay, so it will be my internal number range here, and then the first one, which is 17, is external, so 17 here in the internal. Yes, क्यों होना चाहिए अलग अलग? सर इसमें ERP में इंटरनल है तो EWM में एक्सटर्नल में आ जाता हूँ. Yes. Okay, now we'll create material. Please start practice again. Okay, Yes sir. so sales data, if you remember, right? Counting is not needed, but WM packaging is required. So it's my palette, so we'll go with palette. Okay, and then here HU type 658. Okay,
659. Why we are creating material? This packaging material. PL. Okay. Okay, tell me one thing. So ये तीन material मैंने one by one extend किए, right? But if I want to extend in single go, how we can create it? Hello. नहीं मालूम सर। Other Mohit. मुझे थोड़ा सा अभी ध्यान में नहीं आ रहा, बट आपने वो बताया था ना स्लाइड, वो जो मॉनिटर है उसमें जा करके एक साथ सिंक करने वाला, ये वही है क्या? Yes, in monitor we can do it. या Okay, so I'm just creating one delivery 647 and I guess 48. Oh, it's not created. 46. Yeah. Okay, confirmation control key. What if you don't maintain? What will happen? If you don't maintain confirmation control key, what will happen? Hello. हेलो। Yeah, what will happen if you don't maintain confirmation control key? याद नहीं आ रहा। Yeah, simple delivery will not able to create delivery, right? So I will go one piece. So I guess this is our first delivery. Okay, so let's check. Okay, distribute hoti hai nahi? Yes, so yes, we are able to distribute it. So now I will go to the
DI, right? We'll search. Okay, we'll post a good receipt. And then //EWM/mat1 4 648. Okay, so I will just maintain the indicator. So we'll just check one simple in project is also called happy flow. Okay, it's very simple process, very basic process. Okay, it's going for pallet, so whatever pallet 20, so it's fine, right? Because of weight and this thing, whatever. Okay, so we'll just check that is we able to update all the entry in ERP side or not. So first of all, we'll check the postings. Okay, it's not there, means queue. So let's check how to check queue. Now I need to check why the update is not there. QSMQ. QSM2. Yes. QSM2. There's one decode. Yeah, but what is the T code? Okay, is SMQ2, Yes, SMQ. Sorry. right? अगर यहाँ से शुरुआत है सबकी तो then it's very difficult. Okay, so it's posting period, right? So how to resolve this one? We have checked MMRV, right? So 0001 is company code, so it's 12th month, but currently is 01. So MMPV, okay, 01 and then 2025. Okay, now check, select execute. Then just refresh, so it will also get clear. See, now if you check, okay, let me just close all other window. Okay, so now if you check BL33N, okay, movement right now, and also if you check MMBE, right, 647 7500. Oh, wow. MB51. Okay, so say 411. Okay, /n MMBE.
Okay, no issue. Now the issue जो हम देख रहे थे, right? VL31N issue 01 जहाँ से पूरा issue start हुआ था, right, in last server. So one piece. So I want to pack this material. So go here. Right now we have to enter the packaging material. So what was the number? 464 something, or else you can just go like this. Okay, for example, palette. Okay, 6, 5. So let's say palette. Okay, so to pack, click this, select this pack, then this into this pack. Right, this is internal number range, right? Remember, once you saved, right, you create a delivery that will distribute the delivery, right, for 49. Okay, ये भी stuck. Okay, that's strange. Let's check the error. Okay, number range we are not maintaining EWM side. So SPRO. So we have maintained the number range, right? But हमने ये mention नहीं किया कि for 75 PL, what is an internal and external number range, right? There are two number range, right? So we have to maintain the internal number range. If you go here, so now 02 CB 02 75 AU 02. Save it. So ये भी like kind of error we also face in project. Not like obviously no ऐसा नहीं आता है, no interval. It's like number range not found like that because ये already exist हो चुका है. Then yeah. Okay. Now if you check, we'll see the HU. Okay. Clear? Now, so if you remember, normally we do good receipt at header level, but if you do good receipt at HU level, what will be the difference? Hello. So if you do the good receipt,
At HU level, it will do the partial completion, right? Same thing will update in ERP side also. See, only one HU status is still in process, right? And then if you do the good receipt for second HU also, then it will update to partially to completed, right? And then we can also reverse the good receipt like this. So if we select both, that the reason it will again turn to not started. And if you do the good receipt, for example, for HU also at header level, means here, it will also complete for both the HU, right? And every time system will update all the information in here also. See, okay, clear? Clear, sir, clear. Okay, now जो हमारा रह गया था, what if we create HU in EWM side? Means for example, two pieces, okay, HU. So let's say mistakenly I packed both the material in one HU only, right? But when we check in EWM, means जब physically हमने देखा, so there should be two box or two pallet, right? So here if you go pack, right? So we can drag and drop also. मतलब ऐसे पकड़ के, right? ऐसे drop भी कर सकते हैं, or else if you select, if you click over here empty HU, ये पूरा दो material बाहर आ जाएगा और ये HU empty हो जाएगा, right? So for example, if I will create packaging material first, okay? So see, create now. जो सेकेंड मटेरियल है मैं उसको ड्रैग, मतलब उसको मैं राइट क्लिक करके, ओके, राइट क्लिक मैंने किया हुआ है, राइट, एंड देन जब मैं वो राइट क्लिक छोड़ूंगा ये बॉक्स के ऊपर छोड़ दूंगा। क्लियर? ये मैंने कैसे किया, ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट क्लिक मैंने सिलेक्ट किया, ओके, और अभी अगर मैं खाली सिलेक्ट करके छोड़ दे रहा हूँ तो ये हाईलाइट हो रहा है, राइट? अगर मैं उसको क्लिक करके ही रख रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू रिलीज दैट, राइट? तो सी, वो जो एक नीचे एक ये दिख रहा है क्या, एरो के नीचे डॉटेड लाइन, मतलब वो सिस्टम ने इज लाइक कॉपी पेस्ट, तो कॉपी किया है, और अभी जब मैं इसके ऊपर ऐसे कर दूंगा तो इसमें दो मटेरियल आ जाएंगे। सेम वे अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ऊपर लेके जाता हूँ और इधर छोड़ता हूँ तो इसमें पैक हो गया, ओके। नाउ इफ आई सेव इट, ओके, दो बॉक्स हो गए फिर से, राइट, एंड अगेन आई विल डू द गुड रिसिप्ट एट हेडर लेवल, ओके। तो ये दोनों HU अगेन विल एबल टू सी इन ERP साइड, सी 2 HU, क्लियर? Clear, sir. एवरीवन? हेलो? Yes, sir. या बाकी किसी का आवाज ही नहीं आ रहा है? क्या हो रहा है कुछ?
एक समझ में नहीं आ रहा है सर वो बहुत ज्यादा गैप हो गया इसलिए शायद। ये मुझे लगा वीडियो या रिकॉर्डिंग या लाइक कुछ सेल्फ स्टडी कर रहे हो। सर देख जब करेंगे ना तभी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आता है। जब पहला सर्वर था ना सर, उसमें हम्म भी वैसा ही था कि हम जहां तक कर रहे थे। अब ये एचयू का हम्म जो प्रोसेस बताया ना आपने, ये हो गया। उससे पहले आपने जो बताया कि हम नंबर रेंज जो है वो डबल क्यू करते हैं, मतलब दो 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 जगह पे असाइन क्यों करते हैं। ये जो बातें ना, ये प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चलेगी सर। उसके पहले का जो है वो थोड़ा याद आ रहा है, क्योंकि ये गैप हो गया इसलिए नहीं याद आ रहा। आएगा तो हम 2 दिन में कवर कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। या आप भी एक बार मनिका मैम को बता दीजिए सर, वो सर्वर के लिए मैं वैसे मैसेज तो डाल दिए। यस यस नाउ ओके इफ यू गो बैक टू डिलीवरी, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है बट लेट ओके इफ यू गो फॉर पुट अवे राइट एचयू है राइट स्टिल वी कैन सी इज लूज प्रोडक्ट राइट। यहाँ पे दो टैब है वेयरहाउस रिक्वेस्ट और हैंडलिंग यूनिट। So warehouse request means lose product, right? सिस्टम वो एचयू को कंसिडर ही नहीं कर रहा है, right? In both the cases. So obviously, like if we are receiving HU, right? अगर HU है तो हम HU के साथ ही पुट अवे करेंगे। लूज प्रोडक्ट मतलब हम बॉक्स ओपन करके उसको लूज प्रोडक्ट में रख रहे, right? But in SAP, yes, like we do have this option that we can simply ignore the box, right, while doing put away, or if you want to consider that box, right? So what we have to do, okay, go to the SPRO. So WPT में छोटा सा setting है, okay, if you go to just a moment. Yeah, so if you go to the WPT setting 7500, so we have only one WPT 101. Okay, if you scroll down, see here you see one option, select HU without storage process. If you tick this and save, okay, now again if you check, so go back and again try to create the task. So now see there is no any entry in warehouse request or line, but in HU you can see, and then you can see the HU number also, right? मतलब अभी हम HU के साथ पुट अवे करेंगे, ओके? मतलब सर, अगर हैंडलिंग यूनिट में हमें एंट्री चाहिए, मतलब पैकेजिंग मटेरियल के साथ एंट्री चाहिए, तो वो सेटिंग करनी पड़ेगी हमें, यस राइट? एग्जैक्टली यस और अगर लूज चाहिए तो वेयर हाउस रिक्वेस्ट में अगर चाहिए तो वो सेटिंग, वो टिक जो है वो नहीं करना पड़ेगा, राइट? एग्जैक्टली ओके 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 सर, गॉट इट सर। ओके नाउ इफ यू सो मैं टास्क क्रिएट कर गए, सेव कर देता हूँ, राइट? सो 2 tasks are created, right? So here also now see normally product warehouse task में दिखता है, but now this is HU warehouse task, HUA, right? See the HU information, okay? दोनों, this also and then second also, okay? So I will confirm both. So we'll just check कि warehouse के अंदर वो मैं HU देख पाऊंगा या नहीं. So if you go to the monitor, okay, so here storage bin,
physical stock, if you just check, right, you can see the HU number. Ignore the GR, but in rack and pallet you can see. Okay. Even here also we have HU tab. Okay. Folder. Sorry, option. So in that also we can check. Right. ये HU यहाँ पर है. Right. Clear? मतलब सर हमने वो वेयर हाउस टास्क मतलब कंफर्म करने के बाद अगर हमने एचयू में किया नहीं होता तो वेयर हाउस टास्क में दिखता क्या हमें वो पिछले वाला टैब? एक मिनट चाहिए ना उसको। हाँ, अगर हम कंफर्म नहीं करते यहाँ पर तो प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट वेयर हाउस टास्क है उसमें दिखता ना हमें, नहीं अगर नहीं हम नहीं. एचयू के साथ सो ये पैक्ड है, इसके वजह से वो HU में दिख रहा है. अगर वो पैक मतलब अब नहीं रहता देन इज लूज प्रोडक्ट. हाँ वही वही यहाँ वही पे दिखता. मतलब लूज या अगर कंफर्म करते हम तो प्रोडक्ट वेयर हाउस टास्क में दिखता, मतलब वो मगर टिक होता आपने है. एचयू में किया है या इसलिए एचयू में दिख रहा है। HU ओके में ओके दिख रहा है. एंड देन सेम HU वी कैन सी इन वेयर हाउस यहाँ पे. राइट. यस यस। अभी ये हाँ HU की हाँ दिख रहा है जब हम आउटबाउंड करेंगे. सो ऑब्वियसली अगर ये HU है, इसको एक नंबर है. राइट. अगर मैं इसको हाँ नंबर चेंज कर रहा हूँ एवरी टाइम, हाँ हाँ जैसे ही आ रहा है फिर मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ, वो ट्रेस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. राइट. हो जाएगा. यस यस सो लेट्स से इसका नंबर 7001 है, 8001 वॉट एवर. राइट. तो सेम नंबर विल यूज फॉर आउटबाउंड ऑल्सो. यस यस यस। ओके. सेम नंबर. ओके, ये 003 और 001 यही नंबर हम आउटबाउंड के लिए यूज करेंगे ना? यूज करेंगे. यस. सो इसमें ओके ये प्रोडक्ट पैक है और उसके डिटेल्स. क्लियर? तो इसमें क्लियर मेरे सर पर क्लियर। तो डिकंसोलिडेशन का भी होगा ना फंक्शन, मेरे को या अगर वो आगे है. वो आ गया ना, नहीं वो ठीक है। यस यस वो PUSC इज वेल नॉट से कॉम्प्लिकेटेड बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. सो like first we need to understand all scenario in HU, then we'll shift to decons. ओके Okay. Now एक concept है that is called nested HU. nested HU मतलब ये वाला. So ये भी HU है, right? पैलेट और ये बॉक्स, ये भी पैकेजिंग मटेरियल, ये भी पैकेजिंग मटेरियल है. So nested HU मतलब HU into HU. मतलब नॉर्मली कैसा होता है, बॉटल ये बॉक्स में होता है, ये बॉक्स एक कार्टन में, और फिर इस ये पूरे 4 एक पैलेट पे होते हैं. राइट. सो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड HU. ओके. तो ये कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल आई विल क्रिएट वन डिलीवरी. ओके, मैं एक ही पीस के लिए करता हूँ फिलहाल, एक ही मटेरियल के लिए. ओके. सो इसको मैं, ये क्या है, बॉक्स है या पैलेट है? ये पैलेट है. तो मैं इसको बॉक्स में करता हूँ फॉर एग्जांपल. ओके. इसमें इसको पैक कर देता हूँ. राइट. अभी ये बॉक्स जो है मुझे पैलेट पे पैक करना है. राइट. सो अगेन मैं यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया ये वाला टैब, पैक HU. नाउ 658. ओके. अभी 658 जो है वो पैलेट है. तो इसको और ये सिलेक्ट करके इसको ऐसा बोलता हूँ पैक. राइट. इफ यू चेक हियर यू कैन सी ये पैलेट में, यू कैन सी ओवर हियर पैलेट में बॉक्स है और बॉक्स में वो प्रोडक्ट है. राइट. आई विल सेव इट. नाउ आई विल लुक how it look like in EWM. 91. Okay, stuck in Cuba. What? Has no HU type. 6. Okay. MM02. ये नॉर्मल एरर है. ये जो एरर मैसेज जो आया है, राइट, इज वेरी कॉमन इन प्रोजेक्ट. 659.
59 will check. So error message क्या बोल रहा है? If you can check. So packaging material has no HU type. HU type हम कहाँ पे मेंटेन करते हैं? So in material master. Okay, that too in packaging. Okay, हमने standard HU में किया. It should be HU. Okay, save it. Now go here. Now again try to execute. Okay. Now if you can check. Now palette ही दिख रहा है. अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो पैलेट के अंदर बॉक्स है और बॉक्स के अंदर वो प्रोडक्ट है. क्लियर? क्लियर सर. Now if you go back and again if you do put away, अभी put away किसका होगा? वो बॉक्स का होगा या पैलेट का होगा? ये बॉक्स का होगा या ये पूरा पैलेट का होगा? मतलब जो बड़ा वाला बॉक्स है फॉर एग्जांपल. तो जो बड़ा वाला पायलट का बॉक्स होगा होता ना है, सर. यस, जो पैलेट होता है बाहर का, उसका ही पुट अवे होता है. सी 006. सो अगेन आई विल जस्ट क्रिएट एंड सेव द टास्क. तो ये हम कैसे देख सकते हैं कि यस ये तो पैलेट है और वो पैलेट के अंदर बॉक्स है. सो अगेन आई विल कंफर्म दिस. राइट नाउ अगेन इफ यू गो इन मॉनिटर, सो आई विल जस्ट रिफ्रेश. सो यहाँ पे आप देख सकते हो. ओके, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ एचयू है और ये लो लेवल ऑफ एचयू है. ओके, सी if you scroll here also you can see the higher level of HU. इसको मैं सिलेक्ट करके फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे. सी ये हायर लेवल ऑफ HU और लो लेवल ऑफ HU है. क्लियर? क्लियर सर. एनी क्वेश्चन? नो. एवरीवन क्लियर? हेलो, दिस क्लियर ऑल? सब कुछ है जो समझ में नहीं आया है? ओके, so I will take as a yes. Okay, then देखिए कंप्लीट करने के लिए तो मुझे कुछ नहीं है, बट आपको सर्वर मिला नहीं एंड देन या मैं थोड़ा सा शॉक हो चुका हूँ. राइट, बिकॉज आपने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की है. प्रैक्टिस इज फाइन, मतलब आपके पास सर्वर नहीं था, बट एटलीस्ट आप डॉक्यूमेंट जो मैंने भेजे थे, राइट, आप उसके उस टच हो, मतलब उसमें आप नोट्स वगैरह है, उसमें बहुत कुछ है रीड करने के लिए, बट आपने वो भी नहीं किया. सो या सो लिटिल बिट चैलेंजिंग, बिकॉज आगे उसमें स्ट्रैटेजी वगैरह फिर से वही आता है. राइट, सो ऑब्वियसली विल गो, बट वी विल गो लिटिल बिट स्लो. ओके, ओके सर. सर आप भी प्लीज एक मैं बार भी मोनिका मैसेज मैम कर, को. या मैं फ़ोन ही कर लेता हूँ. यस, मैं फ़ोन ही कर देता हूँ. क्योंकि ना जितना अभी ये वीकेंड आ रहा है, सो वीकेंड भी निकल जाएगा ना. यस यस, नो नो, वीकेंड में तो मतलब उसके पहले आपको मिलना चाहिए, ऐसा तो मुझे लग वो रहा है. पूरा दिन. सो यस आपको यस सर. एटलीस्ट वीकेंड तो मिल जाएगा. और एक बात सर राइट, ऐसी थी कि जो हमने पिछली बार मोहित ने MK00 नाम करके प्लान बना, कंपनी कोड बनाया था. तो इस बार हमें जो कॉपी करना है, जिसको कंपनी कोड से कॉपी या यू करना है. कैन जस्ट कॉपी 7500 प्लान एंड देन कंपनी कोड ओके यू ओके. यूज 0001.
जो आज के ओके इसमें ओके जो सर, जो मैंने सेटिंग यूज किया है ना वही आपको करना है। ओके सर, ओके 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 सर। मतलब ओके। इसके पहले जो सेटिंग करते हैं हम वो नहीं करना है सर? नहीं नहीं, सर्वर अलग है ना, यस यस यस, दैट द रीजन। ठीक है देन सर। ओके सर देन, बाय, ओके थैंक यू। या बाय, थैंक यू, गुड नाइट। नाइट सर। स्क्रीन हाँ नीलेश, ये आप क्या? जो सर्वर कर रहे हैं ये पुराना वाला तो नहीं है ना? वो तो चल नहीं नहीं रहा नहीं है नहीं 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 नहीं, इज न्यू वन। इसका डिटेल्स नहीं है, मेरे को प्लीज शेयर कर सकते हैं क्या? आपको मनिका मैम ने किया नहीं है क्या शेयर? मैंने तो मुझे बोला था किया है करके। नहीं, मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में ही मैं तो देख रहा हूँ, वहाँ तो नहीं आया है कुछ। नहीं, पर्सनल ग्रुप पे सर किया जिन्होंने होगा। सर जिन्होंने मैसेज किया है ना मनिका मैम को, उन्हीं को किया है, अथर्व को भी नहीं किया है उन्होंने नहीं, मैसेज। अच्छा मैंने तो ठीक, बताया था ठीक सबको करना है। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, है ना, मे बी शील रिस्पॉन्ड। ठीक है। हेलो यस। सर, हम जब कॉन्फ़िगरेशन पूरा कॉपी करते हैं जो 7500 से किया है हमने, हम्म। तब जो आपने बनाया है वो पूरा का पूरा, मतलब वो बीपी हो गया, फिर स्टोरेज नहीं नहीं, वो लोकेशन हो गया मास्टर डेटा सब। है, दैट यू हैव टू डू फ्रॉम योर एंड। वो तो मास्टर डेटा है। ओके ओके, क्योंकि मैं जब मतलब पीओ निकाल रहा था ना, तब मेरे को वेंडर हम्म। नहीं मालूम था, सॉरी सप्लायर नहीं मालूम था, इसलिए मैंने पूछा। वो So तो हमें ही in this, बनाना पड़ेगा ना? नहीं? yes. I mean, no, ओके सर। जो supplier है, because we are going to use one company code only, 0001. Okay, so 1321 that we can use. 1321, ओके ओके Yeah, let me. ये सर्वर में ओनली एक इशू है कि ये कभी कभी बहुत स्लो हो जाता है। So but yeah, apart from that ऐसा कुछ इशू नहीं है बाकी तो। हेलो, Yes, 1312 ना सर? या मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। 1321 1321, ऑलमोस्ट, या ऑलमोस्ट वही है, बट लेट मी चेक अगेन। That's yeah, 1321. See this one. Okay, ZEW underscore sorry dash V when one. ओके ओके, बाकी के लोग शुभम क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? अभिषेक वगैरह। सर, नहीं मालूम मुझे भी, मिलते तो है रोज, बोलता हूँ मैं। I हम्म don't- मैं अभी अथर्व तो मेरे साथ ही आता है, उसको भी हम्म। बोलता, अभी मैंने मुझे मिला था थोड़ी देर पहले, उसको भी बोला, पर मालूम नहीं सर क्यों नहीं ज्वाइन करता। ओके ओके, नो इशू, स्लैश एन मैं स्लैश अभी वही सर्वर यूज करूँ ना नीलेश सर, आपने जो दिया है वो?
yes only अभी थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं बट मैं बताता हूँ उनको, तब तक आप वही सर्वर यूज कीजिए। ओ, 7500. Okay, so last time what we have discussed, yeah, और एक बात जो मैंने अभी जस्ट बोला अबाउट वीकेंड, सो आपका जस्ट मुझे बता दीजिए। ऐसा नहीं कि फिक्स टाइम होगा, राइट, विल बी लाइक फ्लेक्सिबल, विल डू फ्लेक्सिबल। और वीकडेज के लिए आई होप, सॉरी, ऑल डेज यू आर रेडी, राइट? हम थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं फिर। ओके फ्रॉम मी, बाकी लोग बता दीजिए। मतलब वीकेंड को भी सेशन रहने वाला है सर? या मैं सोच रहा हूँ फ्लेक्सिबल, यही अगर सब वीकेंड जैसे या अगर फिर नहीं सभी? ऑल वीकेंड्स, ऑल वीकेंड विल स्टार्ट। ठीक है सर, कोई कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, सो विल चेक कि कैसा क्या रहता है एंड देन विल डू इट। ओके ओके now, last time what we have discussed about HU. Right now we will also speed up little bit. Okay, so last time हमने देखा था कि वो HU कैसे दिखता है, right? High level HU, low level HU, right? All those value. Okay, ये हमने देखा था, right? So sometime in our warehouse ऐसे भी लोकेशन होते हैं जहाँ पे they want to store only HU, right? And then there will be some location where they want to store only loose product. There is one photo. Okay, let's say ये वाले, right? यहाँ पे only HU जो है वही हमें रखने, right? And then there is different area where they want to store only loose product, right? जहाँ पे HU allowed नहीं है, right? So with configuration we can manage. Okay, means जहाँ पे only HU ही allowed होगा, loose product system will not allow to store. Okay, so for that what we have to do, we'll create new storage type. Okay, so it's master data, right? Define storage type. Okay, new entry 7500. So for HU we'll go with HU10, right? Then our standard configuration, right? So we'll go with 4 daily stock identification, final put away because, and then ability group 002 and mandatory tick. Okay, now if you check over here HU requirement, okay, so ये blank है. If you check, so there are total 3 entry. Okay, allowed but not required, HU required, HU not allowed. So blank means we can go with both the material, both type of material, with HU, without HU. Okay, allowed bhi hai but not required. But now we are going to create storage type in which only HU is allowed. Okay, so I will maintain this X and save it. Okay, then I will create one more location. It is for loose product LS10, and now instead of X I will maintain Y. Okay, and simply save it. Clear? ये दो सेटिंग X और Y ओनली मैंने यही चेंज किया है.
HU में only एक HU is mandatory और HU required है, right? And then loose product में LS10 में I have maintained Y, in which HU is not required or not allowed. Okay, I will create one bin for both. So we'll go with same HU10, same bin number LS10 and LS10. Okay, now we'll create one delivery. So first we'll see the simple scenario. Okay, जहाँ पे एक HU है और एक विदाउट HU है. So 2 and 2. Why it's too slow? Okay, so मैं इसको यहाँ पे पैक करता हूँ. Only one HU is there. Okay, and another one is loose product. Okay. Here, if you try to create task, see one loose product and one HU, right? So I will go with the default value, but in your case, you need to go with strategy. Okay, and then कैसे वो आपका like that is an assignment, right? You can use indicator, right? Or you can go with WPT also. You can determine different WPT. Okay. So first of all, I will go with simple scenario where HU will go in HU manage bin, and then loose product will go to the loose product area LS10 like this. Okay. Then I will confirm. ये तो simple flow हो गया, right? I will confirm. And same time here. See loose product क्योंकि वो लूज ही था NHU. But what if अगर हम जो बॉक्स से जो HU है वो लूज प्रोडक्ट में हम फोर्सफुली और फॉर एग्जांपल अगर कोई यूजर उसको फोर्सफुली पुट अवे करना चाहता है और एंड देन सेम जो लूज प्रोडक्ट वाला जो HU है सॉरी प्रोडक्ट है वो HU मैनेज में जान मतलब कोई रख रहा है फोर्सफुली, राइट? देन व्हाट विल हैपन? So again we'll create same delivery means with same example. One loose product and one HU. Okay. Now what I will do, जो loose product है, right?
इसको मैं फोर्सफुली HU वेयरहाउस HU स्टोरेज टाइप में, I will try to create task for HU manage storage type. Okay, in here in HU10, right? If you remember, only HU is allowed, right? So I will check what system will do. That is loose product. So yes, we are able to create task, right? Now we'll try to confirm this task, right? Again, remember in this HU only HU is required. HU is allowed. Okay. When I try to confirm, I'm getting some error, right? It says enter destination HU, right? If you select OK and then if you go here, so system basically क्या कर रहा है, वो यहाँ पे destination HU ढूंढ रहा है. मतलब system क्या सोच रहा है कि ओके जब हम यहाँ पे गए इस एरिया में, राइट, ये HU एरिया है और यहाँ पे ऑलरेडी HU है, राइट, बिकॉज ये HU मैनेज एरिया है, सो प्लीज लेट मी नो कि आप कौन से HU में वो मटेरियल रखने वाले हो, राइट. और वही सिस्टम यहाँ पे वो पूछ रहा है कि यस प्लीज एंटर डेस्टिनेशन HU. क्लियर? समझ में आने लगे. तो मतलब इसी सर वजह से उसने टास्क बनाने दिया, राइट? अदरवाइज वो टास्क पे यस रोकता है. यस, क्योंकि वो Okay. सोच रहा है कि मे बी आप किसी बॉक्स में रखोगे जो हम घर में नॉर्मली हमारे पास ऐसे कुछ चीजें जो हम रिफिलिंग करते हैं, राइट. अंडरस्टूड. आटा फॉर एग्जांपल, राइट, हमारा वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो एक ही रहता है डब्बा, बट हम उसमें रिफिलिंग करते रहते हैं. वो एक टाइप का HU हो गया फॉर एग्जांपल, और वो आटा मतलब लूज प्रोडक्ट. क्लियर एवरीवन? सर मतलब हमने एक लूज पार्ट के लिए और एक हैंडलिंग यूनिट, जैसे दो स्टोरेज लोकेशन बनाए, और उसमें हम्म. हमने लूज पार्ट हमने स्टोरेज करने के लिए, मतलब ये सेकंड जो सिनारियो बताया ना आपने, वो मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा. पहला सो जो बताया फर्स्ट था वो सिंपल वाला. वो सिंपल, दैट इज हैप्पी फ्लो इज डन, राइट. यस, अभी मतलब लूज में उसमें लूज रख रहे HU, हैं. और यस, बट अगर हाँ अपोजिट आप करोगे, हाँ हाँ राइट, फॉर एग्जांपल जो मैंने आटा का एग्जांपल बताया, राइट, अभी आप आटा हाँ लेके आ रहे हो, राइट, हाँ पीसा हुआ, जब आप हाँ हाँ वो बैग में लेके आओगे तो आप घर में किधर तो रखोगे, राइट, उसको किसी डब्बे में रखोगे, हाँ राइट. फॉर एग्जांपल आप उसको थोड़ा सा रिप्लेस करो वेयर हाउस के लैंग्वेज में, राइट. आपने आपके पास 10 प्रोडक्ट है अलग अलग, छोटे छोटे बॉक्सेस लूज है, पार्ट मतलब. और ये HU मैनेज है, तो आपको किसी तो बॉक्स में रखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हाँ तो हाँ हाँ. पैलेट मतलब ऐसा आप फ्री रख ही नहीं सकते, राइट, अलाउड ही नहीं है. यस यस यस. तो सिस्टम क्या बोल रहा है, ओके बिकॉज ये HU मैनेज एरिया है, तो कौन से HU में आप रख रहे हो, यहाँ पे या इस बॉक्स में. ओके ओके, मतलब वो अलाउड कर रहा है पर डेस्टिनेशन अपने को चूज करना पड़ेगा उसका. एंटर करना पड़ेगा, यस, HU नंबर यस आपको यस. एंटर करना पड़ेगा, देन ओनली वो ओके. अलाउ करेगा. मतलब वो जो जैसे ये लूज प्रोडक्ट वाला एरिया है, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल हाँ जैसे हाँ. रखे हुए हैं, तो ये ऐसा अलाउड नहीं करेगा, क्योंकि वो पुराना वाला जो ओके. फॉर एग्जांपल ये वाला जो है, राइट, ये दोनों हम फोटो ले सकते हैं, ये और ये, राइट. तो इसमें तो हाँ हाँ. HU ही चाहिए, राइट, क्योंकि स्पेस ही नहीं है रखने के लिए. यस यस. ओके, क्लियर? समझ गया. क्लियर क्लियर. तो वो अलाउ भी नहीं करेगा, राइट. लेट इट बी. नाउ जो HU वाला जो है, राइट, जो हमने पहले HU में रखा था, इसको अभी मैं क्या करता हूँ, लूज प्रोडक्ट में रखता हूँ, LS10 में. ओके, और इसका देखता हूँ सिस्टम क्या करती है. सो यस, अगेन वी आर एबल टू क्रिएट टास्क, राइट. कंफर्मेशन में जाता हूँ, सो यू कैन सी HU वेयरहाउस टास्क बना हुआ है, राइट. यहाँ पे देखिए HU नंबर है, राइट. जब मैं कंफर्म करता हूँ तो सिस्टम ने कंफर्म कर दिया, ठीक है. सेकेंड, अगर आप डेस्टिनेशन HU देखोगे तो वहाँ पे ब्लैंक है, जस्ट बिफोर कंफर्मेशन वहाँ पे ये नंबर था बराबर, अब ये ब्लैंक हुआ है, राइट. सो हाउ इट लुक लाइक इन मॉनिटर, LS10, राइट. मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए LS10 और एक लाइन आ गई, बट HU नंबर नहीं है. तो उसने इमेजिन क्या किया कि यहाँ पे बिकॉज ये लूज प्रोडक्ट है ओनली, यहाँ पे लूज प्रोडक्ट ही रखना है कंपलसरी,
तो जब आप यहाँ पे आए बॉक्स के साथ और जब रखते हुए आपने वो लूज प्रोडक्ट रखा है, तो इसका सिंपल एग्जांपल है, आपने देखा होगा डीमार्ट रिलायंस में जब वो रिफिलिंग करते हैं राइट, जो उनके वर्कर है राइट, वो बॉक्स में लेके आते हैं मटेरियल और रखते हुए उसको लूज प्रोडक्ट में रखते हैं राइट। हाँ हाँ तो yes, सिस्टम yes. क्या इमेजिन कर रहा है कि यू आर नॉट गोइंग टू यूज दैट एचयू फॉर पुट अवे, बट या मूवमेंट करते हुए आपने यूज किया, बट आप जब रख रहे हो दैट इज एन लूज प्रोडक्ट, तो वो सिंपली एचयू को डिलीट कर देगा। क्लियर? इसमें अगर नीलिश मल्टी लेयर एचयू होंगे तो सारे के सारे डिलीट कर देगा राइट। यस वो इमेजिन करेगा डिकंसोलिडेट होकर आपने रख दिया और जितने भी थे सब हटा देगा। यस, मतलब ओके उसके लिए तो थोड़ा सा प्रोसेस, ये तो नॉर्मली ऐसा तो होता नहीं है राइट। अगर वो लूज प्रोडक्ट से ही आएगा राइट, बिकॉज देन इज नॉट मेक एनी सेंस टू क्रिएट टू क्रिएट एचयू एंड दिस थिंग। मतलब मैंने तो लाइक लूज प्रोडक्ट जो है वो मतलब फिर है वो ऐसे वाले प्रोडक्ट है मोस्टली, ड्रम वगैरह। ये जो मैं सोचा था ना, मैं टीएन स्टैंड पॉइंट से सोचा था क्योंकि उसमें भी जब ट्रक प्लानिंग वगैरह होती है तो पहले वो एचयू में आता है और फिर उसको डिकंसोलिडेट कर देते हैं। तो ये उस तरह का ही सिनेरियो राइट कि क्योंकि वहाँ यस पे यस इंटरनेट बिल्डिंग होगी और सब कुछ होगा, फिर वो आके जब यहाँ पे बैठेगा तो डिकंसोलिडेट हो जाएगा और वो एचयू जो है वो डिलीट हो जाएंगे। यप। ओके क्लियर एवरीवन? Yes, sir. सचिन? हेलो सचिन, कैन यू हियर मी? हाँ, यस गॉट इट। ओके नाउ, सो ये लूज प्रोडक्ट का तो यहाँ पे खत्म हो गया राइट। नाउ विल डीप डाइव मोर इनटू द एचयू मैनेज एरिया। सो in fact in some of the warehouse, okay, so हमने डिस्कस किया था सर एक क्वेश्चन एचयू। था, यस वो जो मतलब एचयू इज एक्ट एज एक स्टोरेज टाइप हो गया, तो कौन से बिन में वो एचयू को रखा है, वो कहाँ से क्या होता है स्टार्टिंग में हम? कौन से बीन में रखा है? हाँ मतलब पहले तो प्रीरिक्विजिट पार्ट्स वहाँ पे फिल होगा, वो इस एचयू में जाएगा जो एचयू ब्लैंक है, लेकिन उस एचयू का पहले हमें वहाँ पे पोजीशन कहाँ पे हम सेट करते कि ये एचयू इस बिन में है, उसका असाइनमेंट कहाँ पे करते हैं? यू आर टॉकिंग अबाउट लूज प्रोडक्ट जो एचयू में जा रहा है वो वाला? हाँ 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 हाँ। नहीं, तो वो ऑलरेडी हमें देखना पड़ेगा कि कौन से एचयू है अवेलेबल उस तो पर्टिकुलर ओके स्टोरेज टाइप में राइट। ओके लेट्स से यहाँ पे है तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 एचयू है, तो मतलब सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम जो फॉर एग्जांपल ये वाला जो एचयू है हमारे केस में, तो ओके इसे में अलाउ करेगा राइट। ओके। इफ यू एंटर डिफरेंट एचयू तो वो फिर एरर देगा कि ये एचयू स्टोरेज बिन में है ही नहीं, वो अलग बिन में है। ओके, तो ये एचयू इज एक्ट एज स्टोरेज बिन, मतलब मेरा क्वेश्चन था। मतलब वो लिंक है, यस ये लिंक है, बिकॉज एवरी एचयू नंबर इज यूनिक राइट, दैट वी हैव चेक्ड। ओके We'll not have a scenario that one number is in a different location. ओके ठीक। Now, if you remember, we have also discussed HU type, right? तो लाइक बबल शीट, थर्माकोल। No, that is an packaging material. ओके, पैकेजिंग मटेरियल। Palette. Yes, pallet type okay, right? Euro pallet, industrial pallet, right? तो उसकी capacity या अलग-अलग होती है, right? So in storage type, right? We can say okay, in this storage type, I only want to store Euro pallet. Okay, in this storage type I want to store Euro pallet 2 meter, in this 3 meter, like this. So we can also like deep dive and then
we can maintain specific HU type कि यही allow होना चाहिए, right? So for that, if you go back to the configuration, so here you can see HU type check, this tick is there. Tick this. Oh, sorry, we are in LS10. So I will go to the HU10. I will tick this and I will save it. Okay, HU type check. Now again I will create one delivery. Now मैं क्या करता हूँ, I will use box and pallet both. Okay, मैं अलग अलग इसमें दोनों को पैक करता हूँ. Okay, now then I will try to create the task. Good receipt, then task. Okay, अभी दोनों HU मैनेज है, but एक पैलेट है और एक बॉक्स है. Okay, so मैं क्या करता हूँ, try to the put away. This is box, right? Try to create the warehouse task. See, is giving me error. Or is this palette? Okay, first one is palette. Is giving me the error that is not permitted, right? 75 because हमने HU type check किया है, टिक किया है. मतलब हमने सिस्टम को ये बोला है कि प्लीज while doing put away, please check HU type check. मतलब कौन से स्पेसिफिक HU टाइप मुझे रखने हैं वो चेक कीजिए और वही अलाउ कीजिए जो मेंटेन है. मतलब once you tick this, there is another table in which we need to maintain ki which HU type is allowed in this particular storage type. Okay, again when you tick this, okay, we need to maintain another table in which we maintain which specific HU type is allowed for this storage type. Okay, so वो कहाँ पे है? If you go back to cross process setting, okay, handling unit. This is, so here you can see define HU type for each storage type. Right now I will directly go with new entry. So 7500 HU10 and then 75PL. Okay, and save it. Okay, now if I try again, see, अभी task create हो रहा है. Okay, this is for palette. If I check for box, क्या होगा? फिर से एरर देगा. Yes, will give the error because हमने एक ही maintain किया है, which is palette. Once you maintain 75 CB, then it will also work. Clear? मतलब सर हमने जो मेंटेन किया है HU का टाइप वो सिस्टम चेक करेगा, अगर वो अलाउड Yes. होगा तभी अपना हमारा डिलीवरी कंप्लीट होगा. Yes. और ये कहाँ पे मेंटेन करते हैं हम? HU HU type. क्रॉस प्रोसेस सेटिंग में अभी No, no, बताया ना. master data में. वो फ्रंट एंड में जाके चेक करेगा, राइट? उसको क्या मालूम कि ये जो 53 है, क्योंकि ये नंबर तो चेंज होगा, राइट? जैसे जैसे हम HU यस बनाएंगे, यस. तो सिस्टम को क्या मालूम कि इसका बॉक्स है, इसका पैलेट है, P1 है, P2 है, व्हाटएवर. कैसे समझ में आएगा? So because of packaging material तो सेम ही होगा, राइट? यस यस यस. So if you go to the CWM Mat1, for example, see HU type. ओके, यहाँ पे वो चेक करेगा. अगर मुझे ये चेंज करना है तो कैसे चेंज कर सकते हैं हम इसको? वही एडिट करना है वहां से फिर से. We are in edit mode only.
Yes. Not able to do it. See. So ये MM02 से करना है. Okay, because if you remember, this Yes, is sir. header data coming from ERP side. Okay, clear? Yes, sir. Yes, sir. Any question? This HU type? No, sir. Okay, now I will give you one assignment. Now, so when you say कि, for example, ये box है. I need to, okay, just a moment. Sometimes it's very difficult to find a specific photo. Yeah, okay. Okay, let's imagine that this area is HU manage area. Okay, और let's ये पूरा box और ये consider as a one box only, right? जो तीन है just consider as a one box जो length है, right? So we have maintained that okay, this HU we need to store HU type whatever, right? जो भी उसका type होगा यही पे maintain होगा, right? But can we do the put away this entire HU here in this bin? No, sir. No, right? Because the dimension of this bin are different, Dimensions. Yes. right? So when we use strategy, right? So strategy may go to the strategy. Okay, bin determination. Okay, here you can see there is HU, right? Last time हमने bin determination देखा था, right? Bin type, sorry, right? कि हमने bin type के ऊपर भी हम कर सकते हैं, right? That it should go first to the, let's say 100 kg, then 200 kg, right? Like this. So we can also link that bin determination with HU. First of all, ये तो हमने already assign किया है, right? For warehouse, right? Then we have also assigned a particular storage type जो हमने just अभी किया थोड़ी देर पहले, C, right? But when we say that in this HU10, right, we want to store PL and CB, our system will identify the correct bin, right? So हमें यहाँ पे, for example, 7500, so HU type HU10 and HU type is 75 PL, so it should go first, let's say in B001, for example, right? If not, if there is no any empty bin available, right, then it should go to the, let's say B002. Bin type में हम क्या maintain करते हैं? What are the master data we maintain in bin type? If you remember, if you go to the master data, storage bin,
bin type, so we maintain weight and then their length, width and height. Clear? Yes, sir. और ये हम कहाँ पे मेंटेन करते हैं? स्टोरेज बीन में, राइट? मतलब जो हम स्ट्रैटेजी के वक्त सचिन क्या करता था, इफ यू रिमेम्बर, कि वो मटेरियल वाइज हमने इंडिकेटर क्या रखा है, फिर स्टोरेज टाइप में जाके उसका कैपेसिटी क्या है. अभी वो विल आल्सो चेक विद द एचयू टाइप आल्सो, कि कौन सा एचयू टाइप कौन से बीन टाइप को अलाउड है. तो वो ओके, बीन भी चेक करेगा और एचयू भी चेक करेगा सर. एचयू से बीन चेक करेगा कि उसका सीक्वेंसिंग ओके क्या ओके मेंटेन किया है. ओके ओके ओके. मतलब मतलब उसका साइज, वेट सब एचयू के हिसाब से बीन चॉइस करेगा वो. या मतलब वो सबसे पहले यहाँ पे आएगा, राइट? फॉर एग्जांपल वो देखेगा कि ठीक है, मेरे पास एचयू टाइप है 75 पीएल वाला. ओके, तो इट शुड गो फर्स्ट इन B001. ओके, B001 का कैपेसिटी XYZ मेंटेन है, तो B001 हमने बीन में हमने मेंटेन किया है. तो अगर उसको एम्प्टी बीन मिला तो ठीक है, अदरवाइज इट विल गो फॉर B002. नाउ व्हाई नॉट एम्प्टी बीन? जो भी स्ट्रैटेजी हमने मेंटेन की है, एडिशन टू स्टॉक, एम्प्टी बीन, जो कुछ है. क्लियर? क्लियर सर. ये आपको टेस्ट करना है. ओके, स्मॉल असाइनमेंट. एनी क्वेश्चन? तो इसमें आपको स्ट्रैटेजी, एचयू कॉन्फ़िग, ये पूरा होना चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे. Any question in entire HU config or process? Hello? तो Yeah. Any नहीं question? सर. नो सर. एक बार पूरा रिवाइज करना पड़ेगा एचयू, फिर डाउट आएगा तो पूछेंगे. Yeah, but HU is like very important. So please, make sure that क्या practice आप आपने सब सिनेरियो टेस्ट किए जो भी हमने डिस्कस किए हैं, क्योंकि अभी इन अपकमिंग सेशन सब एचयू के ऊपर ही होने वाला है. ओके. Okay. Next topic is POSC. No, sorry, packaging specification. Okay, I'll just give you an overview of packaging specification. So जो packaging specification है, that we can use in all process, okay, but we'll check like the reason or like example in inbound only. Okay, so packaging specification अभी inbound में कैसा है? For example now जो हम पैक कर रहे हैं मैन्युअली, राइट? हम every time we do packing, राइट? VL31 में या अपने PRDI स्क्रीन में, राइट? But we cannot do this packing or this transaction
or method, right? We can use this method on day-to-day activity, right? It's very time consuming. What if अगर एक vendor है और उसके साथ हमारा contract है कि yes, whenever we receive this X material is going to be packed 10 pieces in one box like this. Okay, then it will be very difficult, right? और अगर उसने 1000 pieces send किए then it's next to impossible, right? हेलो, तो वो तो हम एक एक 1 by 1 तो पैक नहीं कर सकते, राइट? हेलो, Yes, sir. Yes. so in that case we can use the packaging specification. Okay, उससे हम पैकेजिंग मैन्युअली ट्रिगर कर सकते हैं, सॉरी ऑटोमेटिक EWM में ट्रिगर कर सकते हैं. बट एज आई सेड पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन वी कैन आल्सो यूज इन आउटबाउंड. तो ऐसे कुछ उसमें उसके जो मास्टर डेटा है, राइट, वो ऐसा कुछ है जो इनबाउंड के लिए रिलेवेंट नहीं है, राइट? बट करंटली विल चेक दैट आल्सो, एंड आउटबाउंड में फिर लाइक विल चेक द यूजेस. फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट प्रिंटेबल है तो ये इनबाउंड में तो प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, राइट? बिकॉज वो हमें खाली वो पैक करना है, राइट? लाइक दिस. ओके, नाउ उसका जो स्ट्रक्चर है, राइट, सो इज लाइक दिस. ओके, हेडर, फिर यहाँ पे हम प्रोडक्ट और पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन कैसे ट्रिगर होना है वो हम मेंटेन करते हैं, राइट? बेसिकली पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन इज लाइक वेयर वी मेंटेन द पैकेजिंग मटेरियल और देयर स्टेप. ओके, मतलब लेट्स से अगर मुझे एक बॉटल पैक करनी है, राइट, तो फर्स्ट लेयर क्या होगी उसकी? बबल शीट, राइट? वर्क स्टेप क्या होगी? रैपिंग, फॉर एग्जांपल, राइट? फिर सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूँगा? बॉक्स में पैक करूँगा और बॉक्स पैकिंग. और एट द एंड लेट्स से जो कुछ बॉक्स है, राइट, 10 बॉक्स 8 बॉक्स, उसको पैलेट के ऊपर रखूंगा मैं. क्लियर? Clear, sir. फिर उसको जो बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट. ओके, इन पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन विच कंसिस्ट पैकेजिंग मटेरियल एंड वर्क स्टेप. ओके, so you can also reuse the element, right? मीन्स ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बॉक्स को हमने बॉक्स में पैक किया है, राइट? So that is called, that's the reason we call this element as element group. So we can have more than one element or steps in simple language, right? Then in element group, so it's also possible that okay, here also we have more than one element group ki yahan pe ye second element group mein ye. So that is called level. So in level 1 we'll do auxiliary packaging, level 2 box, level 3 pallet. Clear? Clear, sir. डिफरेंट सिनेरियो में रहेगा. नॉर्मली सर सप्लायर से जो मटेरियल आता है Yeah, वो that is एक an के साथ simple आता है. नहीं नहीं, बॉक्स के साथ आता है, मतलब जो Mhm. इनबाउंड होता है. मतलब क्या हम यहाँ पे आके फिर एचयू बनाते हैं फिर रखते हैं, कैसे रहता है नॉर्मली Now, रियल as I टाइम में? said, we can use in inbound case, we'll just set up and then it will trigger packaging automatically. ओके. That's our motto in inbound. मतलब अगर इन हाउस प्रोडक्ट तैयार हुआ तभी हम ये पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन अप्लाई होगा ना, अगर डिस्पैच करना है, बाहर भेजना है तो. Now, as I said, ये हम all process में use कर सकते हैं, inbound, outbound, internal, right? Like inbound में हम कब use करेंगे? जब हमें packaging trigger करना है automatically. ओके, अगर लूज प्रोडक्ट आया उसको पैकेजिंग करके Yes. रखना है. ओके. No. So example ऐसा है कि normally warehouse में तो कभी loose product नहीं आएगा, right? Okay. Like 100%, like you can, or we can say 99% वो box में ही भेजेंगे, like Okay. this, right? अगर लेट्स से ये वाला पैलेट मुझे मालूम है कि एक बॉक्स में लेट्स से 10 क्वांटिटी है, राइट?
और क्वांटिटी का मेरे पास टोटल क्वांटिटी का इनवॉइस है मेरे पास वेंडर से, राइट? तो मुझे वो एक एक पैक करना बैठेगा, राइट, डिलीवरी में। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। व्हाट इफ अगर मेरे पास 10 पैलेट है, वी कैनॉट डू इट राइट मैन्युअली। इफ वीएल 31 में जाके फिर जो कुछ क्वांटिटी है वो हमने पैक की, राइट, 1 बाय 1, 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, राइट, ऐसा तो कर नहीं सकते। सो वी कैन यूज पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन to trigger that activity or trigger the packaging automatically in EWM. मतलब हम ERP के साइड में जब डिलीवरी क्रिएट करेंगे, we'll create without HU, but once that delivery distributed to EWM, right, so system will check the configuration जो हम अभी करने वाले, right, master data and condition, और अगर उसको जो डेटा चाहिए उसको मिल गया, then it will trigger the packaging automatically in EWM. Clear? उसमें नीलेश इन केस वेंडर का कंप्लायंस नहीं है और स्पेसिफिकेशन देने के बाद भी कुछ अप डाउन होता है, तो वो फिर EWM में Yeah, करेक्शन करना। means we do have an option, yeah, we can do correction. अच्छा, Is manual correction, yeah, that we can do. ओके। Okay, clear? Like basic scenario. And this is Yes, the sir. master data. We can print printable document. We can print this because now why we have to print? So there is something called VS, value added services. So in value added services also we need to use packaging specification, और उसमें हमें उनको बताना पड़ता है कि yes क्या कैसे पैक करना है या कैसे एक्टिविटी कंप्लीट करना है, स्पेसिफिक एक्टिविटी अगर कुछ करना है तो that the reason we have to print that document. But yeah, in our current scenario we will not print that document, it's not required. Okay, any question? Yeah, this we'll see tomorrow in more detail, because it will require like half an hour, not half an hour, maybe more than that, 45 minutes, 1 hour. Maybe we'll discuss tomorrow. Okay, just want to know one more thing कि मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको भेजे अब तक, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट भी स्टार्ट कर देता हूँ। हेलो, एक हेलो। कॉन्सेप्ट भेजा था ना आपको, उसके अलावा भी कुछ है ओके क्या? वो एक ही है क्या? ठीक है, चलेगा, मैं स्टार्ट कर देता हूँ फिर डॉक्यूमेंट। सो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट हो गए जो अभी मतलब अपकमिंग प्रोसेस के है, सो या यू कैन जस्ट सिंपली इग्नोर दोस डॉक्यूमेंट। I know today's session is like a short session, not even 1 hour. Sorry for that. Actually मैं ऑलमोस्ट 3 बजे से कंटिन्यूस कॉल में हूँ। अभी भी जस्ट एक कॉल लाइक जस्ट बिफोर आवर सेशन 9 बजे तक था वो शेड्यूल, बट थोड़ा जल्दी खत्म हो गया 10 मिनट पहले। तो या ओके, Yes, sir. okay, then stop for today. If you have any question during practice, let me know Okay. on our WhatsApp group. Yes, sir. Okay, Thank you, sir. Bye. yeah, and please अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए on daily basis,
क्योंकि अगले वाले जो जो टॉपिक होने वाले इस बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें एचयू और स्ट्रैटेजी ये तो चीजें लगेगी। ओके, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके, या बाय, थैंक यू। ओके, बाय, थैंक्स। Okay, so yesterday we have discussed about the HU, right? उसमें हमने फिर जो भी HU 11 config है वो हमने cover किया था, right? And then we also check how to do put away for loose product and this thing, right? Then we have discussed small thing about packaging specification, right? In EWM, right? So this we can use in all different process, right? Means all three process: inbound, outbound, and internal, right? So today we'll check with internal process, right? So basically, packaging specification is a master data, right? So okay, in which we maintain the packaging material and their step, means how to pack that particular material with the help of packaging material, right? And then this is a printable document, okay? And then we have also discussed, the combination of packaging material and work step is called element, right? So, and then we can have more than one element, so we can say that element group. And then जो हम लेवल करते हैं, right, one by one की first में wrapping करना है, then box, then pallet, that is called level. Okay, this is a structure of packaging specification. Okay, clear यहाँ तक? यस सर। Then so packaging specification, so we'll go to CWM menu. So master data, so pack space is the transaction in this is a transaction maintain packaging specification, right? So we can click over here, create, right? And then there is something called group, right? So यहाँ पे ACP का भी है by default, and then we can also create. So we'll check what is this group, right? So we'll go to the SPRO, backspace, sorry, IMG, same extended warehouse management, extended warehouse management, master data, okay? Then packaging specification, then define packaging specification group. So what I will do, we create a new one. Okay, 7500, 7500, backspace. Okay, so number range. So again, every document will have their own number range. So we'll go with 01. Okay. Then level set we'll discuss later. What is level set, right? So one more thing. So it's also possible कि warehouse में कभी-कभी आपने देखा होगा कि कुछ मशीन वगैरह भी रहते हैं, right? पैकिंग करने के लिए, right? Sorry. So पैकेजिंग करने के लिए कुछ मशीन वगैरह भी रहते हैं, राइट? So उस केस में we can use SAP to save master data. Okay. Means अगर SAP में है हम वो जो जैसा पैक करना है, फॉर एग्जांपल इसके जो भी लेवल है, राइट, ये हम SAP में मेंटेन कर रहे हैं, बट पैकेजिंग थर्ड सिस्टम करेगा, थर्ड पार्टी सिस्टम, कौन सी भी मशीन, राइट? तो उस केस में ये सब इंफॉर्मेशन हमें उस सिस्टम को भेजना पड़ेगा, राइट? सो इन दैट केस we have to maintain a source system. Okay, अगर अपोजिट है, मतलब किसी थर्ड सिस्टम में we are going to maintain the
कॉम्बिनेशन कि हमें कैसा पैक करना है, ओके। और फिर वो डेटा हम यहाँ पे फेच कर रहे हैं, सो इन दैट केस दिस विल बी टारगेट सिस्टम, ओके। क्लियर? बट अगर एसएपी में ही हम मतलब EWM में हम मेंटेन करने वाले और वहीं पे हम यूज करने वाले, देन इट विल बी लोकल। क्लियर? हेलो? सर सोर्स सिस्टम टारगेट सिस्टम क्या है, नहीं समझ में। तो आपने ये देखा होगा कि समटाइम कुछ वेयरहाउस में कुछ ऐसे भी चीजें होती है जहाँ पे हम पैकेजिंग एक मशीन करती है इंस्टेड ऑफ मैन पावर, राइट? ऑटोमेटिक मशीन होती है, राइट? तो उसको इंस्ट्रक्शन देना मैंडेटरी है, राइट? उसको क्या मालूम कैसे पैक करना है, राइट? तो वो अगर इंफॉर्मेशन हम एसएपी में मेंटेन कर रहे हैं, ओके, और एसएपी फिर विद सम कनेक्शन, राइट? वो एसएपी से इंफॉर्मेशन उनको जा रहा है, सो इट विल बी देन सोर्स सिस्टम, एसएपी विल बी सोर्स फॉर दैट। टारगेट सिस्टम अपोजिट कि एसएपी में पैक हो रहा है, बट उसका जो कुछ पैकिंग जो है, मास्टर डेटा जो है, वो थर्ड पार्टी में किसी अलग सिस्टम ने हमें मेंटेन किया है, और यहाँ से वो यहाँ पे आएगा, उस सिस्टम से यहाँ पे आएगा, ओके। देन इट विल बी टारगेट सिस्टम। और लोकल मीन्स अगर एक ही सिस्टम में हम दोनों चीजें करने वाले हैं, ओके। तो करंटली हम लोकली करेंगे, राइट? बिकॉज वी डोंट हैव एनी कनेक्शन। मतलब दो अलग सर्वर रहेंगे तो वो हमको यूज करना पड़ेगा ना। यस। The VS is not our task. Basis consultant and then that solution consultant need to check कि क्या उसमें कैसा चीज है, मतलब क्या क्या कनेक्शन पॉइंट्स है, ओके। तो सेव इट। So 7500 मैंने ग्रुप क्रिएट किया है। नाउ इफ आई गो बैक टू द पैक स्पेस, ओके, /SCWM/packspace. Now if you check, see 7500, okay, it's there. Enter, right? Select this line, then click over here, change. तो यहाँ पे हम वो पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन जो है स्ट्रक्चर ये वाला यहाँ पे हम अंदर मेंटेन कर सकते हैं, right? Now if you go here, add label, so we can add as many as label we want, right? So एक लेवल में, if you check again the structure, लेवल में क्या है? एलिमेंट ग्रुप, एलिमेंट, पैकेजिंग मटेरियल एंड वर्क स्टेप, right? So if you go here, right, element group and create, right? So this is an element. एलिमेंट में क्या होगा? पैकेजिंग मटेरियल एंड वर्क स्टेप, ओके। पैकेजिंग मटेरियल मतलब बॉक्स, पैलेट, जो कुछ है, राइट? जो भी हमने क्रिएट किया है पैकेजिंग मटेरियल, राइट? क्लियर? सो व्हाट वी कैन डू, सो वी कैन मेंटेन हमारा लेट्स से सीबी, राइट? सो वर्क स्टेप तो हमें कुछ जरूरत नहीं है, राइट? बिकॉज वी आर गोइंग टू, हमें जो करना है वो ट्रिगर करना है, तो इसमें इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, राइट? Then here we can maintain the target quantity, let's say 100, minimum quantity 1, or let's say minimum target quantity is 10, right? तो ऐसे हम लेवल बाय लेवल मेंटेन कर सकते हैं, ओके। बट अगर लेट्स से एक के लिए मेंटेन करना है, सो प्रोडक्ट, हाँ, प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है, किस प्रोडक्ट के लिए ऐड करना है, तो गो हियर एट हेडर, राइट, ऐड प्रोडक्ट। देन यहाँ पे हम प्रोडक्ट मेंटेन करेंगे, किस प्रोडक्ट के लिए हमें पैकेजिंग ट्रिगर करना है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, ओके। सो एक दो प्रोडक्ट के लिए है या इज फाइन,
मतलब वो मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं ये लेवल वगैरह, राइट। बट अगर 10-20 के लिए करना है तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, राइट। वन बाय वन दे हैव टू डू इट। ओके, सो द स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर जो है ये पूरा कि लेवल कितने हैं, उस लेवल में कौन सा पैकेजिंग मटेरियल है, राइट, कितने एलिमेंट है, ये हम कॉन्फ़िग में मेंटेन कर सकते हैं। सो दे कैन डायरेक्टली ओपन दिस ट्रांजैक्शन, मेंटेन द पैकेजिंग क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी बॉक्स में पैक करना है, राइट। पैकेजिंग मतलब ये लेवल जो हमने जो अभी क्रिएट किया है, राइट, एलिमेंट जो हमने क्रिएट किया है, राइट। सो इट विल बी, मतलब सिस्टम जैसे हम सिलेक्ट करेंगे 3500, सिस्टम विल फेच फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन दिस स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर दिस थिंग? कैसे वो हम देखेंगे अभी, बट बेसिक क्लियर। हेलो, यस सर, क्लियर। नाउ कैसे कर सकते हैं? सो गो हियर, ओके, बैक, नाउ scroll down, so here you can see maintain structure or packaging specification, right? So सबसे पहले we'll see the level type. Okay, so we'll go with a simple level C75CB, right? 75CB, right? Then HU type, if you want specific HU, that वो भी हम create कर सकते हैं, right? Now if you go here, now let's say कि first level जो है, right, ये auxiliary packaging material है, यू नो, बबल शीट वगैरह उसका रैपिंग है। सेकेंड जो है वो मेन बॉक्स में हम पैक करेंगे। पर सिस्टम को कैसे मालूम कि यहाँ पे बॉक्स पैक क्रिएट एचयू क्रिएट करना है, यहाँ पे एचयू क्रिएट करना है, राइट। सो हियर यू कैन सी द टिक, राइट। तो ये हमें टिक करना पड़ेगा, तभी जाके सिस्टम को समझेगा ओके दिस इज एन माय पैकेजिंग मटेरियल, मेन पैकेजिंग मटेरियल, मतलब ये वाला बॉक्स, राइट। इसको तो हम पैकेजिंग मटेरियल नहीं बोलेंगे, मतलब सॉरी एचयू नहीं बोलेंगे, राइट। दिस इज माय एचयू ओनली बिकॉज ये ऑक्सिलरी पैकेजिंग मटेरियल है, राइट। सो ये जो टिक हम करेंगे तभी सिस्टम को समझेगा ओके यहाँ पे मुझे एचयू क्रिएट करना है, मतलब जो हम पैक एक्टिविटी देख रहे थे, राइट, इन PRDI, एचयू क्रिएशन मीन्स अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, सो ये वाला जो एचयू दिखेगा, दिस वन, ओके, क्लियर। सो नाउ यहाँ पे आई विल टिक दिस वन। नाउ डिलीशन नॉट अलाउड, मतलब क्या, अभी इफ यू चेक द पैक स्पेस, सो आई कैन डिलीट दिस लेवल, राइट। बट अगर वो आपने टिक किया देन यूजर विल नॉट एबल टू डिलीट दैट, ओके। and these are other setting kitting वगैरह हम बाद में देखेंगे। then icon if you want to you know maintain some like any icon like this, let's see now। so ये जो मैंने लेवल टाइप क्रिएट किया है, okay, copy this level type, then go to the level set first, okay, level set। अभी सिस्टम को क्या मालूम, यहाँ पे देखिए कितने लेवल सेट है, तो what we'll do, we'll create one level set 7500, एंड जो हमने क्रिएट किया है, what we have created level type, right। so for that level set we'll maintain that level type, इसका sequence first, okay, priority first means first, then C1 C2 second third fourth like this, right। अभी सिस्टम को कैसे मालूम कि 75 CB ट्रिगर करना है या 75 PL या 95 CB वगैरह, राइट। तो जो लेवल सेट जो है, राइट, तो ये हमें मेंटेन करना है कहाँ पे, पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन ग्रुप में। तब जाके सिस्टम को समझ में आएगा कि ओके व्हेन विल सिलेक्ट दिस पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन ग्रुप, जिसमें वो लेवल सेट जो है, उस लेवल सेट में हमने जो भी स्ट्रक्चर मेंटेन किया है वो हमें ट्रिगर करना है, राइट। इफ यू नाउ चेक अगेन, सो आई विल नॉट सेव इट, गो अगेन, ओके, सिलेक्ट
चेंज मोड CB। तो जो भी हम लेवल सेट में मेंटेन करेंगे, जो भी सीक्वेंस, अभी लेवल सेट तो हमने इस पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन ग्रुप के लिए मेंटेन किया है, राइट। तो जो भी हम सीक्वेंस लेवल सेट में मेंटेन करेंगे वो हमें दिखेगा पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन में, पैक स्पेस में, मतलब। क्लियर? हेलो? मतलब सर वो 4 जो लेवल है जो आपने डायग्राम दिखाई, फिर से ओपन कीजिए। ये वाली जो पहला एलिमेंट, यस। मतलब सो वर्ड सेट या सो ये जो है एलिमेंट, राइट, सो ये जो है वो हम लेवल में मेंटेन करेंगे। अभी आपने 3 लेवल सेट किया क्या उसमें? फिर क्या लेवल 1 में? एक ही क्रिएट किया है, ऐसे मैंडेटरी नहीं कि 3 करना है। वी कैन क्रिएट 1 2 3 व्हाटएवर एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, हमने अभी एक ही क्रिएट किया है, फर्स्ट वाला, क्योंकि ऐसा नहीं कि 3 ही करना है, हम कितने भी कर सकते हैं, 3 4 क्या अभी 10 हमने सिंपल 15। एग्जांपल लिया क्या बॉटल का? सिंपल, यस, हमने सिंपल ही किया है। हमने वो ओके बॉटल को सीधा बॉक्स में डाल रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल। ओके। ओके, तो सबसे पहले मैंने पैकेजिंग, तो वहाँ पे बबल शीट कैंसिल करके हमें कार्टून यस सिलेक्ट करना पड़ेगा ना? यस, आप फिर कैसे भी कर सकते हो। ओके। तो फिर लेवल 1 लेवल 2 दोनों करना पड़ता है। अगर यस बाद में इसी को हम कार्टन में सेट करोगे तो इसके यस, अंदर 2 रहेगा तो फिर लेवल, अलग? नहीं, इसके अंदर ही आएगा, लेवल सेट के अंदर ही आएगा। मतलब ओके हम पहले लेवल टाइप, अभी लेवल टाइप मतलब ये 1 2 3, अभी मैंने एक ही क्रिएट किया है। तो अगर आपको और एक करना है तो आप सेकंड क्रिएट करोगे, और वो सेकंड फिर से लेवल सेट में जाके असाइन करोगे, क्योंकि लेवल सेट हमने पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन ग्रुप में मेंटेन किया है, ओके। राइट। मतलब जो पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन ग्रुप जो है 7500, जब वो लेवल मेंटेन सेट एक ही नंबर आएगा, 2 नहीं आएगा? यस, लेवल सेट मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो लेवल सेट सिस्टम में में हमने से, लेवल टाइप असाइन किया है क्या? यस, ओके। और फिर अच्छा। फर्दर उस लेवल टाइप में विल आल्सो असाइन एलिमेंट। सी, ये लेवल टाइप हो गया, फिर इस लेवल टाइप में विल असाइन एलिमेंट टाइप। तो यहाँ पे हम नंबर मतलब न्यू एंट्री करके कितना भी असाइन कर यस सकते हैं? यस यस यस, मतलब जो हम यहाँ पे जो मैन्युअली कर रहे हैं, अभी यहाँ पे देखिए खाली लेवल आया, राइट, एलिमेंट में कुछ भी नहीं है, तो मुझे मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा लाइक दिस। तो ये भी हम उस कॉन्फ़िग में मेंटेन कर सकते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर ट्रिगर हो जाएगा फिर। ओके। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। आई विल गो टू एलिमेंट टाइप, क्रिएट 7500 then 75 CB. Okay, and this is HU relevant. This is my main packaging material, right? And again, deletes are not allowed. And then you can maintain any icon. It's not mandatory, right? It's up to you. Okay, now the CB will go back. Again, we'll go to the level set. Like this, right? So in this level type, I will assign that element type. Okay, sequence 1. Okay, save it. Okay, now again, if I go backspace, save it, and if you just check, see, clear? Because that tick is there, deletion not allowed, so मैं इसको delete नहीं कर पाऊंगा, see, not able to delete it. Yes, if I want I can add more level, that is fine, and that I can delete, but जो already हमने वो tick किया तो उसके वजह से वो delete नहीं कर पा रहे हैं. Okay, now in element, right, is all about packaging material and work step, right? अगर मैं packaging material यहाँ पे देखता हूँ तो you know just select yes, right? So ये इतने सारे packaging material आ रहे हैं, right?
So we can also maintain specific packaging material type, right? कि CB वाला यूज करना है, जिसमें CB मेंटेन है वही हमें यहाँ पे अलाउ होना चाहिए, right? So what I will do, again I will go to the configuration. Okay, go back. Now packaging material type जो हमने already create किया हुआ है, right? HU के वक्त you can check it the same. Okay, already यहाँ पे है CB. So हमें ये खाली maintain करना है to element type. Okay, new entry. So 75 CB to 75 CB. अब इससे होगा क्या? If I save it, right? So ये जो element type है, right? ये element type already level set में maintain है, right? अभी अगर मैं जाके यहाँ पे देखता हूँ पैकेजिंग मटेरियल, पहले कितने बहुत सारे दिख रहे थे, अभी एक ही दिख रहा है. Why? Because this packaging material type is assigned to only this packaging material, right? 659. तो ये स्पेसिफिक हो गया कि ये यूजर अभी यही मेंटेन कर सकता है, like that. Clear? Yes, clear, sir. Okay. Then okay, so work step का भी हम डिस्कस करते हैं. So even we can also work step में भी तो हमने कुछ क्रिएट नहीं किया है, but yeah we'll see क्या कर सकते हैं वर्क स्टेप में. So again I will go to the configuration. So उसमें भी स्पेसिफिक टाइप हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट? So इससे again simple setting 75 CB, right? And then you can also maintain that particular work step, the packaging material. Okay, then 75 CB, 75 CB, okay, box, right? फिर जब हम वर्क स्टेप क्रिएट करेंगे, एक्चुअल वर्क स्टेप, if you just go back again, right, not save it, तो ये जो ट्रांजैक्शन है मेंटेन पैकेजिंग वर्क स्टेप. ओके, सो जब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे वर्क स्टेप, ओके, इनटू बॉक्स फॉर एग्जांपल, राइट? तो ये जो टाइप जो है जो हमने क्रिएट किया है, राइट, 75 स्पेसिफिक उसके लिए सीबी, मतलब जो, क्योंकि हमने ये वर्क स्टेप टाइप किसको मेंटेन किया है, असाइन किया है पैकेजिंग मटेरियल को, तो ये फिर स्पेसिफिक हो जाएगा कि जब हम फॉर एग्जांपल मैं इसको, राइट, सो कुछ डॉक्यूमेंट अगर अटैच करने या कुछ टेक्स्ट वगैरह मेंटेन करने हम यहाँ पे कर सकते हैं, राइट? सो आई विल जस्ट कॉपी एंड देन सेव इट. I go back again, packaging specification. Okay, now if you go here, so एक तो पैकेजिंग मटेरियल हमने देखा कि अभी एक ही हम मेंटेन कर सकते हैं. सेम थिंग विथ वर्क स्टेप. See this, okay, is maintain at client level, just ignore. और यहाँ पे देखिए हम एक ही मेंटेन कर सकते हैं बिकॉज सेम वर्क स्टेप टाइप हमने पैकेजिंग मटेरियल को असाइन किया हुआ है. तो वी कैन ऑल्सो लाइक अ फिल्टर कि यस यही आपको यूज करना है, दूसरा कौन सा यूज नहीं कर सकते, ऐसा हम कर सकते हैं. ओके, और यहाँ पे मैं टारगेट क्वांटिटी अभी के लिए 1 रखता हूँ. विल चेक कि ये इसका इम्पैक्ट क्या है, राइट? अभी कौन से मटेरियल के लिए ये पैकेजिंग ट्रिगर होना चाहिए, राइट? सो दैट वी हैव टू मेंटेन. ओके, सो गो हियर, ऐड प्रोडक्ट. ओके, now we need a product number, so I will go to the PRDI screen. So what I will do, 647 के लिए मैं मेंटेन करता हूँ. ओके, इट्स क्वांटिटी 1. ओके, नाउ द कंडीशन, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सबके लिए होना चाहिए ट्रिगर, राइट? सब कस्टमर वेंडर के लिए सेम ही होगा. स्पेसिफिक हम कंडीशन मेंटेन करेंगे. ओके, so go to the header determination. So there is something called condition type.
ओके, सो यहाँ पे ऑलरेडी कंडीशन है दैट विल यूज, लेटर विल डिस्कस कि ये कंडीशन टाइप कैसी आ रही है, राइट? सो द स्टैंडर्ड कंडीशन इज 0 IBD इनबाउंड डिलीवरी. ओके, select this. now यहाँ पर भी अलग अलग टेबल है, so what I will do, I will go with first one, inbound delivery. okay, so इसमें मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मीन्स whenever I receive this product from this vendor, right? ये हमारा वेंडर है, राइट? फ्रॉम मीन्स शिफ्ट फ्रॉम, और सप्लाई चेन यूनिट. व्हाट इज सप्लाई चेन यूनिट? तो हमने उसको बी पे असाइन किया था ना उस टाइम. तो ये सप्लाई चेन यूनिट में हमने बिजनेस रोल मेंटेन किए थे, राइट? सो नाउ द कंडीशन इज लाइक दैट, जब भी डिलीवरी क्रिएट होगी फॉर दिस सप्लाई चेन यूनिट, फॉर दिस वेंडर, सॉरी, फॉर दिस मटेरियल फ्रॉम दिस वेंडर, then only this packaging need to trigger. okay, I will check for any error. There is no any error, right? So we can also check how it look like, means preview में हम अगर printable document है तो हम देख सकते हैं. So the standard device is LP01 print preview, right? So this is a print preview, right? Then is mandatory to activate this. So you can see this yellow, right? We have to activate, then only it will work. Okay, I will see the impact. अभी मैं क्या करता हूँ, I will create one delivery. Okay, I will go with 5 piece. Okay, 47 के लिए हमने मेंटेन किया है. So I will save it. Right now if you check HU, see there is one HU is created, right? हमने तो डिलीवरी बनाते वक्त HU क्रिएट नहीं किया था, right? But now because of packaging specification, सिस्टम ने क्रिएट कर दिया, right? Clear? yes sir. Any question? क्या था, क्लियर है? Because if you check, तो आपको मालूम है ये जो डिलीवरी हमने बनाई है is already for that particular good receipt office, means supply chain unit, right? Then is coming from vendor, you check, right? And then material में वो material, तो तीनों condition fulfill हुए, and that the reason system create HU. Okay. Now what I will do, I will create one more delivery. Now, okay, I will go with 12 piece. Okay, both. Okay. पहले हमने 5 पीस के लिए की थी, अभी हमने 12 पीस के लिए क्रिएट किया है, right? So now there are 2 packaging material. Sorry, 2 HU. 2 HU में अगर आप देखोगे सेम ही मटेरियल है, राइट? बट उसने क्वांटिटी कैसे की है, 10 और 2 पैक किए, राइट? क्यों? If you go back to the packaging specification, यहाँ पे हमने क्या टारगेट क्वांटिटी मेंटेन की है, 10, राइट? एंड मिनिमम 1. तो टारगेट क्वांटिटी मींस मैक्सिमम क्वांटिटी. तो सिस्टम क्या करेगा, ऑलवेज फर्स्ट ट्राई टू फुलफिल द 10 क्वांटिटी, देन रिमेनिंग क्वांटिटी इट विल क्रिएट न्यू HU. क्लियर? हेलो?
Is this clear? हेलो हेलो सर एक बार रिपीट करो ये स्टेप। क्या यहाँ पे कितना टारगेट क्वांटिटी 10 ओके राइट, मतलब वो मैक्सिमम एक बॉक्स में 10 ही पैक करेगा करेक्ट। राइट। और हमने कितना डिलीवरी बनाया, कितने का डिलीवरी बनाया हमने 12 राइट 12। What system will do, because target quantity is 10 right, maximum quantity, so वो दो HU create करेगा, in one HU it will pack 10 and in another HU okay. remaining quantity. Okay, okay. So same way if you create 22, in that case what will happen? 10 10 और 2 होगा ना? Yes. तो हमें 10 का बढ़ा भी सकते हैं ना हमारे आदमियों को? Yes, yes, is up to like we need to check with business. Okay. Clear? Is clear? Packaging specification. Okay. Now about that condition, right? Why 0 IBD only? Okay. So if you go back, right, so we do have something called determination of packaging specification, right? So ये जो condition जो हमने maintain की है, right? Why only these three? क्या कहता है supply chain unit, product and your vendor, right? Because वो condition already SAP ने बनाई हुई है and then we have only used that, right? So ये हम वेब में देखेंगे कि कैसे create किए जाते हैं, but we'll see right now. एक तो field catalog means these are the field is with the help of this, for example 1 2 3, right? We can create any filter or any condition. Okay, so ये field catalog है. Yes, we can add with the help of ABAP, right? हमको ABAP की help लेनी पड़ेगी क्योंकि इसका field name, data, element, some technical information we need to maintain over here. Okay, then if you go to the condition table, so the condition for that is this one. Okay, inbound IBD01. So इस IBD01 में 3 condition already maintain है, right? From that catalog. So we can select and then you can press this arrow if you want to add. Okay, but yeah, don't make any changes in standard. Create your own. Now we are going to discuss or we are going to create later for in wave management. Okay. So इसमें ये 3 ही condition है that we'll use. Okay. Then how we can access this condition? Okay, so for that we have to maintain the access sequence. Okay, then in access sequence 0 IBD, right? In that these are the 4 table. That's why जो आप जब हमने select किया 0 IBD उसमें ये 4 टेबल हमें दिख रहे थे, right? So हमने IBD 01 हमने select किया, ठीक है? Then the next condition type. Okay, so again 0 IBD. In that this condition type, these are the access sequence. Okay, and determination procedure. So the procedure is again 0 IBD, again standard, और उसके अंदर the condition. So हम यहाँ पे अलग अलग condition भी maintain कर सकते हैं जिससे access sequence trigger होगा और उस access sequence से वो condition table trigger होगा. Okay, 0 IBD में. Clear?
नाउ व्हाई ओनली 0 IBD? व्हाई नॉट वहाँ पे अलग अलग भी थे, राइट? सिस्टम को कैसे क्या मालूम 0 IBD ही लेना है? जैसे हमने मेंटेन तो किया है, राइट? बट व्हाई ओनली दैट? सो इफ यू go to the good receipt process, okay, inbound delivery, then document type, IMB PDI, right? So यहाँ पे आप देख सकते हो packaging material condition, right? Procedure. So his IBD is maintained, okay, at client level because the document type. At document type means client level. और यहाँ पे एक छोटा सा एक tick box भी है, no automatic packing. So if you tick this, then even you, if you maintain the condition, right, systems will not pack anything because यहाँ पे वो tick है, right? But yeah, don't do anything because it's at document level, at client level, it will impact for all. Okay, clear? ओके सर। Any question? एक बार फिर से वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपने बताया टेबल चाहे सीक्वेंस, Yeah, ये थोड़ा थोड़ा सा सा ये, yes, yes. ओके होने के बाद Now देखते हैं again, एक बार फिर। yeah, sure. Now to create packaging material or like this condition for again 10, 15 even material, like ये अगर हमने maintain भी किया है, right? उसका structure still it's टाइम कंज्यूमिंग, राइट? 10 के लिए हम कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, व्हाट इफ अगर ये 100 प्रोडक्ट के लिए मेंटेन करना है, राइट? इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, राइट? तो उस केस में व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज समथिंग कॉल्ड रेफरेंस मटेरियल। ओके, ये असाइनमेंट है, मैं खाली आपको बताऊंगा कि कैसा करना है, राइट? देन प्लीज डू इट। सो आपके पास ऑलमोस्ट एक वीक है, राइट? देन यू नीड टू इवन स्क्रीनशॉट अगर आप लगाते हो दैट इज आल्सो फाइन, राइट? कुछ ज़्यादा डिटेल उसमें लिखने की जरूरत नहीं है कि आपने वो कैसे ये किया है। उसका खाली अगर आपने जस्ट स्क्रीनशॉट भी आपने ये किया कि ऐसी ये पैकेजिंग मटेरियल था, ये कंडीशन आपने मेंटेन की, दैट इज आल्सो फाइन। ओके, तो उसमें करना क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, so उस केस में we'll use something called reference material. Okay, now what is reference material? So we'll create one dummy material first, ठीक है? M01 में जाके हम एक dummy material create करेंगे, ओके? फिर वो मटेरियल हम एक्सटेंड करेंगे EWM में, ठीक है? फिर हम जो पैकेजिंग मटेरियल क्रिएट करेंगे, सॉरी पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन क्रिएट करेंगे, उस डमी मटेरियल के लिए क्रिएट करेंगे। लेट्स से हमने एक डमी मटेरियल क्रिएट किया 650, राइट? तो 650 हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे एंड देन विल टिक दिस वन, रेफरेंस मिक्स अलाउड। ओके, 650 मैंने मेंटेन किया। अभी लेट्स से मुझे 647 के लिए पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन मेंटेन करना है, बट मतलब ऐसे मटेरियल है, फॉर एग्जांपल 100 मटेरियल है, उन 100 मटेरियल का जो पैकेजिंग है वो सेम है और मुझे सिंगल गो में वो सबके लिए मेंटेन करना है। तो फर्स्ट विल क्रिएट 650 रेफरेंस मटेरियल और डमी मटेरियल, ओके? उस डमी मटेरियल के लिए हम पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन मेंटेन करेंगे, राइट? देन जो मेन मटेरियल है, लेट्स से ये वाला 659, राइट? तो 659 में जाके यहाँ पे हम वो जो मटेरियल होगा, जो डमी मटेरियल 650 हम मेंटेन करेंगे। क्लियर है? मतलब एक फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड टाइप का हम पैकेजिंग बोल सकते हैं, मतलब यस, 100 मटेरियल का एक ही फॉर है, यस, 100 एग्जांपल उसी मटेरियल का, टाइप यस। का पैकेजिंग हमें करना है तो उस मटेरियल को जब मटेरियल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे वो नंबर दे देंगे। यस, तो यहाँ उसके पे लिए बाकी का डॉक्यूमेंट भी पूरा करने की जरूरत ही नहीं ना, स्टार्ट से एंड तक जितना कस्टमर ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर सबके लिए, करेगा ना। मतलब यस, मतलब जितने भी मटेरियल हो गए आपके 650, 51, 52, 53, राइट? तो उन सबको जाके खाली यहाँ पे फिर वो रेफरेंस मटेरियल जो डमी मटेरियल वो मेंटेन करना है। ओके,
ठीक। ओके, ये आप कीजिए। यस, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मैं आपको बाद में शेयर करूंगा, डोंट वरी, उसमें पूरे स्टेप है। बट या प्लीज ट्राई फ्रॉम योर एंड फर्स्ट। ओके, एनी क्वेश्चन? ओके, टेक इट एज नो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है, अरे हम दोनों ही है, हाँ, मुझे लगा मैंने देखा ही नहीं। वो शुभम गया था कब का, और मोहित? वो तो जल्दी चला गया वो। ओके, कि अगला टॉपिक वुड लाइक टू डिस्कस विद एवरीवन बिकॉज वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब डिपेंडेंट प्रोसेस आने वाले हैं इसके ऊपर, और बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसकी वजह से लोग ईडब्ल्यूएम यूज करते हैं, मतलब ओके, कंपनियां। जो आपने वो दैट कुछ तो इज पीसीओआर कुछ तो लॉन्ग फॉर्म पीओएसी, बताया था यस ना। यस यस, पीओएसी, यस। ओके, मेरे को पिकअप करना पडेगा सर. मैंने अभी तक इनबॉन्ड डिलिव्हरी पण मी अजून केलेली नाही. कामाचं लोड वाढल्यावर प्लीज नाही करतो. मी एकदा बसलो ना 2 दिवस या सुट्टी घेऊन ते कव्हर करेल. करतोय. या ब्लॉक्ड मटेरियल ब्लॉक्ड. हाँ, If you could share me some screenshot, so it will be great. मैं देखता हूँ अभी वो. Okay. Okay, let it be. अभी तो इनको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा. So I hope you can see my screen. हाँ सर. Okay. Let me check one more thing. It's क्योंकि मुझे अभी ये वीक या एक वीक में प्लान है, वैसे तो कंप्लीट होना चाहिए 50%, क्योंकि वंस वी कंप्लीट 50% तो आगे का आउटबाउंड में तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं, वो हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं. अभी हार्डली 1 मंथ क्लास होगा सर. यस, माय प्लान इज टू कंप्लीट विद इन 1 मंथ. तो थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे. तो अगर आप रेगुलर आते हो सो नाउ विल बी नो लिटिल बिट स्ट्रिक्ट. अगर आप रेगुलर मतलब अगर आप या कोई भी रहता है इवन वन, तो आई विल कंटिन्यू, क्योंकि ऐसा होगा तो राइट विल बी वेरी डिफिकल्ट. करेक्ट. फिर वो तो कभी नेवर एंडिंग क्लास हो जाएगा. हाँ, कोई ना कोई आता नहीं रहेगा. Yeah, so अगर yeah, if everyone is listening to this, please join. Okay, now I'm not going to stop. Okay, no matter कितने लोग आ रहे, I will continue because now it is like मतलब इतना हो के भी मैंने आपको इतने टाइम दिया और फिर भी आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो. आई डोंट नो व्हाई. मैं मैसेज भी कर रहा हूँ, लाइक ऐसा भी नहीं कि 15 मिनट आधा घंटा पहले प्रायर मैसेज कर रहा हूँ. एंड देन यू नो दैट ट्यूसडे एंड थर्सडे इज आवर शेड्यूल क्लास. और मैंने लास्ट वीक बोला था कि विल एक्सटेंड, खाली वो कल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सम फंक्शन था घर पे, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. बट नाउ बिकॉज अगर ऐसा ही बना रहा तो ये और 3 महीने भी चल जाएगा क्लास, राइट. तो या उसमें करेक्ट. आप ही का सबका लॉस है
जितना आप लेट करोगे, जितना आप, क्योंकि डोंट थिंक अबाउट डे 1, ऐसा मत सोचिए कि आज नहीं होगा तो कल हम देख लेंगे, परसों, बट बिकॉज आज नहीं आओगे तब कल भी नहीं आओगे, परसों भी नहीं आओगे, राइट? तो वो ऐड होते जाएगा. माय रिक्वेस्ट इज टू प्लीज ज्वाइन. ओके, सो वी कैन कंप्लीट ना, जल्दी जल्दी हम कर सकेंगे, एंड देन विल आल्सो कवर मोर सिनेरियो. मतलब आपका अगर कुछ क्वेश्चन होगे तो वो भी हम इजीली ये कर पाएंगे. प्रोजेक्ट्स पर रहेगा ना सर? सॉरी, प्रोजेक्ट्स रहेगा ना सर? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मतलब क्या? नहीं, अभी कंप्लीशन होने के बाद प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नहीं रहेगा. प्रोजेक्ट मतलब आपको यही कॉन्फ़िग करना है. प्रोजेक्ट के बारे में इफ यू वांट वी कैन डिस्कस कि कैसे काम किया जाता है, बट प्रोजेक्ट मतलब तो यही है, आपको वेयरहाउस वगैरह क्रिएट करना है, वही तो चीज है. ठीक. ओके, किसी का तो मैसेज आया है. Okay, no issue. So the today's topic is very important topic. That is POSC. Okay, so that is process oriented storage control. Okay, so the POSC is like in simple language, जैसे एक मटेरियल आता है, ओके, एंड देन विल मूव दैट मटेरियल, लाइक जैसे हम फॉर एग्जांपल घर में, जैसे हम डीमार्ट से कुछ सामान वगैरह लाते हैं, राइट? तो हम उसको पहले सेग्रीगेट करते हैं, राइट? तो वो हम चीज़ देखेंगे कि उसको कैसे हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, राइट? सो उसको पहले हम इजी वे में ब्रेक डाउन करेंगे. ओके, सो द इजीएस्ट वे, फर्स्ट ऑफ ऑल, so it's we're going to discuss two activity, unload plus put away. Okay, ये हम देखेंगे. So basically let's say there are two team. Okay, first team is doing only unload. Okay, and then second team will do put away. Okay, and then it will assign this. So there is something called storage process. Okay, उसमें हम sequence maintain करेंगे, that unload and उसके बाद then we have put away. Okay, then so there is something called external step that we have to assign to internal process step. Okay, so ये हम देखेंगे what is external step, what is the internal process step. But what we are going to do, so दो team है, one is working with unload and second one working is put away, right? So two different tasks. तो अभी तो हम खाली एक ही टास्क करके डायरेक्ट हम put away कर रहे थे, right? तो विल सी कि अनलोडिंग के लिए एक टास्क बनेगा, एंड देन पुट अवे, जैसे अनलोडिंग कंफर्म हो जाएगा सो पुट अवे विल वर्क, पुट अवे का टास्क भी बन जाएगा. ओके, सो इसमें कंट्रोल पैरामीटर, इज देयर, राइट? सो इच स्टेप, सो ये जो होगा जिस कॉल स्टेप 1 स्टेप 2, सो इच स्टेप, राइट, विल बी हैविंग द source bin, okay, and destination bin. Okay, source bin and destination bin. ठीक है, क्लियर? ओके. मतलब अनलोडिंग और सोर्स. नाउ फॉर एग्जांपल अनलोड एंड पुट अवे. सो अनलोड के लिए क्या हो सकता है? सोर्स बिन,
we can say door bin, right? Right? And then उसका जो destination होगा that is my GR bin, right? And जो put away होगा उसके लिए जो source होगा that will be the GR bin, and then the destination will be final bin. Clear? Is this clear? Okay, sir. और इसमें HU is mandatory. Okay. HU is must or mandatory, whatever you want to say. Okay. Then how we do this? So if you go to the SPRO, SP reference IMG, SM extended warehouse management, cross process setting. Okay, warehouse task. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो warehouse process type. Okay, then these are the external step, right? So what I will do, so our warehouse is 7.5. So 7.5 UN I will create, and then 7.5 PT. So UN is unloading, and then it is for put away. Okay. So now why we have external step? So external step allow us to create, मतलब हम कितने भी step create कर सकते हैं, right? P2, let's say P1 is put away, P2, P3, P5 अलग अलग अगर हमारे पास steps है, right? वो हम कर सकते हैं. But अभी ये unloading और put away क्या represent करेंगे? So obviously unloading will do unloading only, right? So यहाँ पे वो external step. So if you remember, जैसे हमारे पास storage type के जो rules है, right? कौन से है? स्टेजिंग एरिया हो गया, फाइनल या नॉर्मल स्टोरेज हो गया, फिर वो आपका डोर हो गया, राइट? सो सेम वे आप जितने चाहिए आप उतने एक्शनल स्टेप क्रिएट कर सकते हो, बट इसका एक्शन क्या हो गया? टू डू अनलोड. सो अनलोड के लिए अनलोड, ओके, इट विल डू अनलोड. देन पुट अवे के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड पुट. ओके, मतलब आप जितने चाहे उतने क्रिएट कर सकते हो बिजनेस के रिक्वायरमेंट के लिए, बट इट विल ऑलवेज असाइन. सो इसका सिंपल जो फंडा है वो आप स्टोरेज टाइप जो हमने क्रिएट किया है, राइट? हमने RK1 सॉरी RK10 RK20 RK30 हमने क्रिएट किया है, राइट? बट उन सबका जो एक्शन है, राइट, फॉर एग्जांपल इफ यू रिमेंबर कि RK10 जब हम कर रहे हैं, सो इट्स नथिंग बट लाइक सब कुछ कौन सी स्टैंडर्ड स्टोरेज टाइप ही है. क्लियर? ओके, सो ये हमने क्रिएट तो किया, राइट? एक्सटर्नल स्टेप, राइट? देन व्हाट नेक्स्ट? इफ यू चेक एक्सेल, सो स्टोरेज प्रोसेस में हमें उसको सीक्वेंस करना है. अभी सिस्टम को नहीं मालूम है कि ये फर्स्ट है या ये फर्स्ट है, राइट? सो फॉर दैट if you go to the storage process, okay, new entry, so 7500 USC I, okay, or I will go with IBD, okay, 7500 POSC, right? So यहाँ पे मैं जाके यहाँ पे वो असाइन कर दूंगा सीक्वेंस. So my first step is, first one is UN unloading, right? And then second task is put away. You can see the sequence number. Clear? Now मैंने यहाँ पे क्या बताया कि as soon as we confirm this task, unloading task, we want system should create put away task. Okay, system should create put away task. So how system will know system का कैसे create करेगा? So here you can see the tick, the first one which say create W task WT automatically. So जैसे आप unloading को click करोगे, right? So next जो है put away,
ये वाला टास्क वो क्रिएट हो जाएगा। ओके क्लियर? Okay. I will save this now. इसकी जो असाइनमेंट है, अभी सिस्टम को कैसे मालूम कि ये ट्रिगर करना है, राइट? सो फॉर ट्रिगरिंग, राइट, सिस्टम स्लो है लग रहा है। गो टू द WPT, तो जो हमारी WPT है, या ये वाली हम इस पे, इफ यू चेक ओवर हियर स्टोरेज प्रोसेस, हम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा जो हमने क्रिएट किया है। 730, सॉरी, yes you can see 7500. so इसमें की WPT है, so what I will do, for example for 101, sorry 1011, यहाँ पे मैं जाके मेंटेन कर देता हूँ। ओके IBD, अगर आप देखोगे यहाँ पे, so you can see IBD. ओके ये ऑलरेडी सिस्टम ने क्रिएट किया है कॉपी, so that's why are there. Okay, save it. Clear? Now, so मैं क्या बोल रहा हूँ कि लाइक जो पैरामीटर है, राइट, जो उसका अनलोडिंग का है वो डोर बीन है, राइट? सो हमें डोर बीन मतलब कैसे ट्रिगर होगा? वी नीड टू क्रिएट डोर ऑल्सो, राइट? गो टू द मास्टर डेटा, राइट, स्टोरेज टाइप हमें डोर क्रिएट करना पड़ेगा। हम ऑडिबल? हाँ सर। Okay, so 7500, so we don't have any door over here, right? So what I will do, will just simply select copy dr in, okay, door IBD. so door के लिए जो स्टोरेज टाइप रोल है वो क्या है? F, right? so this is not my final put away, so I will untick, right, and then put away role will go with 4, right, and then confirmation put away, and ability group obviously will not maintain because this is my, it's not my final put away. Okay, save it. So whenever we create new storage type, we need to create bin. So we'll go to this /SCWM ls01. Okay, so 7500, so door IBD, okay, door in, okay, so हमने कर दिया. Now if you check the control parameter, what we have maintained in control parameter की unloading का ये door bin है, door bin is source, destination is this, and then for put away GR जो bin होगा obviously, right, वो आपका source होगा और put away final bin होगा destination, right? मतलब ये हमें किधर तो maintain करना पड़ेगा, right? Hello? Yes, sir. Are you getting my point? Yeah. Okay. So where we maintain the door bin. So currently, if you check the delivery, अभी जो source bin जो है first वाला, अभी कौन सा source bin है हमारा? जब भी हम delivery distribute, हम जब good receive करते हैं, तो कौन सा bin update होता है system में? Inbound. Sorry? Inbound delivery.
नो बीन कौन सा सिस्टम मेंटेन करती है? जब व्हेन यू कंप्लीट द गुड रिसिप्ट, वो कौन से बीन में मटेरियल चला जाता है? इज गो टू दी जेआर बीन, राइट? ये वाले में, राइट? मतलब करंटली सोर्स बीन ये वाला है, तो अभी इसको हमें चेंज करना है, राइट? तो कहाँ पे हम ये मेंटेन करते हैं जेआर जोन बीन? कौन सी सेटिंग में हम मेंटेन करते हैं? क्वेश्चन समझ में आ गया? सिस्टम सबसे पहले बीन कहाँ से उठाती है? जो हम गुड रिसीव करते हैं, राइट? ये हमने देखा था, कहाँ से वो बीन उठाती है? यस, कंफ्यूज भूल सर। गए क्या? ये डब्ल्यूपीटी में हम बीन मेंटेन करते हैं, राइट? डब्ल्यूपीटी में जीआर बीन मेंटेन करते हैं, राइट? जो फर्स्ट बीन होगा, मतलब अभी हमें फिर से डब्ल्यूपीटी में जाके जो हमारा सोर्स बीन होगा सबसे पहले वाला, राइट? जैसे मटेरियल जहाँ पे आने वाला है, वो अभी हमें जाके अपडेट करना पड़ेगा, राइट? सो अभी जो हमारी डब्ल्यूपीटी है वो दैट इज 1011 न्यू डब्ल्यूपीटी है, राइट? विच स्टोरेज प्रोसेस, ये वाली। तो यहाँ पे मुझे वो डोर बिन मेंटेन करना पड़ेगा, राइट? तब जाके वो वहाँ पे उसको जब मैं गुड रिसीव करूँगा तो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है? क्लियर? ये हो गया फर्स्ट डेस्टिनेशन सोर्स का। नाउ डेस्टिनेशन भी ऑब्वियसली ये फिक्स ही है, राइट? जीआर बिन है, जीआर बिन में ही जाएगा डोर से। अनलोडिंग डोर बिन टू जीआर बिन ही हम करेंगे, राइट? नॉट कि डिफरेंट डिफरेंट बिन में करेंगे, राइट? ये जो एक्टिविटी है अनलोडिंग वाली, ये कौन सी मैं आपको दिखाता हूँ। यार सर्वर स्लो है आज, तो हमारा डोर किधर क्या? टू स्लो। Let me check with them. ओके, अभी जो डोर बिन जो मैं एक्टिविटी बोल रहा हूँ, जब हम मटेरियल हमारे पास आएगा, राइट? जब हम वो अनलोडिंग करेंगे यहाँ से, लेट से जो अंदर वाला बिन होगा स्टेजिंग वहाँ के लिए, राइट? वो हम एक्टिविटी करने वाले हैं, राइट? सो दैट्स वाई जो फर्स्ट बिन होगा वो ये डोर बिन होगा, राइट? और फिर स्टेजिंग जहाँ पे हम अनलोडिंग करेंगे, ओके? तो ये तो हो गया सोर्स। अब इसका डेस्टिनेशन हम तो यहाँ पे नहीं मेंटेन करेंगे, बिकॉज ये तो फाइनल पुट अवे के लिए, क्योंकि ये जो डब्ल्यूपीटी जो है ये पुट अवे के लिए है। जब व्हेन यू क्रिएट डब्ल्यूपीटी फॉर पुट अवे एक्टिविटी, ओके, और विथ कैटेगरी 1
system will not allow you to maintain destination. For example, if I let's say maintain gr00, see it will give me the error. ओके तो यहाँ पे नहीं मेंटेन करना है, क्योंकि ये जो WPT है फॉर पुट अवे, देन कहाँ पे मेंटेन करना है. ओके सो dr bin save. Okay, so go to the again WPT warehouse pro sorry POSC setting. तो यहाँ पे जो है सेकेंड जो ऑप्शन है प्रोसेस ओरिएंटेड स्टोरेज कंट्रोल, तो यहाँ पे मेंटेन करना है. ओके सो 7500 राइट. नाउ एक्शन स्टेप कौन सी है? 75 अनलोड. राइट, अनलोडिंग के लिए हम करने वाले. राइट, अगेंस्ट विच WPT 1011. राइट, तो जैसे 1011 ट्रिगर होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा? GR00 और फिर वो GR0 वाला बीन, फॉर एग्जाम्पल दिस वन. ओके क्लियर? अभी जब नेक्स्ट वाला जो स्टेप है, राइट, द फाइनल स्टेप, वो कौन सा है? पुट अवे. पुट अवे का सोर्स कौन सा है? GR बीन. राइट, तो वो तो मटेरियल उसी में है, तो वो कहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. राइट, और उसका जो डेस्टिनेशन बिन होगा वो होगा फाइनल बिन. राइट, तो फाइनल बिन तो हमें यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ओनली हम एक ही बिन मेंटेन कर सकते हैं. और हमने देखा है कि पुटावे करते हुए हमारे पास स्ट्रेटजी वगैरह भी है. राइट, फिर उसमें बहुत कुछ कॉम्बिनेशन है, HU है, विदाउट HU है. राइट, वो हमने पहले ही देखा है कि कैसे डिटर्मिनेशन कर सकते हैं. राइट, तो मैं जस्ट देखता हूँ कि स्ट्रेटजी में हमारे पास है या नहीं. सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्विकली चेक कि हमने स्ट्रेटजी कैसे मेंटेन की है. विद WPT की है तो हमें WPT 1011 के लिए एक मेंटेन करना पड़ेगी एंट्री. और इफ इज इंडिकेटर देन विल चेक कि इंडिकेटर मेंटेन है या नहीं. ओके, स्ट्रेटजी मेंटेन ही नहीं है शायद से, या है, या है. यस, यहाँ पे देखिए विद इंडिकेटर इज मेंटेन. सो ओके, इज लुक फाइन. ओके, मीन्स अभी क्या करना पड़ेगा, जो हमारे मटेरियल है, राइट, उनको हमें अपडेट करने पड़ेगा. राइट, इंडिकेटर के ऊपर. सो /SCWM/MAT1 WPT डिटर्मिनेशन. ओके, हमें WPT चेंज करने हैं. अभी 101 WPT है, सो हमको दोनों को चेंज करना पड़ेगा. राइट, हम एक को ही चेंज करेंगे टू चेक द डिफरेंस. राइट, सो 47 के लिए मैं चेंज करता हूँ. ओके, यहाँ पे सो 01 उसका इंडिकेटर है, मैं ये मेंटेन करता हूँ. सेव. ओके, नाउ विल क्रिएट डिलीवरी VL31N. अभी मैं उन दोनों को अलग अलग बॉक्स में पैक करता हूँ. इसको इसमें पैक करता हूँ. ओके, और इसको इसमें पैक करता हूँ. मैंने दो अलग बॉक्स बनाए हैं बिकॉज HU इज मैंडेटरी इन POSC. ओके, सेव इट. Okay, now go to the ERTI. Now if you check, right, WPT, see AK1011 और AK101. राइट, नाउ इफ यू चेक, अगर मैं टास्क क्रिएट करने जाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1011 के लिए जो हमने हमारे जो स्टोरेज प्रोसेस है वो ट्रिगर हो चुके हैं, और इसके लिए हमने कुछ मेंटेन नहीं किया. राइट, WPT 101 के लिए. तो जैसे ही मैं इसका टास्क क्रिएट करूँगा, यू विल सी
वो जाएगा JR bin में, सी डेस्टिनेशन डोर बिन, राइट। और जो ये वाला जो है इट विल डायरेक्टली मूव टू द फाइनल बिन, सी, राइट, क्लियर? हेलो, इज दिस क्लियर? ओके सर। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको क्रिएट प्लस सेव करता हूँ। सो नॉर्मली हम यहीं से जाके कंफर्म करते हैं, बट वी हैव वन मोर वे कंफर्म, दैट इज /o/scwm/monitor, राइट। मॉनिटर में आकर जाते हो, इनबाउंड डिलीवरी डॉक्यूमेंट, इनबाउंड डिलीवरी अगेन, देन आइटम, फिर चेक, यहाँ पे मैं डिलीवरी नंबर डालता हूँ, राइट। सो there are 2 lines, so I will click over here, right, task, or else you can also go with this one, okay. So अभी मैं क्या करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, right, and then I will click over here and then you can see confirm, right, foreground background, background करता हूँ तो यहीं पे confirm हो जाएगा, foreground करता हूँ तो वो transaction जो है हम confirm के लिए open करते हैं वो open हो जाएगा, right. So I will go with background, जैसे मैं background के लिए confirm करूँगा तो you will see वो task confirm हो जाएगा, right. एंड देन बिकॉज वो टिक है या वहां पे, राइट, वो कॉन्फ़िग में हमने टिक किया था एटो वेयरहाउस टास्क, ओके, कौन सा वाला, इफ यू गो बैक इन द PSC सेटअप, लेट मी जस्ट डिलीट द अदर वन, सो हमारा ये, सो ये जो टिक दिख रहा है आपको, राइट, क्रिएट वेयरहाउस टास्क ऑटोमेटिकली, सो उसके वजह से जैसे ही आप कंफर्म करोगे फर्स्ट टास्क, राइट, विच इज मूविंग फ्रॉम स्टेजिंग, सॉरी, डोर बिन टू स्टेजिंग बिन, राइट, तो सिस्टम फाइनल टास्क क्रिएट कर देगा, विच इज यू कैन सी नाउ सोर्स, बिकॉज मटेरियल यहाँ पे था तो अभी ये डेस्टिनेशन सोर्स हो गया, और देन दिस बिन, तो ये बिन सिस्टम कहाँ से ले रहा है, एनी आइडिया, व्हाई इज गोइंग विथ पैलेट 2010 और समथिंग लाइक दैट? हेलो, so is because of put away strategy, right? हेलो, हाँ सर। पुट अवे स्ट्रेटजी की वजह से सिस्टम वो बिन दे रहा है, ओके, क्लियर, एनी क्वेश्चन? कंफ्यूज हो शुभम, रहा है। सचिन, अब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वो तो कंफ्यूजन तो थोड़ा होगा ही।
Any question? या कुछ क्लियर नहीं तो प्लीज बताइए पीयूसी के बारे में। I'm audible, right? यस सर। So सचिन, सॉरी मैं भूल गया, बट या थैंक ज्वाइन यू किया। आपने ज्वाइन किया। आप मैंने मैसेज But, लेट देख लगा आपकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं आज 8 बजे तक। या बट हम डिले भी नहीं कर सकते, सो और नहीं कोई बट शुभम, what is happening with everyone? Means you are within your group, I mean to say. अथर्व और अभिषेक का पूछ रहे थे सर। Yes. सर कुछ पता नहीं, मुझे मिलते तो है बट नहीं मालूम सर, शायद वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते, शायद ऐसा भी हो सकता है। मैं उनको एक बार कंफर्म पूछ लेता हूँ कि क्या हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है सर। मतलब मुझे भी वैसा ही लग रहा है कि हम बहुत लैग हो गए, बहुत पीछे पीछे पड़ गए शायद, क्योंकि क्योंकि क्या आप हुआ प्रैक्टिस, अगर आप नहीं नहीं प्रैक्टिस सर, नहीं करोगे ना। सर क्या हुआ था, जहां तक हम आए थे ना, तो वहां तक फिर से शुरुआत करनी पड़ रही। ऐसा 2 बार हुआ है मेरे साथ भी। सो इसकी वजह से वहां पे सो नहीं क्या या सो मैं आपको उस टाइम भी बोला, सो टेक इट एज अ पॉजिटिव वे, क्योंकि आप नहीं नहीं, वो जितनी बार प्रैक्टिस के हिसाब से प्रैक्टिस ले रहा है सर करोगे। हम। नहीं नहीं सर, हम या प्रैक्टिस के हिसाब से ले रहे हैं वो। बट ये जो आप हम अभी जो सिलेबस सीख रहे हैं ना, जो आप सिखा रहे हो, वो कहीं पर आगे निकल चुका है और हम पीछे रह गए, ऐसा हो रहा है फिर से। वो हम पॉजिटिव में वे में ले नहीं रहे हैं, अब क्योंकि मैं आपको पीछे भी बोला था सर कि अब तो टी कोड भी याद हो गए सब, नहीं क्या, मोस्टली ऐसे ही निकल जाते हैं कि देखने की जरूरत नहीं अभी कहाँ पर हमने सेटिंग किया था वगैरह वगैरह। तो वो दिक्कत नहीं है सर, पर ये क्या हो रहा है, अभी आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि समझ रहा है। हाँ, थोड़ा समझ रहा है, थोड़ा नहीं समझ रहा है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा समझ में आएगा। यही वे में लेके चल रहे हैं हम तो अभी भी। या ऐसी सो ऐसी मैंने बात। जैसे बताया था, सो यूज दिस सेशन। सो यस ऑब्वियसली यस आपको सर। पूरा एक गो में समझ में नहीं आएगा। ओके, जैसे मैंने पहले भी बताया था, यूज दिस सेशन टू क्लियर योर कंसेप्ट, यस यस सर। राइट। अब इसमें क्या है, अभी ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, राइट, सो इज ऑल हाँ। अबाउट दो एक्टिविटी हम ट्रिगर कर रहे हैं, राइट, अनलोडिंग और पुट अवे। अब तक हम क्या कर रहे थे, गुड रिसिप्ट मतलब पुट अवे कर रहे थे सीधा, यस यस। राइट। जो टास्क बन रहा था वो पुट अवे का ही बन रहा था। बट नाउ हाँ हाँ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि अनलोडिंग का टास्क बनेगा फर्स्ट। मतलब एक टीम है, वो फर्स्ट अनलोडिंग करेगी, जब उनकी हाँ। एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तभी पुट अवे हो पाएगा। यस यस, मतलब रैक में पुट अवे हो रहा है वेयरहाउस अपना। में, यस, नॉर्मली वेयरहाउस में ऐसा ही होता है, राइट। सो फर्स्ट दे विल डू अनलोडिंग, यस यस। राइट। जो कंटेनर या जो कुछ है, ये अपना वो फोटो भी किधर गया, और ये सर्वर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है आज। फॉर एग्जांपल, लेट्स से बाहर से मटेरियल आया, हम यहाँ पे रखेंगे, राइट, अनलोडिंग होगा, फिर हाँ यहाँ से आगे जाएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एज्यूम कर रहे थे वो डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे मटेरियल। हाँ। हम खाली वो टास्क क्रिएट करने वाले हैं, अनलोडिंग वाला, ट्रक से। और फिर जैसे ऑब्वियसली जब ये मटेरियल यहाँ पे आएगा तभी जब आके हम आगे अनलोडिंग, सॉरी, पुट अवे कर सकते हैं, राइट। यस, वहां से रैक में जाएगा, फिर वो पुट अवे होगा। यस, यहाँ से मतलब यही से, क्योंकि ये अनलोडिंग वाला हो गया, मतलब ये स्टेजिंग बीन है, और फिर यहाँ से वो पुट अवे के लिए जाएगा रैक में। सर ऐसा ऐसा सर समझ वही में आता है सर, बट होता क्या है, जब सिस्टम में हम प्रैक्टिस करते हैं ना तभी समझ में आता है ऐसा। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना आपको, ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो जो यस यस, मैं वो तो करना ही सेशन पड़ेगा। रख रहा हूँ अल्टरनेट डे वगैरह, राइट, बीच बीच में मैं, या सम कभी कभी पर्सनल रीजन के वजह से मैं ये रखता हूँ। कभी कभी ऑब्वियसली मैंने वीकेंड में आपको मैं बोला था कि करेंगे, बट मैंने क्यों नहीं रखा क्लास, राइट, क्योंकि आपको टाइम यस प्रैक्टिस भी टाइम मिलना चाहिए, राइट। यस उसके सर। से मैंने यस आपको मैसेज नहीं किया।
तो मुझे एक आधा घंटा सेशन रखने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट? बट वो एक घंटा आपको कवर करने के लिए 3 घंटा लगेगा, हाँ वो है। और ऑलरेडी आपका बहुत चीजें है, राइट? यस सर यस। तर वही हो रहा दैट द आहे. रीजन. बेटा आता मी संडेला बसलो होतो, पूर्ण एंटरप्राइज स्ट्रक्चर परत बनवलं, सप्लायची युनिट बनवलं, केलं शिपिंग पॉइंट, लोडिंग ग्रुप, शिपिंग डिटर्मिनेशन, परत बिझनेस पार्टनर पीपी साठी मी तो रोल वेगळं ग्रुपिंग घेतलं, रोल घेतलं, होतच नव्हतं ते. तुमच्या हा सर, सर्व असा एखादा एरर येतो ना सर, का जिथे आम्ही स्टक होऊन जातो डायरेक्ट, की करायचं काय आता नक्की. अर्धा पाऊण तास खूप चेक केलं, वेगवेगळे ग्रुपिंग घेतले, वेगवेगळे रोल, पण ते बिझनेस पार्टनर क्रिएट झालं नाही. नाही, मग मी एक 3-3.5 सांगितलं होतं ना, एक मैंने वर्क अराउंड, या सो मैंने एक वर्क अराउंड बताया था. सो जस्ट गो विद दी, मैंने दिखाया तभी था कि आपको जस्ट फिर एक जो 117 वाली सीरीज है वो आपको बीपी देखना है, कि जिसमें असाइन नहीं है वो आपको बीपी ले लेना है. तो हमारी बात हुई थी, राइट? गो टू द बीपी, राइट? तो फिर आपने मैसेज आई गेस किया है क्या आपने मुझे कुछ मैसेज? नहीं, इसलिए तो मैं लेक्चर के टाइम पूछता हूँ. नहीं, अभी देखिए, फिर इसमें आपका टाइम गया ना. मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि यस व्हाट्सएप पे तुरंत आप मैसेज कीजिए. अगर ऑब्वियसली में होगा नहीं होगा, राइट, सिस्टम के सामने, राइट, बट लेट्स से अगर छोटा सा कुछ इशू है, तो मैं आपको ऑन द स्पॉट बोल दूंगा ना क्या करना है. अभी इस पे करना क्या था, मैंने ये चीज हमने मतलब पहली भी बार ये की थी, कि अगर आप आपका बीपी नहीं बन रहा है, नो इशू, जस्ट गो हियर, राइट, एनी 17 वाला जो सीरीज है वो चेक करना. लेट मी चेंज माय नेटवर्क, होल्ड ऑन, लेट मी चेंज माय नेटवर्क. मैंने कंपनी कोड प्लान सब अलग ले, आपलं 001 करके कंपनी कोड लिया है, तो उसको ये सब असाइन है क्या, सब बीपी? हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर यस. Yes. Now tell me. So yeah. So मैंने जो बताया था, right? So just you can see my screen, right? यस. यस Okay. सर. So 7 में जाके अभी देखिए, ये तो कस्टमर ही है, तो आप just go to the change mode. हाँ, ये मैंने क्रिएट किया बिजनेस पार्टनर. ओके, वो बोल रहा था Yeah. कि Then go इसके to लिए the FLVN00 या मैंने and सप्लाई, then हाँ यही लिया. general data. So external vendor में भी just check कि क्या allow range है. So A2 है. So A B C D. Just maintain anything. Save this. Right. Then go to the company code. So company code जैसे मैंने बताया था, go to the 0001. ये डाला है, हाँ Yeah. यही लिया है. Then maintain reconciliation account. Right. Anything for us doesn't matter. हाँ Okay. ये Just select OK. Yeah. So यहाँ पे OK करना है. Right. So ये सेव हो गया. वो जैसे एक warning message, pop-up message था. So it's fine. Now we are in change mode. So go to the change mode VL01N. Okay. फिर VL01N में गो टू द जनरल डेटा, और यहाँ पे आपको प्लान मेंटेन करना है. हो गया आपका पीएडी क्रिएट. अब और यही फिर वो लेता हूँ मैं, करता हूँ. मेरा प्लान या डाल ले दीजिए लो. सर. क्या प्लांट है आपका? VR21 डाल दो, आता है. सॉरी, VR21. VR. ओके, 21, हाँ चेक कीजिए. यही है क्या? ZEWM2.
यही रहेगा। मैंने वहाँ पे सेव किया है, अभी मैंने मोबाइल पे ज्वाइन किया है इमरजेंसी ठीक है, आप में। देख लीजिए और फिर हाँ मेंटेन कर देना। यू कैन नोट इट डाउन 1710081। मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है। लेकिन बस यहाँ ओके यही सेटिंग रही थी, इसका कहा असाइनमेंट नहीं रहेगा ना मेरे दूसरे। फिर आप हमारा जो ये है सेटिंग में, वहाँ पर भी होगा ना एक, मैंने डॉक्यूमेंट कुछ भेजा नहीं है क्या आप सबको? कॉन्फ़िग का कुछ भेजा होगा ना, या नहीं भेजा है? नहीं नहीं, हाँ ये हमको पार्टी डिफ्यूजल ले का वो पॉइंट उसमें असाइन यस करना है। यस, वही पे मेंटेन करना है। यस, वो मेरे को याद है, इसलिए तो मैंने बहुत बार कौन सा एरर आ रहा था, मतलब मैं कुछ प्रॉब्लम था इसलिए। आगे का करता हूँ, अब आगे का मुझे आता है पूरा, मतलब मैंने किया था ना पिछली बार भी। ओके। यहाँ पे तो ये मतलब अगर आपने पूछा रहता तो हो गया रहता अब तक। ठीक है, मैं करता हूँ 1710। ओके, टाइमिंग का चेंज का कुछ हो सकता है क्या? 7:30 वगैरह कल से मेरे को, और मैंने सॉरी कौन ऑफिस सा, टाइम कैसा टाइम बोल रहे हैं आप? 7:30 से 8:30। आई नीड टू चेक विथ एवरीवन, बट या कोई ज्वाइन तो नहीं कर रहा है। सो व्हाट अबाउट मेरा ऑल कल से जो भी टाइमिंग यहाँ 12 पे से, है अवेलेबल? ऑफिस का टाइम 12 से 8:30 हुआ है, लेकिन मैं 1 घंटा वहां पे ज्वाइन कर सकता, नहीं तो मैं ट्रैवलिंग में रहूंगा 1 घंटा, 8:30 9:30 लेक्चर सुन संतोष, पाऊंगा। संतोष शुभम, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। फिजिबल? संतोष फॉर यू इज फिजिबल? ओके सर, नो इशू। ओके, लेट मी एक मैसेज ड्रॉप करता हूँ टीम ग्रुप में, देन विल सी। ओके चलिए। ओके सर। बट वही है कि आप जैसे मैंने बताया था, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज वेरी इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज आप सोचिए ना कि आप अभी लैग कर रहे हो, सो वंस वी कंप्लीट तो आई डोंट थिंक सो कि कोई करेगा तब, राइट? ओके सर। यस सर, वो बहुत डिफिकल्ट जाएगा। तो उल्टा अभी आपके पास टाइम है, यू कैन चेक विथ मी कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह है, राइट, कुछ डाउट है, वी कैन डिस्कस। दैट इज मैं आपको पूछ रहा हूँ, राइट? सो मैंने आपको बताया तभी, मैंने आपको बताया था स्ट्रेटजी करके आना, राइट? वीकेंड में मैंने स्पेसिफिक बताया था आपको। अगर स्ट्रेटजी समझ में नहीं आएगा तो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। Okay. So again, so in this we are checking two step, unload and put away, right? So there are two team working. So storage process where we create the sequence, okay, first unload या put away. Then there is something called external step we have to create is and is must be assigned to the internal process. So just this is nothing but your storage type and then storage type role जो हम assign करते हैं, right? Normally if you remember storage type role, राइट, जो हम असाइन करते हैं। हम कितने भी स्टोरेज स्टेप क्रिएट कर सकते हैं, बट वो रोल एक ही रहेगा, राइट, सबका, फॉर एग्जांपल। देन कंट्रोल पैरामीटर, तो हमें हर एक स्टेप को सोर्स और डेस्टिनेशन बिन मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, सो फॉर अनलोडिंग, जब हम अनलोडिंग करेंगे, सो डोर बिन विल बी माई सोर्स बिन और डेस्टिनेशन होगा स्टेजिंग बिन, जीआर स्टेजिंग। ओके, इज फॉर अनलोडिंग। एंड देन फॉर पुट अवे, जब हम जीआर करेंगे, राइट, पुट अवे अभी जीआर से फाइनल बिन तक होगा, राइट? तो यही हमने कॉन्फ़िग में क्रिएट किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टेप क्रिएट किए दो, अनलोडिंग। सो इफ यू चेक, ओके, दो स्टेप क्रिएट किए, अनलोडिंग एंड देन उनके एक्सटर्नल स्टेप। अगेन जो मैंने बताया था स्टोरेज टाइप और उसके रोल, सो इज लाइक एक्सटर्नल स्टेप और उसका रोल क्या है, राइट? फिर मैंने उसको असाइन किया या सीक्वेंस दिया इन स्टोरेज प्रोसेस।
first unloading and put away, and then obviously we want that once we complete unloading, system should create task automatically for put away. Okay, तो ये हमने यहाँ पे मेंटेन किया है, राइट. फिर जो हमने एक स्टोरेज टाइप क्रिएट किया बिकॉज इज डोर एंड दिस थिंग, राइट. तो फिर हमने वो डोर जो है, हमने जो क्रिएट किया हुआ जो डोर है वो हमने मेंटेन किया है 011 WPT में, राइट. यहाँ पे सोर्स बिन, क्योंकि फर्स्ट बिन दैट इज नथिंग बट योर सोर्स बिन. जो फर्स्ट बिन होगा कौन सी भी एक्टिविटी या कौन सी भी स्टेप का, वो हमें WPT में मेंटेन करना पड़ेगा, राइट. फिर उसका डेस्टिनेशन, मतलब जो PUSC में है हम यहाँ पे ओनली डेस्टिनेशन बिन ही मेंटेन करते हैं. यहाँ पे यू कैन सी देयर इज नो एनी सोर्स ऑप्शन, राइट. ये डिटर्मिनेशन के लिए है. ओके, सो सॉरी, या इन आउटबाउंड हम मेंटेन करते हैं, राइट. तो 7500. सो नाउ सी अनलोडिंग का ये अगर ये WPT है तो ये यहाँ पे जाना चाहिए. नाउ व्हाई वी आर नॉट मेंटेन फॉर फाइनल स्टेप विच इज पुट अवे, बिकॉज पुट अवे यहाँ पे आप देख सकते हैं हम एक ही बिन मेंटेन कर सकते हैं, राइट. बट पुट अवे में वी हैव चेक, वी हैव अ स्ट्रेटजी, राइट. पुट अवे स्ट्रेटजी एंड अकॉर्डिंग टू इट इट शुड वर्क, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी haven't मेंटेन एनीथिंग ओवर हियर, बिकॉज वो विद द हेल्प ऑफ बिन ट्रिगर होगा, राइट. नाउ और देन मैंने WPT का डिटर्मिनेशन भी मेंटेन करके रखा है ऑलरेडी वो फॉर दैट मटेरियल. सो POSC1 और HU मैंडेटरी है, देन ओनली POSC चलेगा. अगर आप पैक नहीं करोगे देन सिस्टम विल नॉट ट्रिगर POSC. ओके, ये आप देख सकते हो, ये छोटी सी असाइनमेंट है. ओके, तो मैं इसको फिर से पैक करता हूँ, राइट. अभी सिस्टम अभी अच्छा चल रहा है, ये इसमें पैक हो गया. सेव इट. ओके, नाउ गो टू हियर. ओके, नाउ अगेन आई विल क्रिएट टास्क. अभी मैं डायरेक्टली टास्क जाके क्रिएट कर देता हूँ और देन हम मॉनिटर में जाके देखेंगे. ओके, सो मैं इसको कॉपी करता हूँ और सी यहाँ पे ओनली 101 हमने सीक्वेंस मेंटेन किया है, राइट. स्टोरेज प्रोसेस हमने मेंटेन किया है तो उसके लिए आ रहा है और इसके लिए ब्लैंक है. ओके, सो आई विल डायरेक्टली क्रिएट प्लस सेव. ओके, और मैं इसको ट्रिगर करके गो टू द मॉनिटर. तो यहाँ पे वेयरहाउस टास्क भी है, हम डायरेक्टली टास्क भी देख सकते हैं, राइट. और जैसे ही अभी देखिए ये जो फर्स्ट वाला जो है सेकंड वाला वो डायरेक्टली स्टेजिंग टू पुट अवे हो रहा है, राइट. जैसे मैं इसको कंफर्म करूंगा सो ऑब्वियसली वो तो टास्क कंफर्म हो जाएगा, राइट. इसका मतलब वो फाइनल बिन में गया. बट जो फर्स्ट वाला लाइन है जहाँ पे डोर टू स्टेजिंग जा रहा है, इसको मैं जैसे ही कंफर्म करता हूँ, ओके, और रिफ्रेश करता हूँ स्क्रीन, तो फाइनल टास्क क्रिएट हो गया विच से JR टू पुट अवे, राइट. ना डायरेक्टली, और यू कैन ऑल्सो सी स्टेप. तो पहले अनलोडिंग वाला स्टेप ट्रिगर हुआ एंड देन पुट अवे वाला, राइट. तो इसको मैं कंफर्म करता हूँ, राइट. और अभी मैं जाके डिलीवरी अगर मैं देखता हूँ, सी अनलोडिंग भी कंप्लीट हो गया, राइट. जो पहले हमारा नॉट स्टार्टेड में रहता था नॉर्मली, राइट. बट अभी हमने अनलोडिंग भी कंप्लीट कर दिया है टास्क की मदद से. क्लियर. क्लियर है अभी. ओके. एनी क्वेश्चन. Yes, no.
क्योंकि ये सिंपलेस्ट वर्जन है। ओके, इसके आगे जो हम देखेंगे वो विल सी लाइक एक्चुअल पीयूएससी। ओके, ये तो एक सिंपल वर्जन था क्योंकि उसका जो कॉन्फ़िग है उसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये चीज़ देखा है, राइट। सो मतलब उसमें कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही है, ओनली एक चीज़ ऐड होगी, दैट इज द टेबल। ओके, मतलब वर्क सेंटर, एक नया हमें स्टोरेज टाइप क्रिएट करना पड़ेगा और उसकी एक एक्स्ट्रा सेटिंग है, राइट। एक्चुअली पीएससी प्रोसेस ओरिएंटेड स्टोरेज कंट्रोल क्या है, तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, राइट। सो जैसे हम घर में कुछ सामान लेके आते हैं, राइट, तो उस सामान को हम क्या करते हैं, सैग्रीगेट करते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर, राइट। वाई? बिकॉज वो सामान अलग अलग एरिया में हमें रखना है। सेम वे वेयर हाउस में भी कभी कभी हमें पैलेट आता है, राइट, और वो पैलेट हमें अलग अलग बीन में रखना है, राइट। तो हमें वो जो जो पैलेट है हमें उसको ओपन करके मे बी अलग बॉक्स में रखना पड़ेगा, राइट। तो वेयरहाउस में ऐसे टेबल होते हैं, राइट, और यू कैन सी या दिस वन इज अ वेरी गुड पिक्चर, राइट। तो वहाँ पे फिर बॉक्स भी होते हैं, तो इफ दे रिक्वायर दे विल पैक अनपैक, राइट, उसको चेंज कर किया जाएगा, राइट। सो ये जो है सेटअप को बोला जाता है वर्क सेंटर, ओके, और पैकेजिंग स्टेशन। तो ये हमें सिस्टम में क्रिएट करना है। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक मॉनिटर है, मतलब इस वर्क सेंटर के ऊपर भी कुछ हम ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे हम अभी हमने देखा, राइट, बॉक्स पैक अनपैक हम कर रहे हैं, राइट, मतलब बॉक्स का नंबर चेंज होगा, तो वो भी हमें सिस्टम में बताना पड़ेगा, राइट। तो वो हम एक्टिविटी ट्रेस करेंगे विद पीयूएससी। ओके, ओके, क्लियर? तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हम मेंटेन करते हैं ना पीयूसी में, कौन से जितना प्रोसेस परफॉर्म किया है उसे हमें यस, नॉट ओनली सीक्वेंस, उसमें कुछ फिर एग्जीक्यूशन पार्ट भी आ सकता है। ठीक। ओके, एनी क्वेश्चन? ये हम कल करेंगे, सो आई नो आपके पास ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में आप पूरा कवर करोगे, बट ये आई वांट टू चेक एटलीस्ट जो भी आप कर रहे हो दैट थिंग। ओके, ठीक है। प्लीज, बट टाइम इज रनिंग। ओके, क्योंकि क्या हमको कवर करना है तो करेंगे, श्योर करेंगे। यस यस यस। सो जस्ट थिंक, सो मैं एक जो मैं हर टाइम ये चीज़ बोलता हूँ, ओके। सो थोड़ा सा आप उस वे में भी सोचिए। जस्ट आप मतलब आपने आपसे ये बोलिए कि जो भी अभी मंथ होने वाले 3-4 मंथ, ओके, तो वो आपकी जिंदगी के सबसे बुरे मंथ होने चाहिए इन द टर्म्स ऑफ स्टडी। ओके, आप ये 3-4 महीने में जितनी आप मेहनत करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, राइट, उतनी इजी लाइफस्टाइल आपको आने वाले टाइम में मिलेगी। ओके, ठीक। सो देखिए, दो चीज़ें, मार्केट अगर आपने देखा होगा, राइट, अभी बहुत गिर रहा है, बट एट द सेम टाइम एसएपी का जो ईडब्ल्यूएम के स्पेसिफिक मार्केट है, राइट, इज गुड, ओके। राइट। और वो ओके। अभी और अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, क्यों? 2-3 फैक्टर है। सबसे इम्पोर्टेंट तो अभी अप्रेजल साइकिल है, राइट, जैन में और मार्च अप्रैल, राइट। तो उसमें बहुत सारे रिसोर्स जॉब छोड़ देंगे, फिर कंपनी भी सोची कि अरे लेट्स गो फॉर सम जूनियर कंसल्टेंट, लाइक 2-3 ईयर एक्सपीरियंस, राइट। तो आपको अपॉर्चुनिटी है, बट अब जब मैं देख रहा हूँ लिंक्डइन के ऊपर, नौकरी के ऊपर, राइट, सो वो थोड़ा स्टार्ट हुआ है फिर से अप होने के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी है।
अभी आपको जो भी 6-7 मतलब जून जुलाई के टाइम बचा है, राइट, उसके अंदर आपको बहुत आसानी से जॉब मिल सकता है, जब तक कुछ नहीं पूछने वाले हैं। ओके। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज डेडलाइन जो है, राइट, 26 वाली, मतलब ये साल, सो ऑब्वियसली जो भी प्रोजेक्ट आएंगे ये अभी विद इन 6 या 2-3 मंथ्स ही आएंगे, राइट। उसके बाद तो ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे जो बहुत चैलेंजिंग होंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम होगा, सो वो तो ऐसे देखेंगे हायर जो रिसोर्स है, राइट। तो ये टाइम उल्टा आपको आसानी होगी कि जॉब लगने के लिए, सो यूज दिस टाइम। आई नो वी आर लैगिंग बिहाइंड, बट मे बी अभी विल ट्राई टू गो फॉर एवरी डे टू जस्ट कंप्लीट, बट या अभी एक ये टॉपिक है, मतलब ये तो हो चुका है, वो वर्क सेंटर वाला देखना है और एक वैस वाला देखना है। जैसे ये दोनों हो जाएंगे, we will say कि okay we done with the 50%, ओके। right। फिर उसके आगे यस, ऐसा नहीं कि आसान है, बट आई नीड योर हेल्प, कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसा ही रहेगा कि आपको मतलब आंसर नहीं कर पा रहे हो, और हम आगे बढ़ रहे। सर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कवर करने का ट्राई करते हैं। यस, प्लीज, इज योर टाइम। ओके, और मैं कल मतलब 7 बजे का चेक करता हूँ, एक्चुअली मेरे भी कॉल रहते, सो या लेट मी चेक समथिंग एंड देन आई विल अपडेट। चलेगा। ओके 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 ओके, लेट मी चेक फ्यू थिंग्स। मॉर्निंग पॉसिबल है क्या सर? नहीं तो नहीं, मॉर्निंग आई डोंट थिंक सो बाकी लोगों को पॉसिबल होगा, किसी को भी। ठीक है, फिर शाम। राइट एवरीवन, क्या क्या संतोष, शुभम, मॉर्निंग नहीं होगा। ओके ओके ओके, देन विल स्टॉप टुमारो, मैं बताता हूँ। ठीक है सर। ओके ओके सर, ओके देन, बाय सर। थैंक यू, बाय। ओके सर, बाय, गुड नाइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No one's able to see it. हेलो। Yeah, can you see my screen? हाँ सर। Okay, so in last session we have discussed about the packaging, sorry, the PSC setup, right? Basically where we move the material, like we create a task, right, unloading and then put away task, right? So today we'll continue with the same. Okay, only thing is that today we'll see the actual, you can say the POSC. Now what is POSC basically? So in our home, right, we हम कभी कभी कुछ पैक करके लेके आते हैं मटेरियल, राइट, और फिर उसको डाइनिंग टेबल में हम सेग्रीगेट करते हैं, राइट। तो सेम वे वी रिसीव द मटेरियल, ओके, एंड बिकॉज वो बड़ा बॉक्स है, राइट, और उसको वो अलग अलग बीन में जाना चाहिए, राइट। तो हमें उसको ओपन करना पड़ेगा, राइट। हियर यू कैन सी दिस एग्जांपल। सो अनलोडिंग जो हमने कल देखा था, अनलोडिंग वाली एक्टिविटी, देन जीआर,
then it will move to one area. Reconciliation area is also called the packaging area और वर्क सेंटर. ये जो एरिया को बोला जाता है वर्क सेंटर बोला जाता है. फिर यहाँ पे उस बॉक्स को फोड़ा जाएगा, मतलब उस पैलेट को ओपन किया जाएगा एंड देन इट विल गो टू दी बिकॉज वो ओपन है तो अलग अलग बिन में हम रख सकते हैं, राइट. एंड देन द पैकेजिंग स्टेशन is also look like this. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन भी है. मतलब ऑब्वियसली जब हम बॉक्स चेंज करेंगे, राइट, सो ऑब्वियसली लाइक वी नीड टू ट्रेस दिस कि यस हमने बॉक्स चेंज किया है, राइट. सो ये हमें ये करना पड़ेगा, मतलब एक्टिविटी हमें ये ट्रेस करनी है EWM में. ओके, तो जो हमने लास्ट टाइम देखा था वही, मतलब उसी कॉन्फ़िगरेशंस के साथ है, ओनली कुछ चीजें एडिशन होगी. लाइक इफ यू गो टू दी extended warehouse management, okay, then cross process setting, okay, warehouse task, process oriented storage control. तो अभी हमें वो एक्टिविटी ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे, एक्सटर्नल स्टेप. तो व्हाट इज आवर तारीख 16. ठीक आहे नाही सकाळ सकाळ नुसतं ठीक आहे मी परत येतो म्हणलं की असं काय करू माझी ती तयारी करतेस. Okay, so 75 DC, okay, 7500 DC. Oh, sorry. Okay, and then the internal process step. So for this kind of step, we have to use SPR deconsolidation. Okay, press enter. Right. और एक चीज जो मैं लास्ट टाइम आपको बताना भूल गया, that is now if you check, right. So PT unload and sorry DC PT and unload, right. So ये जो डायरेक्शन है, so जैसे आप ये इंटरनल प्रोसेस डालोगे ये डायरेक्शन भी डिफाइन हो जाएगी. We don't need to define it manually. Right, here you can see जैसे मैंने SPR डाला तो वो put away और internal, मतलब for this means for the both process we can use SPR. Then put away is again internal movement भी, और put away हम कर सकते हैं, right, put away करते वक्त. Then unloading if you check is only used while doing put away, right. Unloading तो हम outbound के वक्त नहीं कर सकते, right. Outbound के वक्त क्या होगा, लोडिंग, राइट. अब ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो मुझे अभी इसको अगेन सीक्वेंस में डालना पड़ेगा जो हमने लास्ट टाइम किया था. ओके, आई विल ऐड इट. ओके, सो अभी पुट अवे जो हमारा फाइनल टास्क होगा, राइट. तो इसको मैं निकाल के यहाँ पे डीसी करूंगा, मतलब पहले मैं अनलोडिंग करूंगा. ओके, वो हमने सेव नहीं किया है, सो लेट मी सेव इट फर्स्ट. ओके, नाउ गो टू दी स्टोरेज प्रोसेस. नाउ सो पीटी में निकाल रहा हूँ एंड आई विल से डीसी. ओके, एंड देन एडिशन वो पीटी के लिए लास्ट टास्क पीटी. Okay, then again once we complete DC we want that automatic task should be created for PT, so that's why PT मतलब ये टिक करूँगा तो PT के लिए होगा. Now so मैं क्या करता हूँ, right now we'll tick over here, later we'll discuss why we have tick this one. Okay, I will tick production product plus HU warehouse task, later we'll discuss and I will save it. Okay, मतलब पहले अनलोड होगा, अनलोडिंग के बाद वो वर्क सेंटर पे जाएगा और वर्क सेंटर के बाद वो जाएगा पुट अवे. ओके, ना जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक स्क्रीन है, मतलब ऑपरेटर विल चेंज बॉक्स, वो सब एक्टिविटी ट्रेस करेगा, राइट. तो जो वर्क सेंटर होगा उसके लिए हमें एक स्टोरेज टाइप बनाना पड़ेगा या उसका भी एक कंट्रोलिंग सेटिंग है, राइट. तो वो क्या है, सो इफ यू गो टू द मास्टर डेटा, ओके, डिफाइन स्टोरेज प्रोसेस. ओके, सो न्यू एंट्री, सो 7500 75 DC. ओके, icons.
ओके जो इसका जो रोल होगा स्टोरेज टाइप रोल आई विल गो विथ ई वर्क सेंटर सी राइट एंड देन आवर नॉर्मल टिक सो इट इज नॉट माय कंप्लीट पुट अवे राइट तो मैं इसको 4 ही करता हूँ which is general storage right and then stock removal. Now when you create work center right so it's give me the error that capacity check not supported. So जो capacity check जो है यहाँ पे we need to maintain as 4 no key figure. Now why it is mandatory right why key figure no check means system कुछ weight वगैरह check नहीं करेगा. हमने strategy में देखा था right normally system weight material का weight check करता है right according to that is system to the put away right. बट अभी ये 4 क्यों रखना है मतलब क्यों नहीं चेक करना है बिकॉज इफ यू चेक नॉर्मली जो टेबल होगा वो ऐसा होगा राइट और इसके पास कंटिन्यूस मटेरियल ऐसे आते रहेंगे राइट व्हिच वी विल कीप ओवर हियर राइट तो ऑब्वियसली देयर शुड नॉट बी अ वेट क्राइटेरिया क्योंकि वो कंटिन्यूसली आते जाएगा जैसे जैसे वो मटेरियल जैसे जैसे लेट्स से यहाँ पे कोई ऑपरेटर है उसका एक बॉक्स ये वाला कंप्लीट होगा फिर ये वाला लेगा ये होने के बाद वो ये वाला लेगा राइट सो वो कंटिन्यूसली आता रहेगा right that's why system should not check the capacity right कि वो continuously आते जाएगा that the reason capacity check is required save it now we go back okay in master data only if you check in work center okay so यहाँ पे आप देख सकोगे define work center एक है right we go here new entry 7500 and then I will go with the same name or like just to avoid confusion we'll go with work center 10 okay and here we'll give the name 7500 decons okay okay then external step हमने ये किसके लिए create किया है 75 DC right okay and then storage type अगर मैं storage type देखूं यहाँ पे मुझे एक ही storage type दिख रहा है why because see the role E okay sorry यहाँ पे okay मतलब हम खाली यहाँ पे जो storage type के लिए E assign है right वही हम यहाँ पे assign कर सकते हैं नॉर्मल स्टोरेज टाइप हम असाइन नहीं कर सकते ओके सो ये वर्क सेंटर में इसके लिए बना रहा हूँ राइट देन इनबाउंड एंड आउटबाउंड सेक्शन मतलब जो नॉर्मल हम सेक्शन क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं व्हाट इज इनबाउंड एंड आउटबाउंड सेक्शन सो बेसिकली अभी सपोज ये जो एरिया है ये इनबाउंड सेक्शन है मतलब यहाँ पे मटेरियल जब आएंगे हम यहाँ पे रखेंगे बट जब उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी हम यहाँ पे रख देंगे तो ये हो गया आउटबाउंड सेक्शन सो वी कैन मेंटेन लाइक दिस इनबाउंड एंड आउटबाउंड सेक्शन ओके रिपैक सो इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था कि अगर हमें कुछ भी करना है तो WPT इज रिक्वायर्ड तो जब हम रिपैक करेंगे राइट 1 HU ना दे HU सो वी रिक्वायर WPT तो उस केस में एक ऑलरेडी स्टैंडर्ड WPT है 304 द दैट विल यूज ओके लेआउट मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए ये वाला रखता हूँ DKMX वाला ओके एंड देन सेव इट ओके नाउ विल क्रिएट वन बीन बिकॉज बेसिकली जब वो वेयरहाउस ऑपरेटर जब यूज करेगा वो एक्चुअली बीन में ही लॉग इन करेगा राइट वो बीन के ऊपर ही ऑपरेशन करेगा राइट DC now work center 10 oh sorry 7500 right 75 DC save it clear and then I will go to the SCWM menu okay if you go to the master data right sorry not master data if you go to the like assignment oh sorry yes in master data only it should be work center okay so अभी जो हमने बीन क्रिएट किया है और वर्क सेंटर अलग अलग है राइट हमें उसको मेंशन करना पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन में ओके इट्स ऑलरेडी लॉग बाय मी सो एक ही टी कोड है
So I will just go back. Now if you go, अभी हमें यहाँ पे मेंटेन क्या करना है, ये ट्रांजैक्शन में /SCWM TWOR KST में डिफाइन मास्टर डेटा एट्रीब्यूट में हमने जो वर्क सेंटर क्रिएट किया है, राइट, ये कौन से बीन के लिए है, तो हमने बीन कौन सा क्रिएट किया, WC10, राइट, क्लियर। अभी इससे होगा क्या, आई विल शो यू दिस वन ऑल्सो, सेव इट, go back. Okay, now if you go to the close this, also this, okay, if you go to the execution, okay, ये ट्रांजैक्शन है, सो ये ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अगर आप प्लानिंग कर रहे हो सर्टिफिकेशन के लिए तो इसमें भी पूछा जाएगा, व्हाट इज टी कोड, राइट, रिकंसोलिडेशन इन गुड रिसिप्ट, तो याद रखना DCONS यही है। ओके, डबल क्लिक, अभी मैं WC10 सिलेक्ट कर एंटर करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी वो बिकॉज ऑफ दैट असाइनमेंट ये ओपन हो जाएगा, अगर वहाँ पे मल्टीपल बीन है, मैंने बीन असाइन नहीं किया है, राइट, तो मुझे बीन नंबर भी डालना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, नाउ अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, सो सी ये जो स्क्रीन है, राइट, यहाँ पे जो ऑप्शन है डिफरेंस चेंज, राइट, ये क्यों आ रहे हैं, इज बिकॉज ऑफ दैट लेआउट DKMX जो हमने मेंटेन किया है। अगर मैं फिर से कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ और नाउ आई विल गो टू दिस लेआउट ऑप्शन, okay, and then here 7500, if I search DKMX, okay, ये उसका लेआउट है। अगर मैं लेट्स से इसको अनटिक करता हूँ, डिस्प्ले स्कैनर एरिया को डीएक्टिवेट करता हूँ और सेव करता हूँ, तो इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे क्या होगा, राइट। सो इम्पैक्ट वाइज इफ यू गो बैक एंड चेक, ओके, दिस सेव, oh sorry, this different warehouse, so yeah, मैं इसको 7500 सेव, सी नो स्कैनर एरिया, राइट, वो ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज वो ऑप्शन के मेंशन मेंटेन किया जाता है विद द डिस्प्ले, ये DKMX जो लेआउट है, राइट, सेव इट। हम यहाँ पे रिपैक HU, रिपैक प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ओके, MTHU, राइट, अगर मैं सेव करता हूँ, ओके, एंड नाउ अगेन यहाँ पे देखिए अभी कुछ ऑप्शन नहीं है, राइट, HU का, राइट, ओनली कंप्लीट प्रोसेस स्टेप, देन प्रिंट, डिलीट। इफ आई गो बैक, सी नाउ MTHU आ गया, राइट, एंड रिपैक प्रोडक्ट, रिपैक HU भी आ गया। क्लियर, इट इज क्लियर, एनी क्वेश्चन, यहाँ तक कुछ सवाल? नहीं सर। ओके, ना हमने कल मेंटेन किया था या डिस्कस भी किया था कि जो हमारा जो बीन होगा, राइट, उसका जो कंट्रोलिंग पैरामीटर है दैट इज ये अपना सोर्स, राइट, सोर्स बीन एंड डेस्टिनेशन, राइट, तो इसके लिए भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। सो अगेन विल गो टू द प्रोसेस स्टेप, प्रोसेस ओरिएंटेड स्टोरेज कंट्रोल, ओके, देन यहाँ पे अगेन प्रोसेस ओरिएंटेड स्टोरेज कंट्रोल, न्यू एंट्री, सो 7500, सो इज फॉर 75 DC स्टेप, कौन से स्टेप के लिए, और अभी WPT जब हम मूवमेंट करेंगे इंटरनल मूवमेंट, सो इट विल बी योर HU मूवमेंट, सो दैट टाइम वी हैव टू यूज 3060 WPT। ओके, और ये कहाँ पे जाना चाहिए, जो हमने वर्क सेंटर नया क्रिएट किया है, विच इज DC10, DC75 DC और उसका बीन WC10। क्लियर, सेव इट, यही इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, क्लियर, एनी क्वेश्चन? कंफ्यूज हो रहा है सर। क्या कंफ्यूज हो रहा है? एक्चुअली क्या है सर, हम लोग क्या है उसको करने के लिए बड़ा ना सर, उसमें सॉरी, डिफरेंट आपका मटेरियल आवाज जो आता थोड़ा है। सा बैक इको हो रहा है थोड़ा सा। हेलो,
हाँ वही जो भी मटेरियल आता है, डिफरेंट मटेरियल आता है एक बॉक्स में, उसको हम लोग डिफरेंट बिन में डालने के लिए वो प्रोसीजर है हमारे पास। यस यस, सो उसके लिए आप सिंपल एक ऐसा ले सकते हो, जब हम घर में डीमार्ट से सामान लाते हैं राइट, डीमार्ट रिलायंस से, तो हम डायरेक्टली तो उसको नहीं रखते, जहाँ पर भी हमें उसको पहले सेगरीगेशन ओपन करके। करना पड़ता है राइट। राइट। जो हम ओपन करेंगे राइट, दिस इज दैट इज नथिंग बट दिस वन, क्लियर। ओके। एनी क्वेश्चन? Place where is the material you are going to open, that is work center, correct ना? yes yes, so where we open the material, that is called work center. ओके, और उसका कॉन्फ़िग हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं मटेरियल, आफ्टर अनलोडिंग वी डायरेक्टली मूव टू द पुट अवे राइट, but now we'll Now move we are after kept in unloading, work it will move to, yeah, it will move to the work center. center. This is the only difference, clear. Any question? No sir, okay sir. यहाँ तक कुछ मतलब कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ? नहीं नहीं सर, ठीक है। Sachin, I know you are driving, but yeah, कुछ क्वेश्चन है? देख लूंगा। ओके ओके, तो डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है उनको म्यूट करने का आवाज। yeah, Santosh, can you please mute yourself because there are some. Okay okay, so now yeah, so now the process. Okay, so we'll create one delivery. Okay, so we'll pack the material. Okay, then put receipt. Okay, then warehouse task. Okay, we'll create, and again you can see our process step, right? So we'll again create task, right?
and then again from monitor we can create EWM slash, from monitor we can confirm. Okay, inbound document on delivery warehouse task. Now एक चीज हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करके लेना है, राइट? ये मूवमेंट हो रही है जो रेड में है ना, ये मूवमेंट हम कर रहे हैं, राइट? सो फर्स्ट मूवमेंट हमने किया अनलोडिंग, राइट, फ्रॉम ट्रक टू जी स्टेजिंग एरिया, राइट? वो हम अभी कंफर्म कर रहे हैं। ओके, ये जो सेकंड वाला है उसको तो छोड़ दीजिए, वो डायरेक्ट बीन में जा रहा है, सो आई विल डायरेक्टली कंफर्म। ओके, इन बैकग्राउंड तो वो तो डायरेक्ट कंफर्म हो गया। नाउ द फर्स्ट वन जो हमारा एक्चुअल पीएससी, हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम डोर टू स्टेजिंग, मतलब अनलोडिंग कर रहे हैं, सो आई विल कंफर्म द टास्क। ओके, टास्क कंफर्म हो गया। ना जैसे मैं कंफर्म कर रहा हूँ तो वहां पे दो टास्क बन गए एक्स्ट्रा, राइट? ये पहले तो वाला, ये तो जो है ये तो फर्स्ट वन वाला है, जस्ट इग्नोर इट, राइट? दो टास्क बने हैं। अभी बाय प्रोसेस क्या होना चाहिए? स्टेजिंग टू वर्क सेंटर, ये मूवमेंट होना चाहिए, राइट? स्टेजिंग टू वर्क सेंटर। बट एसीपी ने क्या किया है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे दो टास्क बना है, एक है स्टेजिंग टू फाइनल बिन और एक है स्टेजिंग टू वर्क सेंटर। क्लियर? क्या तक समझ में आ गया? क्रिएट करना किया है खाली। ओके, नाउ क्यों क्रिएट किया है? बिकॉज वो जो हमने टिक किया था यहाँ पे 75 जाके, यहाँ पे आप देखिए प्रोडक्ट और एचयू वेयरहाउस टास्क, मतलब जो फाइनल टास्क है वो भी सिस्टम ने क्रिएट कर दिया है। ये जो फाइनल टास्क जो है, ये जो वाला सेकंड थर्ड वाला जो है, ये फाइनल टास्क है, राइट? अभी जो मूवमेंट होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए डीसी तक। इफ यू चेक द स्टेप यूएन डीसी पीटी, ये हमारा सीक्वेंस है, राइट? तो ये सिस्टम क्या करता है, खाली क्रिएट करके रख देता है। बट लेट्स से कोई यूजर बोलता है नहीं मुझे ये कंफर्म करना है, आई डोंट वांट टू डू डिकॉन्स, आई डोंट वांट टू वर्क सेंटर की एक्टिविटी नहीं करनी है। इफ दैट पर्सन ट्राइंग टू डू द टास्क कंफर्मेशन, सी विल नॉट अलाउ, वो क्या बोलता है, इनएक्टिव है। अब कैसे समझ में आएगा? हियर यू कैन सी बी, जो स्टेटस है यहाँ पे अलग अलग स्टेटस है, राइट? एक है ओपन, ओपन मतलब हम जिसको कंफर्म कर सकते हैं, ए मतलब कैंसिल हो गए, ओके, बी मतलब वेटिंग एंड सी मींस कंफर्म, राइट? तो ये वेटिंग वेयरहाउस टास्क है। वेटिंग मतलब अभी उसको पता है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी बाकी है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी तब तक मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, राइट? मतलब ये वाला टास्क है विच इज मूवमेंट ऑफ स्टेजिंग एरिया टू वर्क सेंटर, राइट? हम ऐसे बोल सकते हैं जो हम सामान लाते हैं घर में, राइट, तो हम डोर से उसको डाइनिंग टेबल तक लेके जाते हैं, राइट, वो एक्टिविटी, तो मैं उसको कंफर्म कर देता हूँ। ओ सॉरी, फोरग्राउंड हो गया, सो नो प्रॉब्लम, फोरग्राउंड मतलब यहाँ पे आ जाएगा एंड यू कैन जस्ट सिंपली कंफर्म प्लस सेव। ओके, अभी तो कंफर्म हो गया, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिर भी वेटिंग में ही है। अगर फिर से मैं उसको कंफर्म करने जाऊँ तो फिर से एरर आ जाएगा। अभी मटेरियल कहाँ पे है? ये एरिया में है, डाइनिंग टेबल के ऊपर या पैकेजिंग सेंटर के ऊपर, राइट? फिर ये सिस्टम कंफर्म क्यों नहीं करने दे रही है? क्योंकि सिस्टम को ये नहीं पता कि जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, राइट, अनलो जो अनबॉक्सिंग की एक्टिविटी आप करने वाले हो वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई है। सिस्टम को कैसे पता ना कि आपको ये इसमें पैक करना है, 2 पीसेस में पैक करना है, 3 पीसेस में पैक करना है, राइट? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू गो टू द वर्क सेंटर, जो डिकॉन्स वाला टी कोड है। ओके, डिकॉन्स में जाना है, यहाँ पे आप रिक्वेस्ट नंबर मतलब डिलीवरी नंबर डाल सकते हो, अदरवाइज हमारे पास एक ही है तो हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे भी, सो विल गेट दैट ऑर्डर नंबर सी, राइट? तो यहाँ पे इफ रिक्वायर्ड आई कैन क्रिएट न्यू एचयू, राइट? सो यू कैन गो टू द डिकंसोलेशन, राइट? यहाँ पे सोर्स एचयू, तो ये मेरा सोर्स एचयू है फॉर एग्जांपल। ओके, उसका नंबर हमें स्कैन करना है। ओके, okay, why it is not working? Yeah, now quantity will go with 12 piece, right? Destination HU,
हमारे पास HU नहीं है यहाँ पे, सो व्हाट आई विल डू, आई विल एंटर द पैकेजिंग मटेरियल। सो मैं यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल सर्च करता हूँ 500। ओके, सो लेट्स से मैं इसको पैलेट में डालता हूँ, राइट। पहले ये बॉक्स में है। लेट्स इमेजिन, आई नो इज रॉन्ग बट लेट्स इमेजिन। नाउ वी नीड टू क्लिक टू द वेयरहाउस टास्क, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग हो गए। सो वी हैव टू सिलेक्ट कि कौन सा मटेरियल मूव करना है। सो ये मटेरियल, राइट, सिलेक्ट। सो 12 पीसेस, सो वी कैन चेंज टू 6 एंड देन क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। अभी देखिए क्या हुआ, 6 मूव हुआ, राइट। और एक HU बन गया और उसी में वो जाके पैक हो गया। अभी मैं सेव करता हूँ इसको, राइट। ये मैंने पैक अनपैक कर दिया। मैं फिर से मॉनिटर में जाके चेक करता हूँ। अभी देखिए कितने टास्क है टोटल, 4। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए और 2 टास्क बन गए सर। ओके, ये हो गया फर्स्ट वाला, वर्क सेंटर टू वर्क सेंटर जो हमने रिपैकिंग किया, राइट। इफ यू चेक, राइट, रिपैकिंग, राइट, वो ये वाला है। ओके, देन अभी 2 प्रोडक्ट 2 HU है, तो ऑब्वियसली दूसरा HU का भी वेटिंग वेयरहाउस टास्क बनना चाहिए, क्योंकि हम वो भी मूव करेंगे फाइनल बीन के लिए, राइट। हियर दैट द रीजन यू कैन सी 2 वेटिंग वेयरहाउस टास्क। ओके, मतलब स्टिल सिस्टम को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हुई है नहीं, तो वो कैसे समझ में आएगी सिस्टम को। सो डबल क्लिक ऑन द HU, राइट। यहाँ पे एक HU स्टेप कंप्लीट एक ऑप्शन है, राइट। उससे होगा क्या, ये जो है HU स्टेप कंप्लीट, मतलब जो भी हम एक्टिविटी करना चाहते हैं वो हो गई है। So simply click over here. See, HU step complete. So for all, we need to do this. HU step complete means when you complete this HU step, right, and save. And now if you check the monitor, just refresh, you will see now, see, is blank, means we can confirm the both the task. ऐसे हम करते हैं POSC. Clear? Any question? Hello, am I audible? हाँ सर। समझ में आ गया कंफ्यूजन हो रहा कंसेप्ट, या मतलब कंसेप्ट समझ में आ गए? है। प्रोसेस तो यस आई नो इज कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कुछ कॉन्फ़िग है इसमें। बट क्लियर है। वो जो डिकॉन्स वाला जो स्टेप्स है ना, ऐसा नहीं है कि वो मैंडेटरी है, आप डायरेक्टली भी HU स्टेप कंप्लीट कर सकते हो। मतलब कैसे, अभी मैं क्या करता हूँ, एक का ही डिलीवरी क्रिएट करता हूँ, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए। ओनली वी नीड टू चेक कि वो कौन सा मटेरियल है जो जिसके लिए हमने POSC एक्टिवेट की है। ओके, मैट 2 है 47, सो मैं खाली 47 के लिए ही डिलीवरी क्रिएट करता हूँ। व्हॉट इज डिकॉन्स म्हणजे डिकॉन्सोलेशन का? या डिकंसोलेशन, यस, जैसे शॉर्टकट है। अभी मैं इसको, और इसको हम कितने भी इसमें पैक कर सकते हैं, राइट, जो हमने HU में देखा था कैसे भी।
complex. Okay, अगर मैं so even from monitor also you can create task. Okay, कैसे? Just confirm. यहाँ पे नंबर डालिए, then click over here, right? Create task in background, right? So आपको ये भी देखना है कि हम कहाँ से कर सकते हैं. So task create हो गया. Click over here, right? See again is door to staging area, right? So I will confirm this activity from here itself. ओके, एक्चुअल वेयरहाउस में यहाँ से किया जाता है मॉनिटर से, क्योंकि इज वेरी इजी, एक ही स्क्रीन में हम सब आ जाता है. नाउ अगेन सी वन वेटिंग वेयरहाउस टास्क इज क्रिएटेड और फाइनल टास्क, राइट? तो मैं इसको कंफर्म करता हूँ. मूवमेंट वर्क सेंटर, अभी वर्क सेंटर में चला गया, राइट? सो अगेन आई विल गो टू दी वर्क सेंटर, राइट? विल गो बैक वंस एंड टू रिफ्रेश. Now I have checked and I have found that okay, everything is okay. I don't want to repack or whatever, right? So I will directly say H2 step complete. See, tick aa gaya, save it. Okay, now I will go here and if I refresh, is see is blank, means we can confirm. Clear? Hello, मतलब with this मेरे को प्रोसेस समझना है. स्टार्टिंग में लाता है और डोर पे आता है. ओके, का मतलब हो गया जस्ट लाइक अ गुड रिसीव. तो yeah, डोर से हम डोर का आए तो हम वहाँ पे बोलते हैं अनलोडिंग. तो हमने yes, वो टीम में किया, कहाँ पे तो असाइन किया. आपने कहा WPT में हमने वहाँ पे स्टोरेज भी सोर्स असाइन किया ना वहाँ पे. yes, इनिशियल एंड फाइनल जो रहता है बिन. yes, yes. फिर एचयू का रोल इस बीच में मेरे को नहीं समझ में आ रहा. कौन सा HU का? हाँ, HU का रोल समझा नहीं. आपने सीक्वेंस भी है. फॉर एग्जांपल आपने कहा अनलोडिंग टू स्टेजिंग, स्टेजिंग टू पुट अवे, ऐसा सीक्वेंस भी समझ में आया, हमने सिस्टम में किया. लेकिन ये एचयू का रोल कहाँ पे? एचयू मतलब पैकेजिंग करते हैं ना, मैं भूल गया वो. नहीं, पैकेजिंग अभी देखिए, HU क्यों हम HU ला रहे? बिकॉज व्हेन इन विच सिनेरियो विल यूज डिकॉन्स, कौन सा सिनेरियो हो सकता है जिसमें डिकॉन्सोलेशन हम करेंगे? पता नहीं मुझको डिकॉन्सोलेशन क्या है. ओके, सो वही मैं बता रहा था. सो डिकॉन्सोलेशन जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, राइट? डीमार्ट, रिलायंस, बिग बाजार का सेग्रीगेशन करते हैं हम, सेग्रीगेशन करते हैं. यस, अभी सेग्रीगेशन कब करेंगे? जब सब एक इसमें पैक होके आया है. ओके, हाँ, तो राइट, उसके लिए वो सेंटर आ गया फिर सेग्रीगेशन. यस, तब चाहिए अगर ऐसे बॉक्स में आया है, राइट? बट अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं सबसे आसान एग्जांपल और एक दूं, जब हम शिफ्टिंग करते हैं, राइट? घर हम शिफ्ट करते हैं, राइट? तो फैमिली का जब हम हमारी फैमिली है वर्सेस बैचलर है, तो बैचलर के पास ज्यादा प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट नहीं, क्या बोल सकते, सामान है नहीं, राइट? सो वो ऐसे लूज लेके लेके जाएगा, तो उसको मालूम है ये तो ओके ओपन है, ये लैपटॉप है यहाँ पे रखना है, ये चेयर है यहाँ पे रखना है, राइट? बट जब हम फैमिली मूव करेंगे तो विल हैव तो डिकॉन्सोलेशन तभी वर्क यस, जरूरत होगी. यस, यस, उस एरिया को भी हम सिस्टम में क्रिएट करेंगे वर्क सेंटर कहाँ पे, और फिर इसको. यस. और एचयू का रोल फिर हैंडलिंग एचयू का यूनिट रोल मतलब. मतलब या हैंडलिंग यूनिट, तो मतलब वो एचयू ही हो गया ना. ओके, EWM हाँ, वेयरहाउस में तो एचयू ही हो गया, राइट? ओके. तो मतलब जब हम क्या टास्क क्रिएट करते हैं थ्रू वेयर हाउस, तो एक ही टाइम में सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस 1 पहले स्टेप फॉलो होगा या सीक्वेंस 2 होगा? मतलब दो हर टाइम एक ही इसमें दोनों प्रोसेस ट्रिगर होगा. मतलब कैसा? वेअर हाऊस आपण क्रिएट केला की मग सिक्वेन्स 1 फॉलो होणार, म्हणजे डोअर टू स्टेजिंग एरिया आणि स्टेजिंग एरिया टू पुट अवे, कसं होणार? म्हणजे या सो एज पर जो हमने सीक्वेंस रखा है उसी के जैसे चलेगा वो स्किप नहीं करेगा सीक्वेंस. अगर हमने उसको रखा है कि आफ्टर अनलोडिंग इट शुड गो टू द वर्क सेंटर, सो इट विल गो टू द वर्क सेंटर.
और एल्स जो हमने लास्ट टाइम देखा था आफ्टर अनलोडिंग इट शुड गो टू द पुट अवे, तो वो पुट अवे जाएगा, तो उस टाइम तो वो ये होगा ही नहीं, राइट? आपका दो क्या बोलते हैं करना पड़ेगा, दो टास्क क्रिएट करना पड़ेगा हर एक प्रोसेस के लिए अलग। ये मेरा क्वेश्चन है, ये कि टास्क में दोनों सीक्वेंस प्रोसेस मतलब हो गए या एक ही टास्क में? अभी देखिए ना, हमने डब्ल्यूपीटी की अभी ये जो है डिटर्मिनेशन हमें कहाँ पे मेंटेन करना है, डब्ल्यूपीटी के ऊपर। तो डब्ल्यूपीटी जहाँ जहाँ पे आप डब्ल्यूपीटी डिटर्मिनेशन करोगे जिस जिस प्रोडक्ट के लिए, उन सब के लिए ये ट्रिगर हो जाएगा। तो एक ही टास्क में हो जाएगा, क्योंकि उस टास्क में ही डब्ल्यूपीटी है। उस डब्ल्यूपीटी हमने वहाँ पे स्टोरेज भी असाइन किया है, और स्टोरेज प्रोसेस में हमने कुछ तो किया है जो मेरे को थोड़ा याद यस यस। समझ में। मतलब हमको रियल प्रोसेस इस सिस्टम में कैसे ट्रिगर होता है बस वो देखना है, उसका असाइनमेंट देखना है, किसको क्या असाइन है, किसमें क्या है। यस, मतलब सबसे पहले हमें उनको पूछना पड़ेगा कि कैसा है क्या है, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट वी नीड टू डिसाइड। नॉर्मल रियल टाइम में ऐसे कितने सीक्वेंस रहते हैं, मतलब स्टैंडर्ड प्रोसेसेस जो एक अनलोडिंग टू डोर टू स्टेजिंग, स्टेजिंग टू वर्क सेंटर टू फाइनल बिल। या सो कैसा है, सो एसएपी ने जो सेटिंग दिया है, राइट, सो दिस इज एन स्टैंडर्ड, राइट, बट लाइक डिपेंड, राइट, कितने भी उसमें हम डाल सकते हैं। तो और एक इसके बाद एक और एक सब प्रोसेस है विच इज वैल्यू एडेड सर्विसेज, राइट, तो उसमें और एक स्टेप ऐड हो जाएगा। तो ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है कि हम कितने कर सकते हैं, राइट, हम कितने भी कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। क्लियर? एनी क्वेश्चन? या एनी क्वेश्चन? कुछ समझ में नहीं आया है? नाउ ये जो टिक है, राइट, अगर मैं इसको टिक को जो वेटिंग वेयरहाउस टास्क का जो क्रिएट हो रहा है, राइट, अगर मैं टिक को निकालूं और सेव करूं, सो इज नॉट पॉसिबल, राइट, इज मैंडेटरी टू टिक, राइट। तो आप एक तो डीसी को क्रिएट करो टास्क, या वाइल डूइंग अनलोडिंग, बट वो वेटिंग वेयरहाउस टास्क होगा, राइट। तो अगर मैं अनलोडिंग के वक्त करता हूँ, ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू वाइल पुट अवे, बिकॉज वो पुट अवे का ही टास्क है, राइट। तो आप अगर आप पुट अवे करोगे तो पुट अवे के बाद कैसे होगा वो, राइट। तो इज बिफोर डिकॉन्स, राइट। व्हाट विल हैपन अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, राइट, चेंजेस इट्स लाइक अगर मैं क्रिएट करता हूँ और HU मैंडेटरी है, व्हाई, इफ लेट्स सी, ओके, अगर मैं सेव करता हूँ, डिलीवरी खाली मैंने सेव की है, राइट, और अभी मैं यहाँ पे, या विल गो टू द मॉनिटर, let me close all the window, okay, 71, राइट। मैं अभी इसको जाता हूँ करने के लिए, ओके, डिफरेंट डिलीवरी 72, सो 72 में HU नहीं है, राइट, और मैंने बताया था HU मैंडेटरी है। इफ यू डू विदाउट HU व्हाट विल हैपन, विल सी। मैं टास्क क्रिएट करता हूँ तो वो डायरेक्ट पैलेट में जा रहा है, बिकॉज वो लूज प्रोडक्ट है, राइट। तो लूज प्रोडक्ट में हम डिकॉन्स पे भेज के क्या करेंगे, राइट।
क्लियर? मतलब हैंडलिंग यूनिट में हम पैलेट या जब वो बॉक्सेस पैक होगा, जो यस, जब ऐसा होगा तभी हम डिकॉन्स में लेके जाएंगे यहाँ पे अनपैकिंग करने के लिए। बट अगर आते वक्त ही वो लूज प्रोडक्ट है तो फिर फायदा क्या है उसका वर्क सेंटर के ऊपर लेके जाके, राइट? दैट द रीजन। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मल्टीपल पीसेस में एचयू लगेगा, एम आई राइट? अगर एक ही बड़ा पार्ट सिंगल एक ही, तो इसमें कैसा होगा फिर? एक ही समझा नाही. ते मतलब एकच मोठा पार्ट आहे असा की त्याच्यामध्ये मल्टिपल पीसेस नाहीये, एकच मोठा लूज प्रोडक्ट असेल त्या केसमध्ये किंवा त्या लूज नाही. प्रोडक्ट So no, even the loose product. For example, let's imagine one big giant एक spare part एक इंजन का, राइट? अभी डिकॉन्स का जो मोटिवेशन जो एम है, राइट, वो आप समझ लीजिए कि डिकॉन्स हम क्यों करते हैं? जब हमें उसको पैक करना है या अनपैक करना है, फॉर एग्जांपल उसको हमें ब्रेक करना है। अगर एक बड़ा सा प्रोडक्ट आ रहा है तो हम उसको मतलब कहाँ पे लेके जाएंगे? उसका यूजेस क्या है लेके जाके? कुछ है ही नहीं, राइट? यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अगर कुछ स्टिकर वगैरह लगना है, अगर कुछ ऐसा मतलब कोई वर्क सेंटर पे उसको सिंपल प्रोसेस करना है तो उसी टाइम क्या करना है? स्टिकर स्टिकर बोल रहे हो क्या आप? सॉरी, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. स्टिकर बारकोड स्टिकर, स्कैनर लाइक ओके, हाँ, मतलब कुछ लगाना है फॉर एग्जांपल, राइट? यस, उसके लिए हमारे पास अलग प्रोसेस है. दैट इज डन बाय डिफरेंट प्रोसेस. लेट्स से ये जो बॉक्स है, राइट, ये एक ही कंपोनेंट का है, उसमें एक ही मटेरियल है, एक ही पीस है. तो ऑब्वियसली इसको वर्क सेंटर को मैं मूव ही नहीं मतलब उसका कुछ फायदा ही नहीं होगा, राइट? उसको डायरेक्ट मैं पुट अवे कर दूंगा. अगर आप जैसे बोल रहे हो ये स्टिकर लगाना या कुछ भी करना है तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, वो नेक्स्ट प्रोसेस है एक्चुअली, इसके बाद ही हमें वो देखना है. ओके तो ये आपने जो वेटिंग का कंसेप्ट बताया तो वहाँ कौन से अप्लाई होगा? मतलब जब लूज प्रोडक्ट आ गए तो उसको सेग्रीगेट करने के लिए जो टाइम के लिए वेटिंग दिया है क्या, वो टिक मार्क? नहीं, वेटिंग वेयर हाउस टास्क जो है कि लाइक अनलेस एंड अनटिल आपका जो डिकॉन्स की एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होती है तब तक वो वेटिंग वेयर हाउस टास्क ओपन नहीं होगा, राइट? मतलब अभी ये मूव, लेट्स से ये जो 4 बॉक्स है ये कि एक बॉक्स में आए थे, राइट? एक बड़े से बॉक्स में आए थे और सिस्टम ने उसका वेटिंग वेयर हाउस टास्क क्रिएट किया. अभी ये कब लेके जाएगा? जब ये एक्चुअली ओपन हो गया, राइट, तभी ये बंदा लेके जा सकता है आगे. ओके, अगर किसी इन बिटवीन किसी ने क्रिएट करने की कोशिश की तो नहीं होगा वो? नहीं, कंफर्म ही नहीं होगा ना, हमने देखा क्योंकि स्टेटस इज बी. तो या अनलेस एंड अनटिल वी डोंट कंफर्म इट, we don't know, like confirm the previous activity, system will not allow. तो सीक्वेंस वन ही नहीं पूरा हो. हाँ, या नाउ अभी मैं इसको क्या करता हूँ, पैक करता हूँ. we aware कि how to pack, right, in EWM directly. So I'll go here, मैं पैक करता हूँ इसको, drag and drop, right, save. Now if you check, right, create कर रहा हूँ. So again POC आ गया, सी staging, right? अभी एक ही टास्क है, अगर मैं इसको confirm plus सेव करता हूँ, सीधा मैसेज 2 warehouse task created. ओके, एक ही होना चाहिए बट 2 है, क्यों? इफ यू नाउ चेक, यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ, सो 1 विल बी वेटिंग वेयरहाउस टास्क सी, जो होगा डायरेक्ट फाइनल पुट अवे. बट बिकॉज ऑफ बी, सो अगेन दैट यूजर विल नॉट एबल टू कंफर्म. उसको बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा, उसको पहले मूव करना पड़ेगा डोर टू स्टेजिंग एरिया, राइट? जैसे ही वो हो जाएगा देन स्टेजिंग एरिया टू वर्क सेंटर. ओके, एंड देन वर्क सेंटर में जाके उसको वो कंप्लीट बोलना पड़ेगा कि यस, जो कुछ वो आई विल रिफ्रेश हियर, राइट? रिफ्रेश किया तो वो एचओ आ गया, राइट, जो हम वर्क सेंटर के ऊपर है.
and I'm okay with this box. H2 step जब मैं complete करूँगा and I will save, then only it will open the final task, which we can confirm like this. Clear? Clear है? आसान है? Interesting topic? हाँ, इंटरेस्टिंग है। एक बार Yep. प्रीवियस कंसेप्ट नहीं जब तक करते ना तब तक ये चूहे तो फिर Yes, मैंने बहुत बार बताया था कि like unless and until you don't like आप step by step नहीं करोगे, so it will be very difficult. मैंने चालू किया कल, फिर वो असाइन वगैरह किया कस्टडी ने आपने एन टाइटल पार्टी नंबर रेंजेस बनाया है, ये चालू करता हूँ ओके कोड। ओके, या मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भी शेयर करता हूँ। ठीक। एनी क्वेश्चन? मतलब एक में 2 वेयरहाउस टास्क क्रिएट हो गए डॉक्यूमेंट, या मतलब जितने ऑपरेशन मूवमेंट हो गए मटेरियल की, हर एक मूवमेंट के लिए एक वेयरहाउस टास्क डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। यस, वो तो नॉर्मल या संतोष। तो इसमें 27 था, पहला कौन सा 226 वाला W610 नो, जस्ट इग्नोर द नंबर, क्योंकि नंबर यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, राइट? सो इफ यू चेक, सबसे तो पहले हाँ 2GR जोन ना, या सो पहला शुड बी डोर टू स्टेजिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर 26 बताओगा तो वो DC टू पैलेट है, बट ये जो टास्क है वो एक्चुअली जो पहले बना था डोर टू फाइनल बिन, उसने चेंज किया ये बिन, राइट? यू शुड ऑलवेज गो विद द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप। पहला अनलोडिंग है, फिर DC है, देन पुट अवे। दिस इज जस्ट अ नंबर। हमने टिक कहाँ पे किया उसके बिना, उसके अकॉर्डिंग ये टास्क क्रिएट होगा। तो पहले 27 और फिर या जस्ट गो विद द सीक्वेंस। पहला अनलोडिंग वाला हुआ 27, राइट? हाँ, देन शुड बी DC एंड देन पुट अवे। तो नंबर रेंजेस ऐसे कैसे करो? या बिकॉज हमने जो टिक किया था, राइट, हमने फर्स्ट के लिए टिक किया, वेटिंग वेयरहाउस टास्क भी फर्स्ट सीक्वेंस में ही क्रिएट होगा, तो उसने दोनों साथ साथ क्रिएट किया। उसने पहले वेटिंग वेयरहाउस टास्क क्रिएट किया, फिर अनलोडिंग वाला क्रिएट किया। ओके, तो क्लियर? Okay, then ओके, सो जो एक्चुअली जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसके बाद, दैट इज वैल्यू एडेड सर्विसेज। ओके, वैल्यू एडेड सर्विसेज जो आप दे रहे थे, मतलब आप जो पूछ रहे थे, राइट, लेबलिंग, स्टिकरिंग, right, that's come under the value added services. Now why it is called value added services? Because at the end, right, it add some cost to the product, right? मतलब जो एक्टिविटी हम करते हैं, लेबलिंग, पॉलिशिंग, राइट, तो उससे क्या होता है,
प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, राइट? ओके करेक्ट। तो ये हम देखेंगे कि उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन पूरा सेम ही है. You need to create external step, then that external step must be assigned to the internal step, right? And then work center we need to create because वो activity work center के ऊपर ही होगी. Okay, that will check. Only valued services में दो चीजें हैं mandatory. Okay, अभी देखिए यहाँ पर भी आपका जो previous topic है वो आने वाला है. So there are two things, packaging specification and VAS. तो वैस मतलब वैस रिलेवेंस, मतलब एक वैस रिलेवेंस एक सेटिंग है वैलिड सर्विसेज के रिलेवेंट, वो हमें एक्टिवेट करनी पड़ेगी, राइट? एंड पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन. नाउ व्हाई पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन इज रिक्वायर्ड? मैंने एक चीज बताया था, राइट, कि पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन वी कैन यूज इन ऑल द प्रोसेस, राइट? इनबाउंड, आउटबाउंड, इंटरनल. अभी यहाँ पे क्यों चाहिए? बिकॉज यहाँ पे हमें यूजर को बताना है कि आपको लेबलिंग कैसे करना है, राइट? राइट साइड से इतना गैप रखना है, या ये वाला रेड वाला रिबन यूज करना है, समथिंग लाइक दैट. तो मैंने बताया था कि पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन ये प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट है, राइट? यू रिमेम्बर? अभी ये हम इंस्ट्रक्शन उनको बता सकते हैं. क्लियर? हेलो, इज दिस क्लियर? एक्सप्लेनेशन क्लियर है या कुछ क्वेश्चन है? Okay. Now, packaging specification we can do without POSC. मतलब हम जो डिकॉन्स कर रहे हैं उसके बिना भी हम कर सकते हैं. उस किस केस में? जहाँ पे आपने मतलब आप जो पूछा था, अगर एक ही प्रोडक्ट है, राइट? तो ऑब्वियसली इन दैट वी डोंट रिक्वायर टू डू, मतलब हमें ओपन करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली वर्क सेंटर के ऊपर मूव करके वो एक्टिविटी खत्म कर देंगे, राइट? वो एक पॉसिबिलिटी है, राइट? और एल्स हम विद पीएससी भी उसको कर सकते हैं. अभी पीएससी के साथ कब करेंगे? या पीएससी मतलब अगर पीएससी के साथ करना है तो पीएससी उसके पहले होगी या बाद में होगी? क्या लगता है आपको? पहले तो बाद में होगी ना, सॉरी, सेंटर में एक्सट्रैक्ट नहीं आवाज नहीं आ रहा है. मतलब कई पार्ट रहेगा ना वो. या पहले हमें वो बॉक्स ओपन करके देखना पड़ेगा, राइट? हाँ आफ्टर कि सेग्रीगेशन. उसमें क्या है. तो हाँ पहले अगर हमें पीएससी के साथ करना है तो पहले हमें उसको ओपन करना पड़ेगा, और तो फिर ऊपर तब करके जाके, तो फॉर्म आ ही जाएगा. हाँ यस, तब जाके होगा, राइट? तो you want me to cover POSC right now? Is okay? हेलो, चलेगा अगर POSC भी अभी कवर कर दिया तो? डायरेक्ट करके नहीं, आवाज नहीं आ रहा है. POC रियल टाइम में या डायरेक्टली करते हैं विदाउट नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इफ यू आर ओके टू, इफ आई कवर पीएससी टुडे, तो हमारा 50% हो जाएगा. मतलब ऑलमोस्ट 50% ही है. पीएससी जो है वो 50% है. अभी वैस है, फिर आउटबॉर्न है. आउटबॉर्न में ज़्यादा सिनारियो है नहीं. फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स सिनारियो है विच इंक्लूड बोथ इनबॉर्न एंड आउटबॉर्न. ओके. अभी कितना टाइम लगेगा उसके लिए? अभी तो है कि खत्म तो करना है, एटलीस्ट 50% तो हो गया अपना. तो नहीं, मतलब जो अभी रिमेनिंग 50% है ना, उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कैसा है, वो जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस या एडवांस प्रोसेस जो है ना, वो दोनों के ऊपर है, इनबाउंड आउटबाउंड, राइट? तो उसमें हम ऑब्वियसली दोनों तो डिस्कस नहीं करेंगे, राइट? तो लेट्स से कि मैं इनबाउंड डिस्कस करूंगा तो आउटबाउंड आपको एज अ असाइनमेंट करना है, लाइक दैट, ऐसा. तो अभी पीयूसी पूरा कंसेप्ट नहीं हुआ क्या हमारा?
अभी नहीं थोड़ा हो बहुत गया, है। पीयूसी खत्म हो गया। क्या अभी वैस उसमें से एक एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड? या ये वो नेक्स्ट टॉपिक है, वो न्यू टॉपिक है एक्चुअली, ऑल टुगेदर ऐसे है। ये कल करेंगे सर। कल ठीक है, हाँ। बट प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिए अभी, क्योंकि अभी आपने देखा है राइट कि क्यों पिछले टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, जो मैं आपको बोल रहा था प्रैक्टिस कीजिए कीजिए, समझ में आ रहा है राइट कि क्यों। WBT इम्पोर्टेंट। ये डिटर्मिनेशन डब्ल्यूपीटी का सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी के ऊपर आपके सब प्रोसेस का ट्रिगरिंग पॉइंट डिपेंड है। इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये एटलीस्ट मतलब मैं ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ, बट बाकी किसी क्लास में पूछता भी नहीं है कोई, उनका फोकस रहता है कंप्लीट करना, वो आगे आगे निकल जाते हैं, इतना कोई टाइम देता नहीं है। ओके ओके, विल स्टॉप, विल कवर PUSC sorry VAS इन नेक्स्ट सेशन। ओके, फिर उसमें एक सिंपल टॉपिक है LOSC करके, वो भी एक ही टेबल है उसमें, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक ही दिन में मतलब मे बी टुमारो विल ऑल्सो स्टार्ट आउटबाउंड प्रोसेस, बट या I'm going to put message in our group about this के 50% सिलेबस हो गया है। ओके हेलो ओके सर, ओके नो इशू। या ओके देन थैंक यू। मैं कल बोलता हूँ टाइमिंग, ठीक है सर, जल्दी कुछ बोल भी। रहे हो आप राइट? हाँ आई विल शेयर दी, मैं मैसेज सेंड करता हूँ। ठीक है सर। ओके फिर उनका भी बोलिए क्लास ज्वाइन करने के लिए। सर वो क्यों नहीं करता, अभी मैं तो रोज मतलब बोलता हूँ उसको, फोन क्यों नहीं करता मुझे भी नहीं मालूम। ऐसा तो नहीं है ना छोड़ वगैरह दिया है? वैसा भी नहीं बोलता, और मतलब आपने देखा भी होगा कि बीच बीच में वो रिप्लाई भी देता है ग्रुप पे। यस हाँ, यस यस। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो छोड़ा है या नहीं, नहीं बता सकते। ओके क्या बोल सकते हैं? ओके कैन सी माय स्क्रीन राइट? यस सर। जस्ट अ मोमेंट। ओके लेट इट बी। या सचिन आपकी क्या चल रही है प्रैक्टिस, कहाँ तक आ गए आप? हेलो एम ऑडिबल राइट? यस हेलो सर। यस सर, यस। सचिन कैन यू हियर मी?
Okay. Hello, Okay, I'm audible, sir. so yes. Hello. Now, yeah. I am driving. That's why. Okay. ओके, मैं कर रहा हूँ अभी। वो पूरा कहाँ तक आया था? स्टोरेज बिन तक आया था, फिर स्टोरेज टाइप, और फिर वो यहाँ तक किया पूरा नंबर रेंजेस, और फिर लेवल ओवर वो असाइन हाई लेवल किया है। ओके। करूँगा अभी, मतलब पूरी वीडियो देख ली है, लेकिन रिवीजन देखता हूँ कंटिन्यूसली। वो प्रैक्टिस इसमें अगर नहीं रहेगा तो, लेकिन जो प्रोसेस है पूरा देखता हूँ मैं, बार बार 2-2-3 बार। ओके। जो आपने अभी पीओसी देखा, वो भी आज पूरा रिवाइज किया, टोटल वीडियो देखिए, मतलब टच में रह रहा हो, मतलब ठीक है, प्रैक्टिस में आ जाओगे जल्दी और कर। हाँ। ओके। लेकिन लिंक नहीं, मैंने मतलब लिंक में हो उसके। Okay, got it. Okay, so we have discussed about POSC last time, right? तो उसमें एक छोटा सा part है that we'll cover, then we'll move to the next topic. Guess let me check अगर वो हुआ है या नहीं हुआ है, I'm not sure, so let me just check quickly. I guess वो हुआ है, but let me check once. 750. Okay, it's not done. Okay, so basically एक चीज रहती है, नॉर्मली ये आउटबाउंड में सब चीज में यूज किया जाता है, इनबाउंड में भी, सो दैट इज कॉल्ड रूल बेस. ओके, नाउ व्हाट इज रूल बेस? सो यहाँ पे इफ यू चेक राइट, यहाँ पे इन सम ये तो हमने तो क्रिएट नहीं किया स्टैंडर्ड वन IB 0123 4, राइट? यहाँ पे डेस्टिनेशन भी नहीं है, इज ब्लैंक. बट व्हेन इज ब्लैंक देन मतलब कहीं पे ना कहीं ये मेंटेन करना ही पड़ेगा, राइट? क्योंकि सिस्टम को कैसे मालूम कि कहाँ पे लेके जाना है, राइट? सो व्हेन यू मेंटेन लाइक दिस, इज हार्ड कोडेड कि ये इसी के ऊपर जाएगा. ओके, फॉर एग्जांपल, बट लेट्स से आई हैव अ कंडीशन, मेरे पास अलग अलग कंडीशन है. ओके, कि मेरे पास n नंबर ऑफ स्टोरेज टाइप है, मतलब हमारे स्टेजिंग एरिया है, राइट? तो अगर इस पर्टिकुलर स्टोरेज स्टेजिंग एरिया में आएगा तभी वो POC ट्रिगर होना चाहिए. इफ इज अदर देन या इट शुड वर्क नॉर्मलाइज. ओके, like that. So what we have to do, remove this. Okay, then take this rule base. Basically condition maintain करनी पड़ेगी हमें that okay, if the particular material, right, is going to be there, then only trigger POSC. So once you tick this one, so there are two transaction that we have to maintain. So if you go to the SCWM menu, okay, go to the setting. Okay, then shipping and receiving, then this transaction, staging area and door determination. Okay, but before this, let me check. I don't think so. We have, yeah. So to work with this rule based POC, मतलब हम रूल डालेंगे कि ओके इस डोर के ऊपर आया तभी POC होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, नॉर्मली हमारे पास अलग अलग डोर होते हैं, राइट? और अलग अलग डोर के अलग अलग स्टेजिंग एरिया हो गए, राइट? फॉर एग्जांपल, सो जहाँ अगर यहाँ पे मटेरियल है, लेट्स से ये अंदर वाला पार्ट है, सो अगर इधर मटेरियल है इस स्टेजिंग में तभी POC चलना चाहिए. अगर यहाँ पे तो वो नॉर्मल मटेरियल डायरेक्ट पुट अवे होना चाहिए, राइट? ऐसी कंडीशन हम मेंटेन कर सकते हैं. बट फॉर दैट ये जो डोर जो है और वो स्टेजिंग एरिया जो है, ये दोनों कनेक्ट होने चाहिए. ओके, सो फॉर दैट व्हाट विल डू, we'll go to the master data. Okay, then go to the staging area. Okay, staging area, define staging area. So we'll
we'll go with the new entry 3577. So staging area group means our staging area, right? GR, and staging area is nothing but this section actually. Okay, so what I will do, I will create a section also. एक section. Okay. 001 GRs stage. Okay. Now go to the staging area, new entry, GR. Then if you check the staging area 0001, and then this staging area is for good receipt that we have to tick. Okay, save it. Then staging area group and door determination. Basically, we have to create 500. So what I will do, I will go with GR00. This is for GR00. Okay, मतलब हमने क्या किया, पहले तो स्टेजिंग एरिया को हमने डिफाइन किया कि गुड रिसीप वाला कौन सा है, गुड इश्यू का कौन सा है. देन डोर डिटर्मिनेशन ग्रुप हमने क्रिएट किया, राइट. फिर हमें वेयरहाउस डोर क्रिएट करना है. ये जो है ये वेयरहाउस डोर. ओके, so we go to this define warehouse door, we'll directly with create, then 500 GR00. So इसकी डायरेक्शन क्या है, इनबाउंड. So see, we can also use for both inbound and outbound. Okay, inbound, that जो default staging area जो है, that is GR00 and 0001. Okay, save it. Okay, then now हमने जो create किया ये तीनों चीजें 1, 2 and 3, right? That we have to assign. Okay, assign staging area and door determination group to warehouse door. Okay, ये दोनों चीजें warehouse door को. So we'll directly go to the new entry, then 500. Okay, then warehouse door जो हमने create किया which is GR00, and then staging area and door determination group is again GR00. Save it. Okay, and जो staging area to warehouse door है यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे that 7500 warehouse door GR00, staging area group GR00, and staging area is 0001. Clear? Hello, मतलब क्या कर रहे हैं सर हम, मतलब जो मटेरियल आ रहा है Okay. अंदर वो अगर So normally, डोर में रहे. yeah, no, normally अभी हमें रूल बेस करना है. ओके, रूल बेस मींस इसके पहले नॉर्मल जो हमने पीएससी देखा था उसमें क्या था प्रोसेस. वही कि अगर स्टेजिंग एरिया में मटेरियल आ रहा है तो वो डायरेक्ट पुट अवे होगा हमारे जहाँ पर मटेरियल रखना है वहाँ पर. डायरेक्ट पुट अवे होगा, ऐसा तो हमने कुछ सर डिस्कस नहीं किया था. डायरेक्ट पुट अवे होगा मतलब उसके बाद पुट अवे होगा ऐसा. बट या व्हाट इज पीएससी, माय क्वेश्चन. नहीं सर, वैसा नहीं था. पहले डोर पे आएगा, फिर डोर से हमने स्टेजिंग के लिए एक सोर्स भी असाइन किया था फर्स्ट सीक्वेंस में, और फिर स्टेजिंग से फाइनल भी. नहीं, तो पीएससी मतलब जब हमें उसको अनपैक करना है. ओके, क्योंकि मटेरियल पैक होके आया है, हमें उसको अनपैक करना पड़ेगा, राइट. सो अगर अनपैक करने के लिए देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मूव टू दी some area, right, work center, right. So जो नॉर्मल प्रोसेस हमने देखा था, जो ऑल अगर WPT डिटर्मिनेशन है 1011 का, देन वो सब लेट्स से ये वाला वर्क सेंटर यहाँ पे उसको ओपन किया जाएगा, देखा जाएगा कि ओके इसमें से जो 10 बॉक्स है वो अलग लोकेशन में जाएंगे और 10 यहाँ पे जाएंगे. बट ये फिक्स था, जो भी मटेरियल आएगा उसका ये प्रोसेस होना ही चाहिए, राइट. ये हमने देखा था, राइट.
WPT के ऊपर डिटर्मिनेशन किया था, क्लियर? हेलो, हाँ सर। राइट। बट अभी हम क्या करने वाले हैं, हम इसको रूल डालने वाले हैं, ओके, कि यस नॉट ऑल, स्पेसिफिक कंडीशन होगी कि अगर लेट्स से ये अभी जो हम जो करने वाले हैं विथ रूल बेसिस अगेन सेम थिंग ओनली, कि अगर ये डोर से मटेरियल आया देन प्लीज डू द पीयूएससी, अगर और कौन से अलग डोर से मटेरियल आया देन उसके लिए पीयूएससी मत कीजिए, लाइक दिस, क्लियर? ओके ओके, मतलब जो मटेरियल हमें बॉक्स में से निकालना है, जो अलग अलग करके रखना है, उसको एक कंडीशन लगाएगी, और जिसको नहीं करना है अलग, उसको एक कंडीशन लगा रहे हैं। यस, मतलब जो पहले फिक्स था कि सभी ही पीयूएससी में जाएंगे, अभी उसको हमने हाँ हाँ और हाँ। एक फिल्टराइज कर दिया है, मतलब वो हटा के हमने उसको फिल्टराइज कर दिया है कि यस अगर ये ओके कंडीशन मीट हो रही है देन ओनली डू पीयूएससी, अदरवाइज नॉट। ओके सर। क्लियर? और वो काम करने के लिए इट इज मैंडेटरी टू हैव दिस डोर, ये जो हमारा डोर है राइट, और ये स्टेजिंग एरिया, इसका असाइनमेंट होना चाहिए राइट। सिस्टम को कैसे समझ में आएगा कि हमने वहां पे क्या डाला है डोर के ऊपर, क्योंकि जब मटेरियल आएगा वो तो डोर किससे ही आएगा राइट, इनवर्ड होगा राइट। तो ये डोर और स्टेजिंग एरिया असाइन होना चाहिए, देन ओनली इट विल वर्क राइट। यस यस। अदरवाइज रूल को कैसे समझ में आएगा कि ओके मेरे पास 10 डोर है तो कौन से डोर से आने वाले के लिए वो ट्रिगर होना चाहिए राइट। वो हम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने जो अभी क्रिएट किया है स्टेजिंग एरिया एंड डोर डिटर्मिनेशन देन वेयरहाउस डोर, और फिर हमने सबको असाइन किया वो, इसमें स्टेजिंग एरिया ग्रुप दैट इज नथिंग बट योर स्टोरेज टाइप, स्टेजिंग एरिया इज नथिंग बट सेक्शन, मतलब एक स्टोरेज टाइप में वी कैन क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन, मतलब जो हमारा स्टेजिंग एरिया ग्रुप है लेट्स से GR00 राइट, उसमें हम अलग अलग सेक्शन क्रिएट करके हम बोल सकते हैं कि यस मेरे पास 2 डोर है फॉर एग्जांपल, दोनों का इनवर्ड में ये लेट्स से ये 3 डोर है ओके, बट मुझे चाहिए जब यहाँ से मटेरियल आएगा तभी पीयूएससी होना चाहिए, इन दोनों से अगर आया तो इज नॉर्मल पुट अवे, क्योंकि ये वो डोर उसी के लिए बने कि जहाँ पे लूज प्रोडक्ट हम यहीं से रिसीव करेंगे, और जो पूरा का पूरा बॉक्स होगा बड़ा वाला वो यहाँ से रिसीव होगा, तो ये जो पूरा होगा दैट इज कॉल्ड योर स्टेजिंग एरिया ग्रुप एंड दिस इज योर स्टेजिंग एरिया। सो 001 002 003 देन आई विल मेंटेन द कंडीशन ओनली फॉर 001, क्लियर? क्लियर सर। Okay, and then that the reason is mandatory to assign this warehouse door, let's say अगर हम अभी हम अंदर से बात कर रहे हैं, we are inside the warehouse, okay, अभी आउटसाइड से फोटो है, लेट्स इमेजिन कि हम अंदर है और एक हमारा या ये वाला, तो ये स्टेजिंग एरिया है और ये डोर है, तो ये डोर और स्टेजिंग एरिया असाइन होना चाहिए राइट, तभी सिस्टम को समझेगा कि ये मुझे करना है राइट। दैट द रीजन मैंने वो किया, ये असाइनमेंट की, एंड देन पीएससी में मैंने वो जो हार्ड कोडेड था कि अगर इस स्टेजिंग एरिया पे आएगा राइट, वो डेस्टिनेशन वो है राइट, देन डू पीयूएससी, अभी वो मैंने निकाल दिया है राइट, देन आई विल मेंटेन द रूल, रूल के लिए मैंने वहां पे टिक किया, देन विल मूव टू दिस ट्रांजैक्शन, दिस इज कम अंडर द कट ओवर एक्टिविटी, ओके, /STWM STADNT अंडरस्कोर इन, ये बेसिकली इनबाउंड के लिए मेंटेन किया जाता है राइट, एंट्री देन WPT, तो यहाँ पे हम WPT मेंटेन कर सकते हैं, सो हमने 101 के लिए किया है, सो 101 में whenever okay our staging area GR00 okay, and then staging area group is GR00 staging area और बीन, तो हमें एक बीन क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि हमने अभी जस्ट सेक्शन क्रिएट किया है, सो आई विल क्रिएट वन बीन GR00 stage GR00 0001 sorry
save it. Okay, go to this, maintain. Okay, क्लियर? यहाँ पे सीक्वेंस मतलब हम देखिए हम वेंडर के लिए भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक वेंडर के लिए भी. नाउ लेट्स से डोर के ऊपर सब एक ही डोर है, अभी एक ही डोर है, यही से सब मटेरियल आएगा. बट मेरे पास ऐसे कुछ कस्टमर है, सॉरी वेंडर है, उसके लिए ही वो होना चाहिए, ये भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, राइट? क्योंकि एक वेंडर है वही ऐसे मटेरियल भेजता है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे? सो वी डू हैव दिस ऑप्शन शिप फ्रॉम. अगर मैंने लेट्स से यहाँ पे एक वेंडर डाल दिया 1 2 3 4, राइट, तो उसी के लिए वो स्टेजिंग ट्रिगर हो जाएगा, मतलब सॉरी पीओसी ट्रिगर हो जाएगा. ओके, वो भी हम कर सकते हैं. ओके, delete this one. Okay, save. Now again we have different options. So system को समझ में आएगा अगर 1 2 3 4 ऐसे अलग sequences, तो like put away strategy, so we have to provide access sequence. Okay, new entry, direction inbound, sequence number 1. So WPT का हमने reference दिया हुआ है. Okay, save it. Now we'll create one delivery. समझ में आ रहा है? यस Hello, सर. Sachin. And then जो नेक्स्ट प्रोसेस है पीएससी की, वो तो नॉर्मली है जो हम एवरी टाइम करते हैं, उसमें तो कुछ चेंजेस है नहीं, ये ओनली यहीं पर है. ओके, देन विल गो. सो ये सी 101 है, तो वो जो हमने नया स्टेजिंग क्रिएट किया है ना, उसमें चला जाएगा. ओके, अभी ये टास्क डायरेक्टली क्रिएट कर रहा है फॉर फाइनल बीन. लेट्स चेक, गो टू द मॉनिटर. ये दूसरा वाला तो डायरेक्ट स्टेजिंग पे ही जा रहा है क्योंकि हमने उसकी डब्ल्यूपीटी अलग है. ओके, सी वेटिंग वेयरहाउस टास्क है फर्स्ट वाला. ओके, डेस्टिनेशन बीन, समथिंग इज रॉन्ग. ओके, कुछ तो रॉन्ग हुआ है, किसी ने कुछ छेड़खानी की है क्या हमारे वेयरहाउस के साथ? ओके, लेट मी चेक अगेन. WPT. And then I'm also thinking to start classes on weekend evening. Everyone is okay with that? 7 बजे, 6-7 बजे.
Hello? Hello? Am I audible? Yes, sir. Yes, yes. Yeah, please check with everyone. अभिषेक आप आपके दोस्तों के साथ चेक कीजिए, बाकी तो मैं मैसेज डाल ही दूंगा, बिकॉज अगर ऐसा ही रहा तो लाइक मुझे नहीं लगता कि इस साल सिलेबस कंप्लीट होगा, मतलब कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है सो, और वो मतलब सर सिलेबस खत्म होने के बाद आप सपोर्ट के लिए रहेंगे ना, मतलब यस हम लाइक यस, बट एक चीज ऐसे कि अभी तक किसी ने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं है नॉर्मल इसमें भी, तो आई एम वरीड कि किस कोई टेस्ट कर रहा है नहीं सर कर वो रहा क्या है है। ना, सर जहाँ तक हम पहुंचे ना वहां हम्म, तक मतलब क्वेश्चन आके गए पहले भी हमको, तो आपने सॉल्यूशन भी दिया है, मुझे तो दिया है सॉल्यूशन, तो वहां तक तो ठीक है। मतलब अभी जैसे आगे जाऊंगा ना और तो मुझे मालूम है मुझे क्वेश्चन आने वाले हैं किधर ना किधर। आपको मालूम है बहुत नॉर्मल एकदम छोटी चीज होती है, बस दिक्कत आ जाती है हमें, तो आएंगे क्वेश्चन आएंगे या आएंगे। ओके ओके। सो एक गलती जो हुई थी प्रीवियस सेटिंग में, हमने स्टेजिंग एरिया ग्रुप भी मेंटेन किया था, बट हमने टिक खाली डब्ल्यूपीटी के लिए किया था, तो उसको कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी। अभी मैंने क्या किया, डब्ल्यूपीटी के ऊपर डाला है कि वेन एवर दिस डब्ल्यूपीटी देन ओनली ट्रिगर, राइट। इवन फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, विल नॉट सेव दिस, ओके। और एचयू टाइप से भी हम कर सकते हैं पीयूएससी ट्रिगर, ओके। वो कैसे, 75 क्या है हमारा स्टार, ओ सॉरी, मतलब कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं, ओके। सो मैं बॉक्स के लिए मेंटेन करता हूँ, ठीक है। जब भी बॉक्स आएगा तभी वो स्टेजिंग एरिया में जाना चाहिए, मतलब पीयूएससी ट्रिगर होना चाहिए, होल पीयूएससी, राइट। एचयू टाइप मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल, और डिटर्मिनेशन में मैं इसको अनटिक करके एचयू टाइप टिक कर देता हूँ, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, सेम डिलीवरी मतलब सेम मटेरियल 7, कौन सा मटेरियल है, लेट मी चेक, फर्स्ट लाइन है, ओके। सो फर्स्ट लाइन, ओके। डब्ल्यूपीटी हमें चेक करनी है, हमें चाहिए 10-11 किसकी, सो 10-11 फर्स्ट की है, और फर्स्ट मटेरियल कौन सा है, 647, ओके। सो 647 इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। तो विद 10 पीस, अभी मैं इसको 2 इसमें पैक करता हूँ, ओके। एक है आपका पैलेट, एक है बॉक्स, और हमने बॉक्स के लिए पीयूएससी मेंटेन किया है, मतलब कंडीशन मेंटेन की है, रूल। तो इसको मैं 5 इसमें पैक करता हूँ, ओके। और रिमेनिंग 5 आई विल गो ahead with this one, okay, and then save. Now we'll see the magic. So if you go to determination, okay, now दोनों में WPSC प्रोसेस है, राइट। बट इफ यू चेक द टास्क क्रिएशन, तो ये जा रहा है स्टेजिंग के ऊपर, राइट, और दूसरा जाएगा डायरेक्टली इन बीन, राइट। मतलब दूसरा जो है पैलेट, उसको डायरेक्ट हमने बोल दिया कि नहीं, जो पैलेट के ऊपर है वो ओके प्रोडक्ट है, बट जो बॉक्स में है वो मिक्स है, या उसको चेंज करना है वॉट एवर, तो वो जाएगा इसमें। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कंफर्म बोथ द टास्क, क्रिएट प्लस सेव, रिकॉर्डिंग तो चल रहा है ना, या देन गो टू द मॉनिटर, ओके। सी एक वेटिंग वेयरहाउस टास्क बन गया है, 2 बन गए इनफैक्ट, ओके। सो
जो स्टेजिंग वाला जो फर्स्ट है उसको मैं कंफर्म करता हूँ। ओके, उसको कंफर्म करके भी मेरा जो एक वेयरहाउस टास्क है स्टिल इन वेटिंग। ओके, और एक टास्क क्रिएट हो गया जिसमें मुझे स्टेजिंग टू वर्क सेंटर करना है, और एक जो है वो डायरेक्टली वर्क सेंटर टू फाइनल बीन करना है। अभी मैं इसको जब कंफर्म कर रहा हूँ तो इससे होगा क्या, उसकी वेटिंग वेयरहाउस टास्क नहीं बनी, राइट, क्योंकि वो डायरेक्ट पुट अवे हो गया। बट जो बॉक्स में पैक हुआ था उसको हमें मूव करना है वर्क सेंटर के ऊपर साथ, और फिर अगेन पीएससी सेटअप। क्लियर? रूल बेस क्यों किया जाता है, मतलब विद इन डब्ल्यूपीटी। आपने हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, डब्ल्यूपीटी के साथ वो काम करेगा, बट विद इन डब्ल्यूपीटी ऑल्सो वी कैन पुट फिल्टर कि यस, अगर ये डब्ल्यूपीटी में भी अगर ये वाला एच है देन ओनली डू दिस, अदरवाइज डोंट डू पीएससी। ओके, क्लियर? हेलो, हेलो शुभम, इज दिस क्लियर? आवाज आ रही सर? यस, अभी आ रही है। यस सर। समझ में आया रूल बेस का अभी क्या लॉजिक है? Why we require stage door and staging area? Okay, now so one more simple process, that is LOSC, layout oriented storage control. So layout oriented storage control means there is something called mezzanine in warehouse. ऐसा नहीं है कि mezzanine में ही करना है, एक तो एक एग्जांपल है, किसी भी और केस में भी किया जाता है, बट mezzanine इज वेरी नॉर्मल, और हैंड ओवर भी उसको बोला जाता है, राइट। सो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऐसे स्टोरेज टाइप होते हैं, राइट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, राइट। सो ऑब्वियसली अगर मुझे पैलेट यहाँ से यहाँ मूव करना है, सो आई रिक्वायर्ड 4 क्लिप, राइट, 4 क्लिप ऑपरेटर मुझे लगेगा, मतलब उसको भी एक टास्क होना चाहिए, राइट, तभी उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यस नीड टू मूव मटेरियल फ्रॉम हियर टू हियर, राइट। तो उसके लिए भी हम टास्क क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो उस केस में वी रिक्वायर्ड स्टोरेज टाइप, ये जो होगा ग्राउंड फ्लोर, राइट, एंड देन दिस इज फर्स्ट फ्लोर, एंड देन फाइनल बिन, ये जो है फाइनल बिन, बट ये वाला एक बिन होगा और ये वाला एक बिन होगा, मतलब उसको जो टास्क आएगा दैट विल बी फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, ओके सर। so we'll create new storage type, okay, so 7500 for example ground floor, okay, then all other ticks, our standard tick, save it, okay, remove confirmation, yeah, डाल दिया, then first floor, okay, and then we'll create one bin for both ls01
first floor. Okay. Now go to the LSC. Sorry. So LSC जो है that is in warehouse task. Cross process setting. Okay. Warehouse task. Then layout oriented storage control. Okay. Now new entry. So 7500. So source क्या होगा? Now we can give the source of work center, right? Table से means इधर ये हमारा work center DC, right? So DC to जो जाएगा destination वो जाएगा ground floor. Okay, ground floor का storage type, sorry, इसको जाना चाहिए for example let's say pallet, जो इसका destination जो है वो pallet है for example. Okay, but वो move होने से पहले interim में वो जाएगा first floor, ये उसका bin. Okay, then second इसमें 7500 जो source है, right, यहाँ से वो जाएगा, अरे wrong, फर्स्ट फ्लोर नहीं ग्राउंड फ्लोर होना चाहिए, right, and then GF to first floor. Okay, मतलब मुझे देखिए मूव करना है वर्क सेंटर DC टू पैलेट, बट एंटर इन में क्या है, ग्राउंड फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर से वो जाएगा फर्स्ट फ्लोर. ओके, मतलब इसके लिए हमने और एक लाइन मेंटेन कर दी है. ओके, क्लियर? आई विल सेव इट. इसके एक्टिवेशन वगैरह की कुछ जरूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली क्रिएट एन POSC. विल क्रिएट न्यू डिलीवरी. हमने बॉक्स मेंटेन किया था, राइट? सो विल गो विथ बॉक्स ओनली, ऑल 10 पीसेस. ओके, ये पैलेट है, सो विल नॉट रिक्वायर पैलेट. we want box, so we'll check yeah box, because box के लिए हमने अभी रूल बेस मेंटेन किया है. ओके, इसका मेन जो है वो आउटबाउंड में यूज किया जाता है. आउटबाउंड में विल सी वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन. ओके, सो यहाँ से भी हम टास्क क्रिएट कर सकते हैं जो हमने देखा था लास्ट टाइम, राइट? सो गो हियर, क्रिएट टास्क इन बैकग्राउंड. ओके, तो ये यहाँ से टास्क क्रिएट हो गया, राइट? So we'll directly confirm the staging one, background. Okay, once it's done, then we need to move to the work center. Okay, ground to, sorry, staging bin to work center. So we'll go and confirm. Okay, work center का transaction याद है, मैंने बताया था कि is very important, पूछा जाता है एग्जाम में, not in interview but एग्जाम में पूछा जाएगा, जो SAP की सर्टिफिकेशन एग्जाम है. याद है किसी को? So is decons. Okay, warehouse request is nothing but delivery number, WC10. Okay, and I will say okay, the whatever packing and unpacking is done, so I'm going with this HU only. Right, HU step complete and save. Okay, then we'll go to the monitor to check. I will refresh. Okay, directly. Okay, it's going pallet
20, बट हमने क्या सेव किया था पैलेट 10, so we need to change that. Okay, because strategy से वो पैलेट 20 में जा रहा है, so what I will do, I will maintain palette 20 क्योंकि destination जो है is palette 20. So interim is ground floor. So 75 DC, now ground floor to first floor and then first floor. Okay, now we'll create one more delivery quickly. .65, so we'll go to the monitor again to create task. Oh, sorry. Go here, create task in background. Okay, then we'll confirm this task. Okay, refresh, then from staging to work center. Okay, and then we'll directly move to work center to confirm that activity. Save it. See, now एक task create हुआ from ground work center to ground floor. ठीक है, so we can directly put first floor also, but मैंने जैसे एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको और थोड़ा सा ये कर दिया है in depth. So ground floor पे लेके जाएगा work center से. So I will confirm this task. Last task you can see is still in waiting. Okay, B. So मैं इसको confirm कर देता हूँ. Okay, error message is here. So we'll just go here, confirm in foreground. Okay, confirm. जैसे मैं उसको confirm कर देता हूँ, फिर refresh. Now और एक task create हो गया. That is for ground floor to first floor. Okay. Now I will confirm this also. Okay, again there is some issue, so we'll go with foreground option and then I will confirm. Okay, and then you can see first floor to final bin. Clear? तो weird error आ रहा है system से, so I will just confirm in foreground. Clear? LOSC? फुल फॉर्म क्या बताया सर आपने? Layout oriented storage control. Okay. So इसको ऐसा नहीं है कि ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर ही मूवमेंट के लिए, अगर आपको हैंड ओवर करना है मटेरियल, ऐसा होता है राइट कि एक टीम से अदर टीम जाएगा, तो वो भी एक स्पेसिफिक एरिया में वो रखेंगे एंड देन वहां से वो लेके जाएंगे, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं. अभी हमने इसमें 2 स्टेप किए. फर्स्ट वो वर्क सेंटर टू यहाँ पे लेके जाएगा ग्राउंड फ्लोर, देन ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर लेके जाएगा. यू कैन डायरेक्टली मेंटेन फर्स्ट. अगर आपने फर्स्ट फ्लोर मेंटेन किया तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर की एक्टिविटी कंफर्म कर दोगे, देन इट विल क्या बोलते हैं, इट विल ओपन द लास्ट एक्टिविटी. ओके. यस सर.
एनी क्वेश्चन? सर आपने वो इमेज दिखाई थी, वो ओपन करेंगे एक बार? कौन सी वाली? ये एलओसी को, हाँ, या दिस वन? मतलब हमने पहले ग्राउंड फ्लोर पे मटेरियल लाया, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, ऐसा प्रोसेस किया ना आपने? यस वर्क सेंटर से ग्राउंड फ्लोर, यस, ग्राउंड फ्लोर देन से ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर फ्लोर, टू फर्स्ट फ्लोर। या जो हम डायरेक्ट वर्क सेंटर से फर्स्ट फ्लोर भी कर सकते हैं, वैसा यस मेंटेन करना पड़ेगा सिर्फ? यस, सो जो जहाँ पे मैंने दो मेंटेन किया है, वहाँ पे आप ओनली मेंटेन वन, सो इट विल डायरेक्टली गो टू दी फर्स्ट फ्लोर। सो ये जो ओके सर, हमने मेंटेन किया है सेकेंड लाइन, राइट, अगर आप ये मेंटेन नहीं करोगे, इंस्टेड ऑफ दिस जीएफ इफ यू मेंटेन फर्स्ट फ्लोर, सो ये फर्स्ट फ्लोर, इन हाँ। दोनों के बीच में फर्स्ट फ्लोर लेके जाएगा ओके सर, डायरेक्टली। ओके, ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। Okay. Not sure should we रोल आउट में एलओसी में ज़्यादा बेस में, इसमें रूल बेस में हमारा टाइम गया, इट इज फाइन। प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, राइट, क्योंकि ओपनिंग मतलब अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, सर एक ऐसा पूछना ना था, हो कि अपॉर्चुनिटी में अगर हम बाद में एक्सपीरियंस दिखाएंगे तो उसमें बस इनबॉन्ड में काम किया ऐसे बोल सकते हैं, और इनबॉन्ड पर यस क्लिक किया ऐसे? यस यस, कर सकते हैं, ऐसा दिखा सकते हैं कि हमने इनबाउंड में काम किया है। और नॉर्मली प्रोजेक्ट में ऐसा ही होता है, दे आर वेरी रेयर प्रोजेक्ट की और ओनली योर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल। और मेरा ओके भी एक्चुअली आइडिया यही है कि आप इनबाउंड के साथ ही जाइए, क्योंकि आउटबाउंड में ना बहुत सिनारियो आ जाते हैं छोटे छोटे, और इसका इम्पैक्ट ओके बहुत बड़ा रहता है। इनबाउंड में पीएससी छोड़ के ज्यादा कुछ है नहीं कॉम्प्लिकेशन। मतलब सर जो जेडी रहेगा हमारा, वो नहीं ऐसा स्पेसिफिक रहेगा कि हम आपको इनबाउंड या आउटबाउंड पे ही काम करना है, या फिर नहीं नहीं, जो? सो कैसे रहता है ना टीम में, बेसिकली ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो सब प्रोसेस कर रहा है ईडब्ल्यूएम में, राइट। सो ओके, वो ओके, काम को डिवाइड किया जाता है कि यस यू यू टेक इनबाउंड, यू टेक आउटबाउंड, ऐसे, ओके, क्योंकि तो बहुत हम बड़ा बोल प्रोसेस सकते है, हैं कि राइट। मैंने इनबॉन्ड प्रोजेक्ट यस में सर, काम बहुत किया था लेंदी ऐसे? प्रोसेस। यस, यू कैन से कि यस हमने ओके सर, स्पेसिफिक इसमें किया था काम, लाइक दैट, rather than all process. ओके सर। ओके Okay, actually और एक प्रोसेस चेक करनी थी, but okay, it will take half an or 45 minutes. So let's connect, let's say tomorrow. I will message. ओके सर, थोड़ा ओके, सा हम will go with some now with some aggression, aggressively हम इसको ये करेंगे। प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिए, so it will, you know, मजा, फिर एक इंटरेस्टिंग चीज होगा, राइट। मतलब आपको भी और क्वेश्चन आएंगे कि ये कैसा होगा। So नहीं सर, जल्द से जल्द। यस, और सबको इन्फॉर्म भी कीजिए, राइट। इससे यस ज्यादा मैं यस। सेशन बड़ा भी नहीं रख रहा हूँ कि ऑलरेडी नहीं सर, दो तीन इतना ही ही लोग ठीक आ है, रहे तो 45 मुझे। मिनट्स का ही सेशन ठीक है। नहीं, मैं रेगुलर रेगुलर तो हूँ मैं सर, मतलब लेकिन प्रैक्टिस आई एग्री। मैं नहीं नहीं, कल या सो कल मेरा मेरा पूरा कैसा है साइकिल मानना कि परचेस और नहीं, वो आपका भी सही है, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन नहीं आएंगे। यस यस, हाँ, और ये भी है कि अगर मैं ज्यादा ले लूँ तो आपका भी इंटरेस्ट चला जाएगा कि यार ये बहुत नहीं नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है, नहीं ऐसे कुछ है। सर, सो अभी ये हम कवर करते हैं। अभी आप आउटबाउंड लेने से पहले हमको थोड़ा 8 दिन 4-5 दिन का गैप दीजिए प्लीज। नहीं, वो तो मैं दे नहीं सकता हूँ अभी, क्योंकि मेरे ऊपर पहले से ही बहुत ज्यादा प्रेशर है। यू डोंट नो कि वो नहीं मुझे सर, क्या गैप मत क्वेश्चन पूछ दीजिएगा, रहे पर कि यस। गैप मत दीजिएगा, पर
थोड़ा स्लो, और 45 मिनट्स का ही सेशन रखिएगा, मतलब हम जितना जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं उतना जल्दी कर लेंगे लगे तो। ओके, या जो मैंने Yes, बताया sir. वही आप कीजिए, लाइक प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस, तभी होगा। अगर आप वीकेंड को करोगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो बैकलॉग बढ़ते ही जाएगा। Yes, sir. राइट। तो मैं कल आपको सुबह का कॉल करता हूँ। आज रात को मैं ना वो इंटरप्राइज करके पूरा खत्म करके आज परचेस ऑर्डर में इनबॉर्ड डिलीवरी बनाता हूँ। एक बार ये हो गया है ना, फिर बाकी का मैं बस बहुत फास्ट कर दूंगा। यही मेनली मेरा आज हो गया इंटरप्राइज स्ट्रक्चर पूरा, बस कवरेज भी नहीं बचा है, बाकी हो गया। ओके ओके Okay, sir. Bye then. ओके, या बाय। ओके, थैंक यू, Bye, Sachin. थैंक यू। बाय। Okay, so whenever you face error like this, means let me just save it. So when you try to post or something like that, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, सिंपली अगर रेड है तो जो क्लिक ओवर हियर टू चेक करना, वो एरर चेक करने के लिए कि क्या एरर है। तो इसका बीन मेंटेन नहीं है। जैसे ही आप बीन मेंटेन करोगे देन इसको एक चेंज मोड में फिर से सेव कर देना, बाकी कुछ करना नहीं है, तो वो एरर बीन तो हम चला तो जाएगा। स्ट्रक्चर केयर किया था, उसमें तो बीन बनाया था मैंने। या आपने बनाया तो होगा बट मेंटेन नहीं किया होगा। ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ। बहुत एरर निकाले, में बहुत यहाँ तक पहुंचा था। पीक में इवेंट है, फिर मटेरियल क्रिएट किया, वो मटेरियल वो अकाउंट ग्रुप क्रिएट किया डोमेस्टिक वेंडर के लिए, बीपी के लिए। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एरर क्या है ऑनलाइन। किरकोळ एरर असेल ना हा, एवढं काय? नाही नाही एवढं नाही आहे काय. तुझं सांगा डब्ल्यूपीटी मध्ये जाऊन तुम्ही चेक करा. त्यासाठी आधी डब्ल्यूपीटी क्रिएट करावी लागेल, त्याचं क्रिएट नाही, कॉन्फिगरेशन सो पूर्ण नाही इथं पूर्ण ऑलरेडी आहे, मेंटेन आहे, त्यामुळे झालेलं आहे. फक्त त्याचं बिन मेंटेन नाही, त्यामुळे एरर देतो. ओके. मी पूर्ण कॉन्फिगरेशन मध्ये डब्ल्यूपीटी कुठं वापरलंच नाही, तरी कसं काय हे याला असाइन झालं डिटर्मिनेशन डब्ल्यूपीटी डिटर्मिनेशन आपण जे डिस्कस केलेलं, 101 का घेतो सिस्टीम, एकदम आधीच्या सेशन मध्ये आपण डिस्कस केलेलं. ओके. पण आता हा 101 ओके, मी जे प्लॅन कॉपी केला आहे त्याला असाइन नाही केले. ठीक आहे, बघतो मी. ओके, समजा ना मला कोण जॉईन करा ना. थोडंसं वेट करूया and then we'll start. चालेल ना, काय प्रॉब्लेम. आपण ते व्यास घेणार आहे का, ते व्यास इनबॉर्ड आज मधलं आपलं? वैसे येस येस येस. नाही तर गुड्स मुवमेंट बिन तर दाखवते GR झोन 4 ला ऍटम मध्ये. हे कॉम्बिनेशन मेंटेन करावं लागेल आय थिंक, बरोबर आहे. येस. ते एक एरर निघतच नव्हता, मी ते लिंकेज केलं नव्हतं. नाही का, लोकल EWM ऍड करतो आपण त्या इंटरफेस मध्ये. ओके.
हा एरिया येतो warehouse is not defined, warehouse is not defined as a EWM warehouse. नंतर जर आम्ही पूर्ण परत ओके. चेक फक्त एक सेटिंग राहिलं होतं ते डिस्ट्रीब्युट मॉड्यूल नाही का आपण ते करतो मॉडेल, मग ते केलं, परत EWM लिंकेज केलं आणि मग ECCचं वेअरहाऊस त्याला असाइन केलं, मग तो एरर निघला ओके. परत. मला एक काय विचारतो, आपण जो इनबाउंड डिलिव्हरी क्रिएट करतो VL31 त्यावेळेस तिथे जे कन्फर्मेशन राहतं तिथे इनबाउंड डिलिव्हरी आणि मग ऍडव्हान्स शिपिंग नोटिफिकेशन ASN कुठले सिलेक्ट करतो आपण? इनबाउंड नेहमी करायचं EWM सिलेक्ट करतो म्हणजे नाही समजलं मला. तिथं आपण नाही का कन्फर्मेशन मध्ये ASN आहे, परत इनबाउंड डिलिव्हरी आहे, परत शिपिंग काहीतरी आहे. कुठं म्हणताय, कॉन्फ्लिक्ट मध्ये का कुठे? PO क्रिएट करताना, सॉरी, PO क्रिएट करताना, परचेस ऑर्डर क्रिएट करताना आपण तिथे खाली आपण ओके. ज्यावेळेस सो या सो ते ऍक्च्युली वी नीड टू चेक विथ MM ची लोक ते क्रिएट करतात. ते कॉन्फ्लिक्ट इज रिलेटेड टू MM, बट इथे सो वी कॅन जस्ट इनबाउंड डिलिव्हरी इनबाउंड डिलिव्हरी. येस. हा, पण आपण इनबाउंड डिलिव्हरी करणार म्हणून मी ते कन्फर्मेशन कंट्रोल इनबाउंड डिलिव्हरी सिलेक्ट केलं. येस. PO क्रिएट झाली म्हणजे माझं इनबाउंड डिलिव्हरी सगळं कॉन्फिगरेशन तरी करेक्ट झालं, बरोबर ना? सगळ्या गोष्टी येस. बॉन्ड. एक्झॅक्टली. मी ऍक्च्युअली WPT केलं नाही, त्यामुळे तो एरर आला. आता असं बघून घेईल मी ते सॉल्व्ह. Okay. 7:30 पॉसिबल होणार नाही का निलेश? 7:30 to 8:15 म्हणजे कसं? 7:30 माझं ऑफिस ऍक्च्युली 7:15 पर्यंत असतं, म्हणजे थोडंफार एक्सटेंड होतं. त्यापुढे थोडासा ऍटलिस्ट बरोबर आहे, जरा फ्रेश होतं. आता मी इथे मटेरियल क्रिएट करताना म्हणजे ह्याचे सेल्सचे व्ह्यूज मेंटेन नाही केले. नाही, सो प्रॉब्लेम नाही. आउटबाउंड करताना प्रॉब्लेम येतो. हा, म्हणून मी ते विचार केला, म्हणजे ते सेल्स म्हणजे आउटबाउंडचे असतील, वेअरहाऊस बाकीचे, आणि वेंडर BP मधून मग ते वेंडर क्रिएट करताना FLVN0 पहिला कंपनी कोड. Yes. Okay, let's start. So today's topic is value-added services. Okay, so process like labeling, polishing, right, are come under the value-added services. Okay, so we can trace that activity separately. Okay, in EWM, क्योंकि उसका भी फिर एक वर्क सेंटर होगा, राइट? सेम कॉन्फ़िगरेशन लाइक POSC. ओके, ओनली स्टेप एडिशन होगा, मतलब जो हमने POSC में किया था वही वैस में हमको करना पड़ेगा. As simple as that. Okay, only two things will be added over here. One is packaging specification and then VAS relevance. So VAS relevance means
जो वैस की रिलेटेड सेटिंग है वो हमें एक्टिवेट करनी पड़ेगी, ओके, इन सिंपल लैंग्वेज। और फिर पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन क्यों चाहिए, एनी आइडिया, एक रफ पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन क्यों चाहिए आपल्याला इस केस में? आपण कुठलं पॅकिंग मटेरियल वापरलंय, कुठल्या साईजचं, त्यावर QR कोड असेल, बारकोड असेल. बट इनबाउंड है, राइट? वी आर डूइंग इनबाउंड. करेक्ट. So is like yeah, so हमने क्या डिस्कस किया कि this will be let's say labeling, polishing, right? करेक्ट. So ये हमें उनको बताना है कैसे करना है, right? ओके. So प्रोसेस ऐसा है कि हमें मटेरियल रखना है बीन में, right? ये तो ओके इनबाउंड प्रोसेस है, या सो हमें बीन में रखना है, बट बीन में जाने से पहले कस्टमर मतलब उनके पास लेट्स से आउटबाउंड में ये मतलब लेबलिंग नहीं कर सकते वो, ओके, डिस्पैच करते वक्त, राइट? सो वी रिसीव द प्रोडक्ट, राइट, देन विल सैग्रीगेट, राइट? जो वैस में जाएगी, लेट्स से यहाँ पे ग्रीसिंग वगैरह चल रहा है, राइट? फिर उसमें मतलब वो होने के बाद पुट अवे कर देंगे, एंड देन जैसे ही ये हो जाएगा उसको यू नो इट विल डिस्पैच के पहले, मतलब आउटबाउंड नहीं है वो, इनबाउंड है पूरा. so, ये इमेज थोड़ा सा या दिस वन वी कैन से ओके. मटेरियल तो इनबाउंड का सप्लायर से आता है, तो ऑलरेडी उस पर उसने या ऐसे कुछ होते हैं ना प्रोडक्ट की वेंडर तो नॉर्मली देगा, राइट? बट वो रखते वक्त हमें वो अलग अलग करना है. सो एक सिंपल एग्जांपल है, एक कंपनी है डिलीवरी करके, राइट? तो डिलीवरी क्या करती है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों के लिए वो मटेरियल आती है चाइना से, ओके? तब जब वो मटेरियल जब वो लाएंगे चाइना से, तो वो एक ही बॉक्स में आएगा पूरा, क्योंकि मटेरियल तो एक ही है फॉर एग्जांपल. बट जब उन्हें डिस्पैच करना है तो वो डिस्पैच में उनके पास ज्यादा टाइम है ही नहीं, राइट? तो वो क्या करेंगे, जैसे ही इनबाउंड होगा एक पैलेट आएगा, फॉर एग्जांपल उसमें मोबाइल है, 100 मोबाइल है, और 100 मोबाइल को यू नो लेबलिंग करके उनके उनके फ्लिपकार्ट का लेबलिंग, अमेजन का लेबलिंग फॉर एग्जांपल, उसको अलग अलग पैक करना है. यस, सो जब भी रिसीव होगा तभी हम उसको वो एक्टिविटी करके छोड़ देंगे. सो आउटबाउंड के बाद हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, आउटबाउंड में विल डायरेक्टली पिक एंड डिस्पैच. ओके. Okay. That's the, like you can say, the idea. That's a simple example. समझ में. Okay. So इसमें विद ये हम POSC भी कर सकते, विदाउट POSC भी कर सकते. Now when should we go POSC and when we should not go with POSC? Any rough idea? अगर वो आपने कहा था ना कुछ अलग अलग डोर पे आएगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना कुछ. तो नहीं, सो लेट्स से कि वो एक ही इसमें पैक्ड है पूरा अलग अलग मटेरियल, राइट? जो वैस है वो भी और जो वैस नहीं है वो भी, राइट? मतलब लेबलिंग और विदाउट लेबलिंग वाली भी. तो सबसे पहले हमें उनको ऑब्वियसली सैग्रीगेट करना पड़ेगा, राइट? उसको हमें ओपन करके देखना पड़ेगा कि ये कौन सा वाला प्रोडक्ट है, राइट? तो वो सैग्रीगेट करने के बाद ही हम उसको मान सकते हैं कि ये वैल्यूएडेड सर्विसेज है और विदाउट वैल्यूएडेड सर्विसेज है. सो जो वैल्यूएडेड सर्विसेज है वो डायरेक्टली जाएगा वैल्यूएडेड मतलब अगले स्टेप के लिए. जो नॉर्मल है वो डायरेक्टली बीन में चला जाएगा फिर वहां से. ओके. हेलो. हाँ, यस सर. ओके. सो जो मैंने बताया था वास्ट रिलेवेंस, राइट? सो बेसिकली ये हमें जस्ट एक्टिवेट करना है वैस. सो फॉर दैट विल गो टू दी SPRO reference IMG. Okay, it's same extended warehouse management. Warehouse management. Okay, then cross process setting. Okay, value-added services. Then number range. So we already assign number range, तो ये करने की जरूरत नहीं है. सब रेंज नंबर रेंज. Yeah.
Let me check if our warehouse is 750 और कुछ अलग था. Yeah, 75. So number range तो just a number range, right? So VAS की ना एक अलग से order भी बनती है, उसके लिए हमें ये number range चाहिए. नंबर रेंज है, इसका मतलब डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा. Yes, exactly, right. Then go to the define relevance for VAS. बेसिकली इसमें कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पे जैसे हमें वो कौन से डॉक्यूमेंट टाइप. अभी देखिए VAS जब होगा तो वो सबके लिए नहीं होगा, राइट? जस्ट बिजनेस ने बोला कि सब मटेरियल के लिए हमें करना है, राइट? किसी स्पेसिफिक के लिए होना चाहिए. सो मैंने सबसे पहले डिलीट की एंट्री जो कॉपी के साथ क्रिएट हुई थी. देन न्यू एंट्री. सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन माय वेयरहाउस आइटम कैटेगरी, सॉरी डॉक्यूमेंट कैटेगरी पीडीओ. तो हम क्रिएट नई न्यू क्रिएट करके भी उसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अभी तो INB है तो फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर है, राइट? तो लेट्स से कि एक और एक INB1, राइट? उसी के लिए ट्रिगर होना चाहिए, तो हम वो स्पेसिफिक के लिए हम मेंटेन करेंगे. मतलब इससे होगा क्या कि सेम मटेरियल अगर आया बट उसका डॉक्यूमेंट टाइप INB है, राइट? उसके लिए ट्रिगर नहीं होगा, राइट? जिसका INBI1 है उसी के लिए वो ट्रिगर होगा, राइट? मतलब स्पेसिफिक हम उसको ये कर सकते हैं कि यस इसके लिए क्रिएट होना चाहिए और इसके लिए क्रिएट नहीं होना चाहिए, ये हम उसमें रख सकते हैं. तो ये आइटम कैटेगरी हमें वो पीओ क्रिएट करते समय उस मटेरियल को अटैच करना, मतलब असाइन या करना ये पड़ेगा मतलब ना? SD वाले यस सॉरी MM वाले वो देख लेते हैं, बट यहाँ पे हम उसको एक कोडिंग कर सकते हैं कि कब वो होना चाहिए और कब वो नहीं होना चाहिए. एक डॉक्यूमेंट लेवल के ऊपर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, क्लियर? सो व्हाट इज द डॉक्यूमेंट टाइप इनबाउंड में? डॉक्यूमेंट टाइप आप सो INB, राइट? सो आइटम कैटेगरी भी हम रख सकते हैं, बट आइटम कैटेगरी विल मेंटेन ब्लैंक. सो डजंट मैटर, मतलब वो ID LVV की भी काम करेगी, ID PDI कौन सी भी उसके लिए वो काम करेगी, राइट? Then this product group and so there is a product group and group type. So it's just like our जो हमने HU में देखा था, HU type check, सॉरी HU type और HU type group वैसे ही है. तो ये हम क्रॉस डॉकिंग में देखेंगे, राइट? सो इसमें बिकॉज पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन भी है, तो पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन का हमें कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा, प्रोसीजर कंडीशन रिकॉर्ड, राइट? सो इसका एक स्टैंडर्ड कंडीशन दैट विल यूज दैट इज 0 VSI. ओके, ठीक है. तो विल यूज दिस वन, राइट? देन ऑर्डर. सो यहाँ पे वी कैन से कि ऑर्डर कब क्रिएट होनी चाहिए, मैन्युअली क्रिएट करना है, ऑटोमेटिकली क्रिएट करना है. नॉर्मली वी सेटअप एज ऑटोमेटिक. ओके, सो व्हाट विल से कि जैसे ही whenever we receive material, sorry delivery, as soon as that time it should create or after good receipt, right? हम दोनों ये मेंटेन कर सकते हो. तो I will say okay as soon as we receive delivery that time. And then if पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये मैंडेटरी है पैक स्पेस. अगर ये नहीं है तो सिस्टम वो ऑर्डर ही नहीं क्रिएट करेगा, हम फिर PSC सॉरी वैसे उसको कर ही नहीं सकते. तो अगर हमें वो चाहिए देन यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि सिस्टम ने वार्निंग देना चाहिए या एरर देना चाहिए. ओके, सो वो हम मेंटेन कर सकते हैं. सो मैं इसको जस्ट यही मेंटेन करता हूँ, डोंट चेक एनीथिंग, देन सेव इट. ओके, क्लियर? देन अगेन PSC setup, same warehouse task. Okay, then go to the process oriented storage control, right? Then new entry, so 75VS 7500. Okay, and then yeah, important announcement, जो सब क्लास अटेंड करेंगे लास्ट तक, अभी यही मेरे लिए एक ये बचा है. क्या बोल सकते हैं उसको, अशोक इज दिस यू, राइट? आलोक, हेलो, इज दिस आलोक? असंतोष?
Sorry, Santosh. Okay. You are my best student. Means you both, Sachin and you. Okay. So एक small surprise, जो भी daily attend class करेंगे, right? अभी जितने भी सेशन बचे मोस्टली विल ट्राई टू कंप्लीट नाउ एनी कॉस्ट 5 तक, जिसके उसके लिए मैंने वो मैसेज डाला है दैट विल कनेक्ट ऑन अल्टरनेट डे एंड देन विल आल्सो सी कि एक सेशन हम वीकेंड में भी ले, राइट? विल चेक कि कैसा कर सकते हो वो। बट या सरप्राइज ये जो भी लास्ट तक डेली क्लास अटेंड करेंगे, राइट? अभी भी टाइम गया नहीं, जो जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो भी आज तक, मतलब यस ऑब्वियसली उनके लिए भी है। उनको लास्ट में मैं एक मतलब बहुत कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, कॉन्फ़िग डॉक्यूमेंट। उसमें एंड टू एंड कॉन्फ़िग हर एक प्रोसेस का सेपरेट, और उसका ये भी है प्रोसेस, एंड टू एंड प्रोसेस। तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, बट ओनली इफ अगर ज्वाइन किया तो ही। ओके, और जो ऐसा नहीं कि एंड में ही मैं शेयर करूंगा, राइट? मैं लाइक अभी जो जो आ रहे हैं, स्पेशली नाउ सचिन एंड अशोक, यस मैं आपको, बट ओनली मैं अभी क्यों नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज आई वांट यू टू फेस सम एरर, तभी आपको समझ में आएगा, राइट? अगर आप वो कॉन्फ़िग देख देख के लाइक रेफरेंस से आप करोगे तो ऑलरेडी लाइक ऑब्वियसली जो हम हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो दैट द रीजन। ठीक है सर। देन वैल्यू एडेड सर्विसेज का एक इंटरनल स्टेप है, विल असाइन दिस, ओके, सेव इट, राइट? देन वी नीड टू ऐड दिस सीक्वेंस। बाकी कॉन्फ़िग पूरा सेम ही है, ओनली वो वैस रिलेवेंस का हमें और पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन हमें अपडेट कर क्रिएट करना है, वो हम इसके बाद करेंगे। विल गो हियर, so after pt, right, we'll do decons and then this one also, and then at the end 75 pt, okay? And obviously the automatic warehouse task creation, okay? Then we'll create the storage type for value added services, okay? So ये जो storage type होगा इस work center ही होगा, right? Only name is different, okay? We can give as like a works e only. What I will do, I will this dc, I will just copy this, okay? vas save it, okay? Then what next? If you remember, we need to create work center also, right? We'll directly go to the work center inventory, so 7500 yes 7500. Now external step, this for ps, right? Storage type ps, then wpt. So what हमने कौन सी wpt यूज की थी? Remember, we use 3040, right? Now the layout, so layout में will use vas1, okay? Last time we use pkmx, right? Now we'll use vas. Now why vas? Because when we say value added services, there are different options. So if you go back, if you go to this layout, if you check 7500 and then vas, so here you will see vas relevant tick, right? vas order, right? item, so this must be tick, okay? vas mein, okay? Then what else? We need to create one bean, right, for that work center, okay? So 7500 vas 7500 sample, and then this is vas, right? Save it. Now we also need to maintain the bean, right? Where destination bean, right? In POSC setup, right? Process oriented storage control, okay? So here
Okay, हमने अकाउंट्स के लिए किया था, right? DC, right? I will copy. Now external step is 5 pass. WPT will be 3060 only because it's the internal put away movement, right? Right, everyone? And then the work center or the destination will be VS in storage type, and then bean is 7500. Okay, clear? Save this. मैं अभी ड्राइव करूंगा, रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। ओके, बस सुनता हूँ। Yeah, sure. Okay, now so हमारा सब config हो गया. Only thing is that we need to create packaging specification, and at the same time हमने जो rule base किया था, right, हमारा डिकॉन्स, उसको भी मैं क्या करता हूँ अभी डिफॉल्ट कर देता हूँ, राइट? सो स्टेजिंग, क्योंकि हमने वो पैकेजिंग के ऊपर मेंटेन किया था, राइट? आई एम नॉट श्योर कौन सा पैकेजिंग था. आई विल जस्ट अनटिक दिस वन, इट्स लाइक फिक्स वन. Okay, now we need to create the packaging specification. Okay, so for that /n/SEWM/backspace /SEWM/backspace. Okay, create 75. बैकस्पेस का हमारा कॉन्फ़िग नहीं है, मतलब ये पूरा क्रिएटेड नहीं है. नो इशू, विल क्रिएट मैन्युअल पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन जैसे हमने देखा था सबसे पहले. सो वी कैन यूज SAP इज अ स्टैंडर्ड वन. ओके, so we'll maintain this one condition record. So it will be, क्योंकि अभी हमने वो जो वैस रिलेवेंस था वहाँ पे हमने मेंटेन किया था 0VSI. Okay, so that's the reason we have to select this one only. Okay, then the product. So for that, what I will do, I will check WM PRDI. Okay, 647. And then vendor, this one. Okay, then okay, ये किसी ने तो मेंटेन करके रखा है, no problem. Target quantity 1. Now here we will have problem. We need to search with 7500. 7500 description. Okay, pack का नहीं है, so okay, let me create the backspace packaging specification group. Seven five zero zero. Standard one that we can use now. Oops, number range on this one. Okay, number range आ गया. Now we have to just add this label. Okay, target quantity 1, can maintain 100. Right, element group we need to create
In that, we can maintain the auxiliary material, right? So 500. Okay, this is now auxiliary material. Okay, work step में फिर हम वो maintain कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, right? Let's say now we'll just take a dummy work step. Okay. So, and then this for which products? Okay, so this for 647. Packaging specification is for 647. One pieces. Oh, each. Okay. Okay, so we'll check. So we'll go to the header and then again we'll maintain the condition 0VSI. Now product vendor. Okay, check. And no level. Level to है. Okay. Yeah, it's not required. Level type. Here we'll maintain this is an auxiliary packaging material. And then we'll activate. Okay, now we'll create an delivery. Slash O VL 31N. Okay, as one. Oh, हमने मेंटेन किया है किसका मटेरियल मे बी दिस रन ऑर्डर है ओके हमने 61 के लिए हमने क्रिएट किया है सो वी कैन डिलीट 46 okay and then we'll pack this $25 CB select pack right save it we'll check this delivery okay now we have maintained the VAS it should trigger automatically right VAS order so here you can see the VAS order display order for VAS right so this is also the checkpoint कि आपका VAS काम कर रहा है या नहीं कर रहा है right if it's blank it means we have some issue in the VAS triggering right मतलब so VAS trigger के लिए जैसे मैंने बताया pack space और VAS relevance mandatory है right so packaging specification जो हमने maintain किया है right that we can see and then VAS relevance की वजह से वो trigger हो जाए and this is a VAS order right you can display the packaging specification over here okay now the process the normal the next process is again the same we can do the good receipt जैसे हमने लास्ट टाइम किया था सेम मॉनिटर से हम चेक कर सकते हैं सो WM मॉनिटर non delivery document one delivery okay so we can create task from here create warehouse task okay you can
see the task, right? Waiting warehouse task. So one is unloading, right? So we'll confirm the unloading task. As soon as unloading is confirmed, first is task is created now, unloading to work center. So we'll also confirm this task, right? But still is in waiting, means there is some activity in work center, right? /n/SAWM/decons. Okay, then यहाँ पे WC10, right? And then where we have discussed, we can do the activity, or what is the delay? 2046. Okay, so we'll go back and I will enter the request number 46, so we can only see our particular delay, right? Then I will directly say H2 step complete. Okay, because I'm okay with the whatever the quantity, right? If we have different material, then yes, we'll create different boxes, right? with जो हमने दूसरे बॉक्स में पैक किया, let's say 68, तो वो डायरेक्ट पुट अवे हो जाएगा, और 67 it will move to the VAS work center. Okay, now go to the monitor again. Okay, we'll refresh. So now see, VAS से वर्क सेंटर का एक्टिविटी ट्रिगर हुआ है, राइट? वर्क सेंटर, sorry, work center to VAS, right? So we'll confirm this one. Okay, right? But here again you can see VAS जो बना है, लास्ट वाला जो टास्क क्रिएट हुआ है, VAS वर्क सेंटर टू फाइनल बिन, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, स्टिल इज इन वेटिंग वेयरहाउस टास्क बी. दैट मीन्स वी कैन नॉट कंफर्म, मीन्स अगेन जैसे क्योंकि हमने वर्क सेंटर क्रिएट किया है, देन वी नीड टू गो टू दी VAS वर्क सेंटर. सो VAS वर्क सेंटर का जो ट्रांजैक्शन है is altogether different. Okay, go to the work scheduling, value-added service, sorry, not this one, execution. This is the create confirmation for VAS. Okay, VAS EXEC, this is the transaction. Okay, now here we can search with the VAS order, or we can search with the request number, delivery number also. Then in the VAS there are different status. There are basically 4 status: not started, in process, completed with quantity deviation, without quantity deviation. Now the status is A to blank, right? So if I select A to B, then I can only see which is in A to B. If I select D, for example, okay, D to D, okay, or we'll say C to D, okay, C to D, and if I check, so see, sorry, VAS work center, it's this one. Okay, so I'm not getting any result because हमारा status क्या है फिलहाल A, right? So if you select A to B, जैसे ही B उसका मतलब status change हो जाएगा, तो सिस्टम हमें वो दिखाएगा नहीं, right? So that's the reason what we'll do, we'll go with the status A to D, मतलब जो कुछ है A to D के बीच में हमें सब दिखेगा. Even when we confirm the task, right, अंदर जाके फिर भी हम उसी स्क्रीन में रहेंगे. अगर हमने A to B कर दिया, जैसे हम टास्क कंफर्म कर देंगे, तो इसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा, तो स्ट्रीम हमें बाहर फेंक देगा. Okay, okay, still it's showing. That's strange. Okay, why? देखिए A उसका स्टेटस है input permitted specific selection for remove, but yeah इसका तो कुछ okay, it's really strange.
Yes, we have missed some setting. पैक स्पेस मेंटेन किया. इसमें वर्क सेंटर जैसा भी नहीं है कि जिसमें हमें ये मेंटेन करना है. ओके. VAS storage type VAS. H02. Maybe VAS is also fine then. Final step है. This is just in section. There is nothing to do with that. Also, there is nothing to layout also. Let's check once. So, VAS relevant सब ठीक है. Yeah, everything is there. Even ये भी है. Okay, VAS का B is fine. 7.5 change the data save दिखा रहा है. This is strange. VAS की ऑर्डर भी बनी है. वर्क सेंटर पे दिखा रहा है. लेआउट में तो कुछ चेंजेस है नहीं. यूएसए में मेंटेन किया है. उसका जैसे हमने इसका मेंटेन किया था वैसे भी नहीं है वर्क सेंटर जैसे जहाँ पे हमें मेंटेन करना है. टास्क ऑलरेडी बना हुआ है सो इट्स फाइन. VAS एंट्री क्यों नहीं दिखा रहा है. सब कुछ तो है. 647 भी है. उसकी वजह से पैक स्पेस ट्रिगर हुआ है. VAS ट्रिगर नहीं हो रहा है. VAS का वर्क सेंटर ओपन नहीं हो रहा है. इससे ने तो छेड़खानी की है.
बट या वैस ऑर्डर अगर इशू होता तो वैस ऑर्डर नहीं बननी चाहिए थी, वैस ऑर्डर तो बन रही है। create new one. Okay, इसमें भी है, let's check. Okay, you check with both without POSC and with PHC. मैंने डायरेक्ट with POSC किया है, right? Check without POSC, which is simple version. And then it will move to the work center. Okay, then work center में icons. Directly confirm. Then create for the VAS movement, work center to VAS. Okay, location. Okay, now we'll try VAS. It will be blank. Oh, center is VAS. Okay, I'm able to find order matching this selection. Okay, why? This. This is really strange. Let me check. VAS. Okay. बट ये अगर नहीं रहता तो वो पैक स्पेस ही क्रिएट नहीं कर पाता था, बट उसने तो पैक स्पेस क्रिएट किया है, सो इट्स फाइन। वर्क सेंटर क्यों नहीं दिखा रहा है? to check क्या इशू है। Okay, I will check and then maybe need to do the configuration again. Hello? Hello? Am I audible? Hello? Can you hear me? Yes, sir. Yeah, let me check. I don't know कि क्यों नहीं काम कर रहा है। Error आ रहा है सर। या कॉन्फ़िग तो सब बराबर है, सो
मेरे पास भी आंसर नहीं है. लेट मी चेक कि क्यों नहीं काम कर रहा है. ओके सर. And I will update for weekend. Okay, कैसे हम करेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग चल जाएगा ना सबको, I guess. At what time, sir? हाँ, हेलो. Okay, I will update. I will check this issue also. Okay, sir. Yeah, please practice and then yeah, अगर कुछ issue आता है let me know. Okay, we'll try to. I will Okay. try to resolve it as soon possible. And जो भी recording देख रहे, please join. So we'll discuss more, different topic. Okay, thank you for joining. I hope you enjoy the session. Okay, sir. Okay, sir. Yeah, thank you. Okay, okay, sir. Good night. Good night. I'm presenting my screen. Let me know once you see it. Okay, so now today's topic is EWM. So outbound delivery in EWM. Okay, हमने inbound delivery देखा. That inbound delivery का flow क्या रहता है normally? Hello. Purchase order inbound delivery, then enter inbound delivery, then put away. Which one? Enter inbound delivery. Inbound delivery, after we are doing maintain inbound delivery, create warehouse task, then that is put away. Okay. Or else we can say like not maintain. So purchase order. So in ERP side, purchase order, then ERP inbound delivery, right? PL31N, and then in EWM inbound delivery. Okay. And then again that dono inbound delivery only we need to change, like okay, in EWM is the inbound, in EWM inbound delivery. Okay, like this we have to say, and then put away. Outbound में is little bit different. So it's again start with sales order. Okay. Yes, sales order, then outbound delivery. This is an ERP system, right? Then okay, request, just ignore this one. So it is for embedded decentralized actually. So in EWM, it directly create outbound delivery order. Okay, sales order, outbound delivery, then outbound delivery order. Okay, then again that outbound delivery order, right? We'll do picking, packing, right? And then once we complete it, it will create outbound delivery. And then this outbound delivery, right, in EWM, will update the outbound delivery of ERP system for good issue. Okay. Okay, sir. Clear हो गया flow? Okay, okay. Only difference यहाँ पे compared to inbound. Inbound में inbound delivery, then again inbound delivery and put away. That's it, right? But यहाँ पे outbound delivery in ERP, then outbound delivery order, right? And then so अभी order क्यों है? This is also we called it as a warehouse request. Okay, so request है कि yes we need to picking and packing and this thing, right? तो जब picking packing किया जाता है वो किया जाता है for this, again this one outbound delivery order.
Okay, and then once we are okay, then we'll जब हम गुड इशू करेंगे, सिस्टम विल क्रिएट आउटबाउंड डिलीवरी इन EWM, एंड ये जो डॉक्यूमेंट होगा ये अपडेट करेगा ये वाले को आउटबाउंड डिलीवरी, क्योंकि जैसे हमने देखा था इनबाउंड में, राइट, गुड्स इन हो रहा था, तो सेम वे हियर आल्सो इट शुड ट्रिगर, राइट. Then now if you check, so transaction is very simple, SCWM PRDO. Just remove I and then O. Here you can see outbound delivery order and then outbound delivery. Right. Now to create order, the sales order, the transaction is VA01. Right. Happen. Okay. Then the order type. So ये actually ERP का, sorry, SD लोग create करते हैं. We don't need to do anything, right? Order type and this thing, just like a purchase order, right? वैसा ही है. So these are just standard setting. इसका सेल्स और क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, डिवीजन क्या है, राइट. 7 I will do show slash CWM slash monitor server 7500 SAP full stock, added a material number. Okay, so our material is mat1 and mat2, right? I will just copy this one. We'll just close this one. Recording chalu hai, right? Yeah. Okay, then here we have to enter the sales order, sorry, customer, right? So we can go with Tata 01. ये already मैंने create किया है, right? And then material, mat1 and mat2. Okay. Quantity 1 piece simply. The reference number, if you can anything, put test. Payment term 0001, you can go for it. Okay. mat2 is, oh sorry, ये number है अपना 647 and 46. Let's change it. Okay, 1 quantity. Then scroll a little bit. Amount, we can just go ahead with 1, right? Enter. Then double click on material. So हमें इसका लोकेशन वगैरह डालना है, ये मटेरियल कहाँ पे. Go to the shipping. Basically इसमें जब ऑर्डर क्रिएट करता है ये सब फेच हो जाता है, राइट. बट अभी SD वाले कोई है नहीं, सो विल डू इट मैन्युअली, राइट. द लोकेशन क्या है, अभी मटेरियल कहाँ पे अवेलेबल है, नॉट D, S पे, राइट. D we use for purchase order, so yes. And then shipping point in our case is also same, right? Okay, we need to maintain for second material also. See item number 10. Okay, just click over here for item number 20. For 20 के लिए भी हमें ये maintain करना है. So I'm going to show you the simplest way also, right? I know it's a little bit difficult to remember all these things, but ये एक standard है, so it's good to know कि कैसे create किया जाता है प्रोजेक्ट में. फिर आपको सब मालूम है कि कहाँ पे देखना है, right? Then we need to check कि कुछ और तो pending नहीं है, right? So for that what you can do, go here, right? And then sorry, edit में जाके incompletion log,
right? So जो अगर इनकम्प्लीट सिस्टम यहाँ पे दिखा देगा, then what we have to do, select all and complete data. जो वो बोल रहा है वो डायरेक्टली हमें मेंटेन करना है, राइट? जो कुछ सिस्टम में अवेलेबल है. सेंटर so location, info terms, okay, go for F4, okay, it's nothing. Test, okay, then next, net weight, can go for anything, 5 and this thing. Okay, you can see document is complete, right? So we can save it, or else you can click over here, document, sales document and deliver, right? इससे क्या होगा? It will open a new transaction directly, which is VL01N. Okay, I will give you then document flow in chat, VL01, then VL01N, and then EWM, that is /SEWM/PRDO. Okay, ये एक flow है. Then that is another flow which we are going to use on regular basis, NO, then /SEWM/PRDO. It's taking some time, बड़ा slow है. Okay, you can see order create हो गया and then screen outbound delivery हो गया, right? यहाँ पे हमें क्या देखना है, just scroll down and then just check the location. So location अगर होगा तभी हम delivery create कर पाएंगे, मतलब वो distribute हो जाएगा, right? If you remember जो हमारा first T code था, right? Delivery कैसे create होती है, right? और how it is distributed, तो उसका आंसर यहाँ पे है. Okay, so just need to check and then what we'll do, we'll save it. So again configuration अगर सब कुछ बराबर है, system will save and then it will distribute the delivery. Okay, you can see saved and distributed. Now, okay, I will copy this number. So we have only one delivery, so we can also go and check directly in PRDO, right? But you can also search, and then all other configuration जो हमने document type check किया था, right? It's same. Now you can see I'm not able to find any delivery number. Even if I remove it, okay, then the warehouse number is wrong. Let me change the warehouse. Okay, even though if I select, no any delivery, right? Let me check in SMQ2. So it's stuck in queue because of shipping point location. क्या error है? Shipping point location is not required for the field. Click over here, right? Shipping point, shipping office, right? Anyone remember कि ये चीज क्या है? सर हमने वो सबसे पहले मेंटेन करना रह गया था. आपने बोला था कि ये एरर आएगा आपको आउटबाउंड डिलीवरी के टाइम, तो हमने शिपिंग पॉइंट और शिपिंग ऑफिस और इनबाउंड डिलीवरी के लिए कुछ तो भी मेंटेन किया था, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है. ओके, और कहाँ पे करना है ये शिपिंग मेंटेन? पॉइंट मतलब जहाँ से इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में किया था ना सर, ड्यूरिंग असाइनमेंट डेफिनेशन. Enterprise structure. पॉइंट Sure is the डिफाइन में enterprise शिपिंग structure. शिपिंग Yes, पॉइंट में आपका ये तो बराबर है. So it's supply chain unit, right? ओके. Go to the main, मतलब log पे इसमें SAP menu में master data, right? Maintain supply chain unit, right? So our supply chain unit 750 and then 1008. You go to the change mode. यहाँ पे SO नहीं है, right? Shipping office नहीं है. That's why system not allow for outbound, right? So we'll go with shipping office. Save it. Now if you go back to the queue, right? Try to execute again. So okay, ये resolve हो गया. Okay. Now
We'll check. Right, quantity again is look like almost same, right? Document type you can check. I wanted to check later कि ये कैसे क्या क्या document type है, and I want answer from everyone. Okay, WhatsApp group में कि assignment कैसे जो हमने inbound में देखी थी, right? यहाँ पे आप देखिए PDO, OUTBA and item level. It's DLV and ODLV. Okay. Now अभी ये material ये order आया है, right? EWM में. Now we'll do picking. You can see the status. Outbound में, sorry, inbound में अलग था, right? Put away, good received, and then put away. यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? Picking. Okay. Then packing, loading, and then good issue. Okay. So picking. कैसे करना है? Select this. Again same warehouse task. Okay. Now strategy हमने maintain की नहीं है, right? अभी तक. So अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, so it will give me an error. Okay. So what we'll do now, we'll create manual task जैसे हमने outbound में किया था. Okay. Sorry, inbound में starting में किया था. So सबसे पहले मुझे बताइए कौन सा बीन मुझे लेना पड़ेगा, GR वाला या PL10 वाला, PL20 whatever. कौन सा बीन लेना चाहिए यहाँ पे? GR वाला नहीं सर ले सकते ना. पिकिंग के लिए जहाँ पे GR वाला है वही लेंगे, वहां से पिक होगा ना. वो अगर प्रोसेस होके किसी और बीन में जा रहा है तो उस बीन से GR में रॉ मटेरियल रहेगा ना. अगर उसमें वर्क सेंटर में कुछ काम हुआ है, फाइनल हुआ है, तब जाएगा, है ना. नो, GR हम क्यों लेंगे? क्योंकि GR में तो वो कौन सा मटेरियल है जो स्टेजिंग में पड़ा हुआ है. हाँ सर PL वाला लेंगे ना, PL वाला क्योंकि लेना, उसमें राइट? मटेरियल क्योंकि लोकेशन, ये स्टॉक टाइप भी देखिए F1 लोकेशन. है, हमने S डाला है, राइट? F2 चाहिए फिर. ओके, प्रैक्टिस चालू हो गई ये लगता है. ओके, सो विल गो विद दिस बिन, एनी बिन वी कैन टेक. ओके, we need to check material. So ये कौन सा मटेरियल है? 476 is this one. Okay. So इसको मैं क्लिक करता हूँ. स्टिल ये मुझे एरर दे रहा है, पैक ओपीटी डज नॉट एग्जिस्ट. ये बीन कहाँ से ले रहा है? कहाँ से, मतलब नहीं क्वेश्चन, मतलब जो हमने स्टोरेज बिन स्ट्रक्चर बनाया है और वो फिर हम असाइन करते हैं ना WPT नहीं, में. हाँ अभी हमने तो ये WPT में, राइट? तो ये WPT अभी जब हम पे आउटबाउंड करेंगे, यू कैन सी WPT 2010 इज डिफरेंट, राइट? हम अब तक 1010 6040 सॉरी कौन सा था 4060 वो चेक कर रहे थे, राइट? गो टू द SPRO. Okay, cross process setting, warehouse task, right? Cross process type, then sorry 7500 010, right? Stock removal, ये यहाँ से वो ले रहा है, which is wrong, right? Should not be packing, it should be staging, right? Means GI वाला, तो GI तो पहले बात तो है ही नहीं, right? Means we need to create that storage type, right? So we'll go and then create. What we can do, we can simply copy GR, just change the name to GI00, right? Because all the settings are same, right? Save it. Then we'll create one bin /TWM/LS01 GI zone. Okay, GI00. Save it.
Now go back to WPT. Okay. 10500 2100. Now again, why we are going to maintain in destination? GR में तो वो source में हम maintain कर रहे थे, right? यहाँ पे हम destination में क्यों maintain कर रहे हैं? You check 1010. यहाँ पे हमने destination में source में maintain किया है, right? But हमने 2010 को destination में maintain किया है. क्योंकि तो पिक तो वहां से करेगा ना, पिकिंग प्रोसेस है ना, फाइनल डेस्टिनेशन पे रहेगा ना मटेरियल, जो अभी जहाँ पे है वेयर हाउस में, वहां से सीधा फिर कस्टमर को जाए. Yes, or else we can say कि टूटा हुए करते वक्त डेस्टिनेशन में हम मटेरियल रखेंगे तो ये सोर्स होगा, जब अनलोडिंग होगा यहाँ पे सोर्स होगा, राइट? बट जब हम पिकिंग करेंगे, राइट, पिकिंग में डेस्टिनेशन सोर्स क्या होगा? जहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है जिस बीन में, राइट, वो होगा आपका सोर्स. और डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे जाके रखना है, क्योंकि हम मटेरियल डिस्पैच करने वाले हैं, राइट? हेलो यस सर, यस. सचिन, क्लियर है? सचिन ड्रॉप हो गए. सचिन लेफ्ट हो गया. क्या जिस अशोक और संतोष? संतोष just joined. संतोष, ओके ओके, राइट. सो अपोजिट है प्रोसेस. तो उसके वजह से जो हम सोर्स में कर रहे हैं, अभी सोर्स कब लगेगा? जब हमें आगे प्रोसेस मूव ऑन कर रहे हैं, पुट अवे करना है, राइट? बट अभी हम सोर्स क्या होगा? जहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है, रैक, पैलेट, व्हाटएवर, वहां से हम यहाँ पे लेके जाएंगे, राइट? सो आई विल जस्ट सेव इट. यू कैन सी category is also 2 and activity is pick. Okay, now check. Now I will just go back. See the pin. Okay, task create हो गया. And again for the second one, now mat 1 का हमें material देखना है, bin देखना है. So it's this one. You simply just copy and then for mat 1 also we'll save it. Okay, task create हो गया. We are okay with the task. Create plus save, right? ये task create हो गया अभी, right? Picking, someone need to go and pick the material. When the picking is done, right, then again they can confirm the task, right? Then we'll confirm, save, and confirm plus save. Okay, now go back. Now so अभी देखिए इसका पिकिंग हो गया, राइट? इफ यू गो इन आउटबाउंड डिलीवरी अभी तक क्रिएट नहीं हुए, मतलब ये फिक्स नहीं कि डिस्पैच होगा, राइट? ऐसे कभी कभी हो जाता है कि विल पिक एंड देन लेटर विल डिस्पैच. ये इज वेरी लाइक यू कैन से द कॉमन सिनेरियो, राइट? नाउ right, so we can create outbound delivery, right? And then we can good issue. But if you click directly over here good issue, right, हमने खाली picking किया और good issue कर दिया, right? So now if you check for this one, the outbound delivery is created. Okay, इसका डॉक्यूमेंट नंबर देखिए अलग है, राइट? और ये डॉक्यूमेंट, ये जो आउटबाउंड डिलीवरी है, राइट, इट विल, दिस डॉक्यूमेंट विल अपडेट योर ERP डिलीवरी. Now if you go to the VL03 and check the document flow, if there is no any error, it will complete. Now it's an error, so must be some issue. So let's check क्या है क्यू में, SMQ2 में जाके. Yeah, some queue is there. Oops, what is this?
System slow था शायद से. Let's see now. Yeah, is updated. Okay, but status is in process because of invoice. Invoice अभी तक create नहीं है, so end-to-end flow invoice. So VF01 is the transaction to create invoice is not our task, right? For that is again depend कि कैसे invoice create हो जाता है. अभी now in India is like GST invoice, right? So online GST invoice create हो जाता है. There are some tools, but yeah, I just want to show you the end-to-end process. So ऐसे वो invoice create करेंगे, press enter, it will check the finance entry. राइट, वो मटेरियल मास्टर में जो कुछ मेंटेन किया है, देन फाइनेंस का जो कुछ सेटअप है, जस्ट प्रेस एंटर. Okay, and then once you save it will create invoice. या इसमें कुछ एरर आता है, यू कैन जस्ट चेक फॉर वंस, राइट. पर ये अगर कुछ एरर वगैरह आता है तो देन छोड़ दीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज इट्स ऑल टुगेदर फाइनेंस. यहाँ पे हमारा कुछ रोल है ही नहीं. Okay, now if you check status, you can see okay, invoice is open, is fine, but status अभी completed है, राइट. इट इज सिंपल फ्लो, राइट. हमने मटेरियल पिक किया और डिस्पैच कर दिया, राइट. और ये अपडेट कब होगा, जब हम गुड इशू करेंगे तभी ये अपडेट होगा, राइट. नाउ मैंने मैसेज में और एक फ्लो डाला है VL01N, राइट. सो ऐसा नहीं है कि हमें VA मतलब ऑर्डर ही क्रिएट करना है VA01, राइट. वी कैन डायरेक्ट क्रिएट अ डिलीवरी विच इज कॉल्ड विदाउट रेफरेंस. सो इफ यू गो टू द ट्रांजैक्शन इवन VL01N, राइट, यहाँ पे अगर आपने ऑर्डर क्रिएट किया तो आप यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाल सकते हैं. अदरवाइज यू कैन सी ओवर हियर विदाउट ऑर्डर रेफरेंस. तो क्लिक ओवर हियर एंड देन इन दैट केस द डिलीवरी टाइप इज LO. तो आपको दोनों का देखना है, LF और LO का दोनों का आपको असाइनमेंट देखना है, स्टैंडर्ड, राइट. और मुझे वो भेजना है कि कैसे उसका असाइनमेंट हुआ है, जैसे हमने इनबाउंड का देखा था, राइट. सो ये कब यूज किया जाता है, कभी किसी कस्टमर को लेट से सैंपल प्रोडक्ट देना है, राइट. तो उस केस में ये मेथड यूज किया जाता है. एंड we can use this method because again we don't care कि ऑर्डर कौन सा है, because हमें खाली डिस्पैच करना है. ओके, मटेरियल हमें EWM के अंदर देखना है कि कैसे प्रोसेस हम करते हैं. वी डोंट हमको ये मतलब नहीं कि ऑर्डर कैसे बना है. ओके, प्रेस एंटर. यहाँ पे अगेन सेम इंफॉर्मेशन, कस्टमर, प्लान GI डेट, जस्ट गो विथ सम फ्यूचर डेट, एनीथिंग लाइक फेप, राइट. देन मटेरियल, okay, 46 and 47. Okay. Quantity again one piece will go. Okay. Now it is mandatory to maintain the location and plant, right? If you don't maintain, what will happen? I will show you. So it just created, right? ये EWM में गया ही नहीं है. If you check in change mode, see we can change it, right? Why? Because दोनों maintain नहीं किया, and then that the reason system is not able to determine the warehouse. दोनों maintain करना mandatory. If you just maintain, for example, plant, when if you save it, still it will not work. See, it's only save. तो हमें लोकेशन भी मेंटेन करना है. ओके, सेव इट. ओके, तभी जाके वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. नाउ हम एक चीज करेंगे और एक, क्योंकि गो टू द आउटबाउंड डिलीवरी ऑर्डर, ऑलवेज चेक कि आप कहाँ पे क्लिक कर रहे हो, आउटबाउंड डिलीवरी ऑर्डर है या आउटबाउंड डिलीवरी है. ओके, अगेन आई विल पिक द मटेरियल. नाउ वी नीड टू चेक द बीन बिकॉज अभी स्टॉक नॉट श्योर कहाँ पे है. सो कम ओवर हियर,
रिफ्रेश, क्योंकि स्टॉक कम हो चुका है, राइट। तो ये डीसी में पड़ा है, टू, और ये भी यहाँ पे है। सो व्हाट विल डू, हमारे पास दूसरा स्टॉक भी है, जीआर में भी बहुत कुछ है। ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल टेक इट लेटर। सो आई विल गो विथ दिस LS10। ओके, अगेन डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, कंफर्म, प्लस सेव, राइट। मैं अभी टास्क मैंने क्रिएट किया है, राइट। मैं कंफर्म करता हूँ। ओके, एंड देन कंफर्म हो गया, गो बैक, यू कैन सी द स्टेटस। बट मैंने क्या बताया, जब आप गुड इशू करोगे तभी अपडेट होगा, राइट। अगर मैं चेक करता हूँ अभी डिलीवरी, PL03N, सी देयर इज नो एनी कंफर्मेशन। ओके, बिकॉज आप हमने अभी तक गुड इशू किया नहीं है। वो जब गुड इशू होगा तभी जाके वो अपडेट होगा ना। और एक सिंपल सिनेरियो, अगर ये मुझे पैक करना है, राइट। लास्ट केस में हमने डायरेक्ट गुड इशू करके उसको डिस्पैच कर दिया था, गुड इशू कर दिया था। बट अब अभी पैक करना है, राइट। मैनुअल पैकिंग भी हम कर सकते हैं। गो हियर, राइट, यू कैन सी पैक ऑप्शन, इट इज कॉल्ड मैनुअल पैकिंग, राइट। नेसेसरी नहीं है, इफ नॉट देन यू विल डायरेक्टली गुड इशू, बट पीओसी से हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे अभी हमें पैकेजिंग मटेरियल डालना है। सो वी नीड टू सर्च हमारा पैकेजिंग मटेरियल का डिस्क्रिप्शन 7500 CB and palette. So we'll go with box, for example, 2 box, right? And then we are going to pack in GI zone. Okay, execute. So 2 pack box create हो गए, and then again you can drag and drop like this. Okay. Okay, so it's giving me some error. No process exists. Process type exit, no repacking possible. Right. So if you remember, सबसे initial में हमने देखा था, if you go back, okay, master data default value करके एक चीज थी, right? Go to the warehouse number, right? If you check 0001, so यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, right? So is there any on the warehouse? Yeah, so let's check for our warehouse. So 7500. So एक default, क्योंकि मैंने जो बताया, right? If you want to do anything, right? So WPT is mandatory, right? So you can see repack WPT, right? So here we'll maintain repack WPT, which is 3040, right? Save it. If you want to execute manual packing, okay, now go back and then check. Okay, it still not work, then go back again. We need to refresh the transaction. Now if you check, again हमें वो box create करने पड़ेंगे. क्या है? Zone. We will check, ये हमारी है, yes 75. Now we can do repacking. See, हो गया अभी, right? ये इसमें हो गया, और ये मटेरियल मैं इसको ड्रैग एंड यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ. Okay, and then save it. Okay, now if you go back, you check HU, आपको HU दिखेगा. And then again if you select and then you know जैसे हमने देखा था last time, इसमें क्या पैक है हम वो देख सकते हैं. Okay, and then again you can trigger good issue one by one, or if you click over here it will complete a header. You can see the status now, picking, packaging, and now as soon as when you complete the good issue also, right, ये भी हो गया, and then same information will update here also. It's a little bit slow today, और as usual normally जैसे slow होता है. It show information and is come in process, but yeah, it's completed. Clear? मतलब हमने अभी पैकिंग किया ना सर, पैकिंग करके गुड्स इशू किया ना, Yes, yes. पहले नहीं किया था.
ओके सर। एग्जैक्टली मैनुअल पैकिंग किया। क्लियर? यस सर। नाउ जो हमने अभी किया, राइट, स्पेशली जो बीन का जो हमने किया, राइट, बीन हमने मैन्युअली मेंटेन किया। आई विल अगेन क्रिएट वन न्यू डिलीवरी अगेन विथ NO विदाउट रेफरेंस। एक ही ऑर्डर आप क्रिएट करना विद रेफरेंस एंड देन रिमेनिंग जस्ट क्रिएट विदाउट रेफरेंस। जस्ट टू सेव टाइम, बिकॉज ऑर्डर में कुछ एरर भी आ सकते हैं। सो जो मैंने अभी किया, राइट, वो तो मैं हर टाइम नहीं कर सकता, राइट। मैन्युअली बीन तो मैं डाल नहीं सकता एवरी टाइम, राइट। हर टाइम में तो जाके स्टॉक चेक करूँगा नहीं, राइट, वन बाय वन, राइट, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग। और मतलब प्रैक्टिस करते वक्त तो कर सकते हैं बट रियल टाइम में तो नहीं कर सकते, राइट। सो अगेन वी हैव स्टॉक रिमूवल स्ट्रेटेजी। जैसे पुट अवे स्ट्रेटेजी थी वैसे स्टॉक रिमूवल स्ट्रेटेजी। अगेन कंसेप्ट इज सेम। इफ यू go to the issue process, okay, strategy, okay, अगेन रूल। सो वहाँ पे कुछ रूल रहते हैं, राइट। कंपनी में जब मटेरियल डिस्पैच किया जाता है तो कुछ स्पेसिफिक रूल रहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। जो मटेरियल फर्स्ट आया वही फर्स्ट जाएगा, और जो लास्ट अभी रिसेंटली आया वो फर्स्ट जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। नॉर्मली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज किया जाता है, राइट। जैसे आपने इसमें देखा होगा डी मार्ट में, राइट। ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जो पहले आए वही पहले जाते हैं, राइट, लाइक दैट। सो 7.5, so we can see, so FIFA and LIFO is already created. अभी सिस्टम को कैसे पता फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही होना चाहिए, राइट। इफ यू सिलेक्ट दिस एंड इफ यू चेक दिस रूल, राइट, सो यहाँ पे दो चीजें हैं, राइट। यहाँ पे सॉरी टू टाइप्स ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वन विच ओनली कैप्चर डेट, सॉरी विच ओनली कैप्चर द डेट, एंड सेकेंड टाइम ऑल्सो। अभी एक मटेरियल है वो सुबह भी आया शाम भी आया है, राइट। और कंपनी को स्पेसिफिक चाहिए जो सुबह आया वही पहले जाना चाहिए। इन दैट केस विल सिलेक्ट दिस वन, okay, v date q, okay, and then for LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट के केस में अगर आप देखोगे उन्होंने कैसे मेंटेन किया है, सो ओनली इज अगेन सेम, बट यहाँ पे टिक है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो अपोजिट में चलेगा। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ जैसे हमने स्टोरेज टाइप मेंटेन किए थे, राइट, पुटावे के वक्त, तो यहाँ पर भी हमें सर्च सीक्वेंस मेंटेन करना है। अगर आपने इनबाउंड किया है तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट delete this one all, okay, save it in inventory. So 7500, so FIFO, और एक मैं मेंटेन करता हूँ LIFO के लिए, ओके। देन सिलेक्ट दिस एंड यहाँ पर मैं सीक्वेंस डालता हूँ स्टोरेज टाइप का। मीन्स फर्स्ट इट नीड टू चेक, लेट्स से इन पैलेट 10, then pallet 20 for example, then rack 10 and then rack 20। ये उसने सीक्वेंस चेक करना चाहिए, राइट। पहले पैलेट में देखेगा, देन पैलेट 20 में देखेगा रैक, एंड देन लाइक दिस, ओके, विल सेव इट। नाउ सेम वी नीड टू मेंटेन फॉर LIFO also. Again we'll go with random or like opposite, pallet 10 and then pallet 20, okay, save it। मतलब जो LIFO देखेगा ना वो सबसे पहले रैक में देखेगा, रैक, फिर यहाँ पे अगर मटेरियल नहीं है फिर वो रैक 10 में देखेगा, फिर पैलेट में देखेगा, लाइक दिस, राइट। अभी इसका डिटर्मिनेशन जो है ये भी WPT के ऊपर ही काम करता है,
बट अभी फीफो और लिफो अलग अलग है, राइट, और डब्ल्यूपी डिटर्मिनेशन एक ही है. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो विद द इंडिकेटर, जैसे हमने इनबाउंड में देखा था. ओके, तो यहाँ पे वी कैन सिंपली क्रिएट टू इंडिकेटर, is already there, so we'll just delete new entry 7500 again FIFO, FIFO, and then FO LIFO. Okay, save it. FIFO and LIFO. Okay. Now determination, right? जो हमने search sequence देखा था, right? Determination of search sequence. So go here again. Same config है. थोड़े से changes है खाली, inbound की जगह पे outbound है. So what I will do, I will just delete now. Save it. Okay, new entry. So 7500, right? अभी removal indicator, right? So whenever is FIFO with WPT 2010, right? यहाँ पे हमें search sequence maintain करना है, that it should go FIFO and then the stock removal rule जो हमने maintain किया अभी, right? वो, right? Combination 1, combination 2, if it's LIFO indicator with WPT 2010 means हम एक ही WPT के कर दो अलग अलग trigger कर सकते हैं. So sequence should be LIFO and also the rule should be LIFO, right? Again, like put away, we have maintained two combination, so we have to give the what access strategy, मतलब उसको हमें sequence देना पड़ेगा, right? So 750, so see, it should give the priority with both removal indicator and pro WPT, right? We'll save it. Now we'll go to the mat one to maintain. Okay, so 6. We go here. क्योंकि WPT में प्रॉब्लम क्या है, एक ही इंडिकेटर, राइट? यहाँ पे ऐसा कुछ इनबाउंड आउटबाउंड का अलग है नहीं, राइट? अगर मैं इनबाउंड का करूंगा तो आउटबाउंड कैसे डिटर्मिनेशन होगा, राइट? सो दैट्स व्हाई इंडिकेटर के साथ हम कर सकते हैं, राइट? जैसे हमने इनबाउंड में देखा था, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं. सो मैट 1 के लिए व्हाट विल डू, विल मेंटेन FIFO. ओके, सेव इट. देन मैट 2 के लिए व्हाट विल डू, विल मेंटेन LIFO. Okay, save it. Now if you go back here, and if I directly select and click on create, तो देखिए ये जा रहा है पैलेट 20 पे, राइट? सो मटेरियल इज 647. विल चेक 647, जस्ट रिफ्रेश 1. ओके, मैं यहाँ पे फिल्टर डाल देता हूँ 647. ओके, एंड देन यहाँ पर भी मैं स्टॉक टाइप डाल देता हूँ, और एल्स विल गो विथ सिंपली अवेलेबल स्टॉक. Again 647, stock type we are looking for F2. Right, and the GR date ये कौन सा है, मैट 2 है, मतलब ये लीफो में जाएगा, राइट? तो इसका देखिए इसमें है ही नहीं, रैक में मटेरियल ही नहीं है. और अगर मैं इसको डेट को ट्रैक करता हूँ, ओके, तो उसने कौन सा बीन लिया है, कैन चेक 200101. ओके, 200101, राइट? और उसमें भी फिर 3 है, उसने कौन सा लिया है, HU59. ओके, लास्ट वाला. वाई, बिकॉज उसका टाइम देखिए. ओके, ये अभी लेटेस्ट आया है, राइट? क्लियर यहाँ तक? सर हमने ये FIFO के लिए मेंटेन किया था ना? नो नो नो, मैट 2 है ना, लिफो है.
ओके ओके लीफो है, इसलिए वो मटेरियल, यस जो मटेरियल लास्ट आया आएगा, है वो मटेरियल पहले मेंटेन हो। यस। अभी ओके यहाँ पे एक इशू देखिए, ये क्या कर रहा है पैलेट, बट हमारे पास इसमें भी मटेरियल है राइट, LS10 में, या बट उसका डेट मैच नहीं कर रहा है राइट, या दिस वन। अगर ये मटेरियल रैक में होता तो हमने जो सीक्वेंस मेंटेन किया, सिस्टम ऑलवेज गो विद द सीक्वेंस, मींस कौन सा वाला, स्टोरेज टाइप वाला, पैलेट, रैक, PL10 PL20, वही सीक्वेंस में जाके वो चेक करेगा राइट। नाउ इफ यू चेक फॉर अदर मटेरियल, मैट वन जिसमें हमने फीफो मेंटेन किया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो कहाँ से लेते हैं हम देखते हैं मटेरियल राइट, वो ले रहा है rack 0101, rack 10 0101. So what I will do, I will just remove this one, 48, it's 40, oh, 46 है एक्चुअली, इसका स्टॉक है नहीं, मैं बाद में स्टॉक इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, F2। ओके, तो ये रैक में ये मटेरियल राइट, और 21 में तो वो 21 में जा रहा है राइट, 21 से ले रहा है, even though we have maintained LS10, so still you know it will take rack as per the sequence. Okay, it will take as per the sequence only. Okay, T4 क्लियर है यहाँ तक, इजी। हेलो, ये रैक वन में सर फीफो के थ्रू हुआ ना, मैट वन का है ना ये? यस मैट वन है ये, मैट Yes, वन, yes. इसके से वो ये वाला बीन दे रहा है, सेम ही वो जो सेम ही इसमें अलग अलग मटेरियल है, सॉरी सेम ही रैक में स्टोरेज में मटेरियल है, बट अलग अलग डेट के साथ है। सिर्फ सीक्वेंस फॉलो करेगा वो। यस, वो क्या करेगा, रैक वो पहले जाके रैक में देखेगा, अगर रैक में मटेरियल नहीं है, मतलब जो फीफो जो डेट लगाएगा ना, वो रैक के हिसाब से लगाएगा, स्टोरेज टाइप के हिसाब से लगेगा राइट। इट विल नॉट चेक एट अ वेयरहाउस लेवल, इट विल चेक एट द स्टोरेज टाइप लेवल। मतलब Okay. वो पहले आरके में जाकर जाएगा, वहां पे देखेगा कौन सा है राइट। व्हाट मतलब मुझे क्या बोलना है यहाँ पे, मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ इसमें इशू क्या है ये वाले फीफो और लिफो में। ओके, फॉर एग्जांपल ये दो स्टोरेज टाइप है अलग अलग, ओके ये और ये, और सेम मटेरियल, ये सेम मटेरियल है और ये भी सेम मटेरियल है। तो हमने सीक्वेंस क्या मेंटेन किया, लेट्स से ये फर्स्ट और ये सेकंड राइट। तो सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पे जो लेटेस्ट जो फीफो है, जो कुछ उसने हमने जो रूल मेंटेन किया है, फीफो या लिफो वॉट एवर राइट, तो वो यहाँ पे आके देखेगा कि कौन सा ओल्ड मटेरियल है। अगर इवन दो मटेरियल जो एक्चुअली आया वो सबसे पहले ये वाला आया है और बाद में यहाँ पे आया, बट वो सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर देखेगा। ओके ओके, यहाँ पे नहीं देखेगा क्योंकि हमने सीक्वेंस क्या रखा है, ये वाला ये वाला रैक रखा है। एंड देन रैक 20, क्योंकि उसको बताया गया है कि यहाँ पे देखना जो सीक्वेंस जो फीफो है ना, वो स्टोरेज टाइप के हिसाब से देखना, नॉट कि सबका देखना। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ ये एक्चुअली रॉन्ग मैसेज प्रोसेस है राइट, क्योंकि जो फीफो और लिफो किया जाता है राइट, ये स्टोरेज टाइप पे मेंटेन नहीं किया जाता, वो वेयरहाउस लेवल पे मेंटेन किया जाएगा राइट। कि अगर ये मटेरियल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो सिस्टम ने सबका स्टोरेज मतलब सब देखना चाहिए राइट। सब जितने भी स्टोरेज टाइप है वो देख के उसने डिटरमाइन करना चाहिए बिन राइट। यस सर। तो उस केस में व्हाट वी हैव टू डू, सो वी हैव टू इम्प्लीमेंट व्हिच इज कॉल्ड स्टैग्नेंट फीफो राइट। स्टैग्नेंट फीफो हमें वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा राइट। इट्स अगेन वेरी सिंपल। तो ये स्ट्रेटजी हम रहने देते हैं, इस विल नॉट डिलीट दिस वन। फॉर स्टैग्नेंट फीफो गो टू द मास्टर डेटा, ओके हियर यू कैन सी डिफाइन स्टोरेज टाइप ग्रुप, हमें एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा राइट। न्यू एंट्री, सो फॉर एग्जांपल
7500 FIFO, right? FIFO, ओके। रूल यहाँ पे हमें वो अगेन मेंटेन करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट, या लास्ट इन फर्स्ट आउट वो, और हम पुटावे के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ओके। एंटर, सेव इट। नाउ इसको हमें क्या करना है, इसको हमें अगेन स्टोरेज टाइप डिफाइन असाइन करने, जितने भी हमारे स्टोरेज टाइप है, ओके। न्यू एंट्री, देन 7500, यहाँ पे देखिए सीक्वेंस का नाम है ही नहीं, राइट। पहले 10 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ऐसा 1 2 सीक्वेंस कुछ है नहीं, राइट। पहले 20, या अगर मैं यहाँ पे उल्टा करता हूँ, LS10, ओके, रैक 10, बट या यहाँ पे हमें वो देना पड़ेगा तभी जाके वो काम करेगा। अगर यहाँ पे वो स्टोरेज टाइप ही नहीं है, देन ऑब्वियसली इट विल नॉट वर्क। LS हो गया, रैक हो गया, पैलेट 10T हो गया, व्हाट एल्स, HU10, लिफो को देन अपोजिट, ओके। पैलेट 10, पैलेट 20, रैक रह गया, रैक 20, ओके, सेव इट। क्लियर। मैंने पहले ग्रुप क्रिएट किया, उस ग्रुप को मैंने स्टोरेज टाइप असाइन कर दिया सभी, ओके। नाउ व्हाट आई विल डू, अभी वो स्ट्रेटजी डिटरमाइन नहीं होनी चाहिए, सो आई विल गो टू द गुड इश्यू प्रोसेस, ओके। जो ऑप्टिमाइज जो है उसको मैं अनटिक कर देता हूँ। हमने देखा है, राइट, अगर हम वो अनटिक कर दे या डिलीट कर दे, then system will not able to trigger strategy, right। मतलब मैंने एक टाइप स्ट्रेटजी निकाल दी है, राइट। नाउ आई विल गो अगेन, नॉट सेव इट, select, okay, it's not able to determine the bin, okay, because strategy नहीं है, okay। दोनों केस में सोर्स बिन उसको नहीं मिल रहा है, बिकॉज नॉट एबल टू डिटरमाइन दी बिन, ओके। नाउ ये डिलीट हो गया, राइट। OTT, WPT, 7500 2010, stock removal, okay, to create the group, so go to the good issue process, strategy, storage type search sequence, termination group, so 7500, CG, for example, we just give the name, seven five zero zero. 10, for example. Sorry.
कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ. So I'm missing something. Yeah. उसको this is again different one. That's एक एंट्री है. डेफिनेशन ग्रुप तो ये तो अलग है. ये वाला तो नहीं है. Oh, yes. If you go to the strategy 7.0, okay, not search. हाँ, एक असाइनमेंट है, मुझे याद नहीं आ रहा है. टाइप यहाँ पे तो नहीं करते असाइन. डिटर्मिनेशन ओके. नॉट एबल टू रिकॉल कहाँ पे हम मेंटेन करते हैं. ओके, लेट मी चेक. याद नहीं आ रहा है. असाइनमेंट एक रह रही है. should work actually. टिक बिक तो कुछ है नहीं ऐसे. Group assignment, then creation.
बराबर है, इसमें भी कुछ है नहीं। Nothing to do with this one. कहाँ पे है? So ऐसे तो कुछ assignment. Okay, let me check this one. Will update you. Yeah, we'll check. Okay. Hello. ओके सर। Okay. Then we'll stop here. Next topic में ये मैं clear करता हूँ, and then we'll start with a new process which is POSC in outbound. Okay. ओके सर। ओके सर। Yeah. Okay. Thank you. Bye bye. Good night. ओके सर, बाय, गुड नाइट। बस मतलब जब अपॉर्चुनिटी मिली So तब। कैसे है ना, इनबाउंड थोड़े से आसान है प्रोसेस, ओके, ओके, कंपैरेटिवली आउटबाउंड। आउटबाउंड में बहुत कुछ चीजें अभी जो हम देखेंगे उसमें आने कॉम्प्लेक्स वाली है। ज्यादा है। यस, कॉम्प्लेक्स ज्यादा है। मतलब कैसा है ना, वहां पे क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत स्कोप है ओके, इंटरव्यू को, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। अगर आप एक आंसर दोगे तो वो दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है यू कैन से 1 to 5 है। मतलब ओके। एक सिनार के ऊपर वो 5 क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ओके, एंड और अबाउट, 5 डिफरेंट तरीके से वो प्रोसेस चेंज हो सकता है। हाँ, इनबाउंड में स्ट्रेटेजी, पीयूएससी, एचयू, पैकस्पेस, ज्यादा इतना ही है, और एबिलिटी ग्रुप। ओके। और इसमें एबिलिटी ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर आपका पूरा, मतलब पूरा का पूरा वेयरहाउस ही उसी के ऊपर है डिपेंड। ओके, तो मतलब ये जो इनबाउंड का जो आपने बताया, इस पे कितने साल का एक्सपीरियंस हम दिखा सकते हैं कि सपोर्ट के लिए काम किया है? तो या कैन शो अप टू 2 year of experience. 2 years। Yes. ये 50% 2 years के लिए सफिशिएंट है? मतलब इंटरव्यू पे डिपेंड करता है सब कुछ, बट स्टिल। इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है, यस। हाँ, या क्योंकि मैंने ना 1-2 दिन पहले बहुत सर्च किया कि हम्म ईडब्ल्यूएम कैसा रहेगा आगे जाके। तो हम्म ये मे बी बाकी का इतना कुछ प्रेफरेंस आया नहीं जितना ईडब्ल्यूएम आगे जाके मिलने वाला है ग्रोथ। मतलब समझे नहीं। अभी फिलहाल तो डिमांड में था एमएमपीपी, राइट? हम्म हाँ, तो सेम एज ईडब्ल्यूएम रहेगा आगे जाके। आ लाइक कैसा है ना, एमएमपीपी अगर आप देखोगे इज डिफरेंट, राइट? सो दिस इज दैट वी आल्सो कॉल्ड कोर मॉड्यूल। यस। ओके, विदाउट एमएमपीपी, पीपी तो ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्शन होगा वहीं पे होगा, राइट? बट एमएम तो कंपैरेटिवली पॉसिबल एमएम, नहीं है कि। एमएम तो एमएम, एसडी और एफआई, ये तो कोर मॉड्यूल है। ओके, यस। डजंट मैटर आप क्या कर रहे हो, आपको कुछ लेके कुछ खरीदोगे, खरीद के बेची कोई, इट डजंट मैटर प्रोडक्ट है या सर्विस है। अच्छा। ओके, सो कैसा है ना, वो अलग चीज है। ईडब्ल्यूएम वेराज जो बड़े वेयर हाउस होते हैं, बड़ी कंपनियां होती है, राइट, उसके लिए है मोस्टली। बट फ्यूचर ग्रोथ चाहिए, ये कहना था। अगर एमएम को या तो कहीं पे भी। ईडब्ल्यूएम में तो फ्यूचर ग्रोथ है, हाँ, वही वही डाउट अबाउट इट। वही कहना था, क्योंकि एमएम को तो कहीं पे भी डाल दो, सर्वाइव कर ही जाता है। यस, ये आउट ऑफ इंडिया कैसा रहेगा? मतलब। अच्छा स्कोप है, बट आउट ओके। ऑफ इंडिया में कैसा है ना, देन वहाँ पे ये भी चीजें आती है कि यस, जर्मन लैंग्वेज फॉर एग्जांपल, अगर आप जर्मनी अभी बहुत लोग प्रेफर कर रहे हम्म। हैं क्योंकि वहाँ पे वो नजदीक भी है, पेमेंट भी अच्छा है, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है, ऐसा। तो बट वहाँ पे कैसा है ना, उन कंपनियों को फिर बी वन तक चाहिए, A2 तक लैंग्वेज का। लैंग्वेज। यस। अच्छा। किधर गए बाकी के लोग? बाकी के लोग में भी नहीं हो गया ज्वाइन।
प्रॉब्लम ऐसा है ना कि लाइक यू स्टार्टिंग मतलब बहुत टाइम के बाद तो अभी ऑलरेडी हाँ ना। आउटबाउंड में कैसा है ना, कुछ डिपेंडेंसी है इनबाउंड के ऊपर, मतलब कुछ प्रोसेस ओके ऑलरेडी हमने इनबाउंड में डिस्कस किए हुए हैं, तो वो ऐसा ना हो कि आप ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा ये हो जाएगा, राइट। चेक वन ग्रुप में एक मैसेज डालता हूँ। तो जो आने वाले हैं वो तो अवेलेबल ही नहीं है कोई। ओके एक और 5 मिनट रुक 5 जाते। मिनट रखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, यही होते आ रहा है, राइट, कि हाँ लोग आते नहीं है कोई, और देन वी हैव टू कैंसिल करना पड़ रहा है। तो वो अभी हार अरे हम नहीं कर सकते एवरी टाइम, बिकॉज अकाउंट हैज बीन डिसेबल। ओह माय गॉड। अभी ये जो सर्वर है ये एक मंथ के लिए वैलिड है, राइट? हाँ मोस्टली देखा जाए तो। हाँ, तो इसके बाद इसके बाद मतलब I can share you in some contact number. You can directly check with them for the server. यस, बट ये कॉन्फ़िगरेशन तो ये सर्वर पे बनेगा ना, जितना हाँ भी सेम कॉन्फ़िगरेशन। सर्वर ही, सेम वन। हाँ, बट वही सेम चीजें दूसरे सर्वर पे नहीं रहेगी ना? नहीं मतलब सेम ही सर्वर, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ओके, जो सर्वर प्रोवाइडर है ये जिन्होंने दिया है उनका नंबर मिलेगा हमें परचेस करने के लिए। यस। ओके नीली जी, हम्म। आपको कुछ एमएम का और पीपी का कुछ पता है कि हम बॉम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? मतलब जितना भी हमने बॉम अपलोड किया हुआ है, बिल ऑफ मटेरियल्स, हम्म। तो वो फाइल वन टाइम डाउनलोड हो सकती है जितने भी अपलोड किए हुए हैं उतना? डाउनलोड का तो नहीं पता। यू कैन चेक विथ क्या इनका नाम, हमारे क्लास में है ना एक, क्या उनका नाम है, रोहित, मोहित कैन चेक विथ मोहित मोहित। यस एमएम में काम करते हैं क्या? यस नेम कंसल्टेंट। क्योंकि ना हम जहाँ पे वर्क कर रहे हैं ना, तो हम्म उनसे बात की हमने, बट वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे कि नहीं डाउनलोड होता है एंड ऑल। हम्म। I can download check with them. Warehouse number. हाय अभिषेक सर। हाय। Can you see my screen? यस सर। Okay, let's start. So last time हमने एक टॉपिक देखा था, आउटबाउंड स्ट्रेटजी। So we have checked the outbound strategy. Okay, the outbound strategy is same as inbound strategy. Okay, so if you go to the good issue, so I will quickly check. So rule, so उसमें कैसे रहता है ना आउटबाउंड में ना,
कि हम जो मटेरियल डिस्पैच करते हैं, राइट, सो दैट वी डिस्पैच लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो लीफो, ऐसे डिस्पैच किए जाते हैं मटेरियल. ओके, so that is a stock removal rule, right? So 7500 तो FIFO और LIFO हमने किया था, राइट. ये था उसमें शॉर्ट सीक्वेंस मतलब डेट, तो हम टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम भी हम ले सकते हैं कंसिडरेशन में. ओके, तो मतलब अगर सुबह और शाम को आया, राइट, तो सुबह फर्स्ट आया है, so it will go first like this. सर एक्चुअली आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की? नहीं चालू की है? है. यस, ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है. so yeah. ओके, सो यहाँ पे वी कैन गो विथ टाइम एंड डेट, राइट. और फीफो और लिफो में एक ही डिफरेंस है, वहाँ पे एक टिक है, राइट, दिस वन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट. तो वो मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चेक करेगा ओनली दिस. ओके, देन टू गो टू दिस सीक्वेंस, यहाँ पे फिर से सीक्वेंस हमें मेंटेन करना है. ओके, अभी यहाँ पे जो सीक्वेंस है मैंने वो चेंज किया है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, ठीक है. सो मतलब वो पहले पैलेट में जाके देखेगा. ओके, पैलेट में वो लेट से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट देखेगा वो सेम मटेरियल. अगर वो मटेरियल पैलेट में PL10 में नहीं है, देन इट विल गो फॉर PL20 लाइक दिस, राइट. मतलब वो सबसे पहले पैलेट 10 में देखेगा, राइट. एंड देन एट द एंड जो हमने डिटर्मिनेशन और रूल भी, इंडिकेटर भी हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट, जैसे हमने इनबाउंड के लिए देखा था. एंड देन वी कैन सेट अप दैट इंडिकेटर. एंड देन यहाँ पे वी कैन सेट अप डिटर्मिनेशन कि फीफो, राइट, जब भी इंडिकेटर फीफो होगा WPT 2010 होगी. सो दी स्टॉक स्टोरेज टाइप सर्च सीक्वेंस, उसके अंदर हमने जो भी स्टोरेज टाइप मेंटेन किए वो, एंड देन द रूल, राइट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लाइक दिस. एंड नाउ अगेन सेम एक्सेस स्ट्रेटजी, राइट, मतलब प्रायोरिटी किसको देना है, राइट. सो सिस्टम शुड गिव प्रायोरिटी फॉर इंडिकेटर एंड WPT लाइक दिस, राइट. इसमें इशू एक बड़ा इशू है, दैट इज जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम देखेगा, राइट, वो देखेगा एज पर स्टोरेज टाइप. ओके, मतलब फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है, वो यहाँ पर भी हर इसमें है. ओके, एंड देन कंसीडर वन रैक इज इक्वल टू वन स्टोरेज टाइप नंबर 1 2 3 4, राइट. और हमने सीक्वेंस भी ऐसा ही मेंटेन किया 1 2 3 4, राइट. बट एज पर पुट अवे, राइट, जो सबसे ओल्डेस्ट मटेरियल है, जो सबसे पहले आया, वो यहाँ पर है. ओके, बट आउटबाउंड के सीक्वेंस में हमने ऐसा मेंटेन किया है कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, राइट. तो सिस्टम क्या करेगा, इट विल ऑलवेज चेक दिस वन फर्स्ट. अगर वो मटेरियल यहाँ पे नहीं है, तभी वो अगले सीक्वेंस में जाएगा, अगले स्टोरेज टाइप में, मतलब. ओके, मतलब वो जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट देखेगा, वो स्टोरेज टाइप लेवल को देखेगा, नॉट कि एट वेयर हाउस मतलब फिर वो सब भी कंसिडर करेगा, पूरे के पूरे स्टोरेज टाइप कंसिडर करेगा. सो ये प्रॉपर फीफो एंड लिफो नहीं है. ओके, क्योंकि जब फीफो और लिफो होता है तो वेयर हाउस या कस्टमर क्या बोलते हैं कि वो स्टोरेज टाइप स्पेसिफिक नहीं होगा, राइट, वो पूरे वेयर हाउस के स्पेसिफिक होगा, राइट. तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टोरेज टाइप ग्रुप, राइट. तो हमें इसमें ग्रुप क्रिएट करना है, तो हमने लास्ट टाइम किया था, खाली डिटर्मिनेशन नहीं काम कर रहा था, राइट. तो ये फीफा हमने क्रिएट किया था, ये हम पुट अवे के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट. अगेन जस्ट द रूल, राइट. यहाँ पे हमें कैसा चाहिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो, राइट. पुट अवे रूल भी हम मेंटेन कर सकते हैं जैसे हमें चाहिए वैसे. ओके, देन इसको हमें क्या असाइन करना है, स्टोरेज टाइप असाइन करना है, जितने भी स्टोरेज टाइप है. ओके, और इस यहाँ पे सीक्वेंस का कुछ लेना देना है नहीं, राइट. इफ यू चेक नॉर्मली जो हमने देखा था पुट अवे स्टॉक रिमूवल अभी, राइट, तो वहाँ पे एक सीक्वेंस नंबर था 1 2 3 4, बट यहाँ पे सीक्वेंस नंबर है नहीं. क्यों नहीं है, बिकॉज जब वो मटेरियल सिस्टम देखेगा, राइट, हियर यू कैन सी फर्स्ट इज LS10 देन RK एंड देन PL, राइट. तो जब सिस्टम वो मटेरियल ढूंढेगा,
तो वो पूरे ग्रुप में जाके ढूंढेगा, कि वेयर हाउस लेवल को जाके ढूंढेगा कि वो मटेरियल सबसे फर्स्ट कब आया था और किस स्टोरेज टाइप में रखा है, राइट। और फिर इसका जो असाइनमेंट है, राइट, और डिटर्मिनेशन है, इज अगेन सेम। जस्ट गो टू दी स्टोरेज टाइप सर्च सीक्वेंस फर्स्ट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे so मैंने एक F1 क्रिएट किया था, राइट, एंड यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप हमें मेंटेन करना है, राइट, सो वी डोंट नीड टू असाइन स्टोरेज टाइप, वी कैन डायरेक्टली मेंटेन ग्रुप, और उस ग्रुप के अंदर हमने सब स्टोरेज टाइप मेंटेन किए हुए हैं, राइट। सो ग्रुप से वो ट्रिगर हो जाएगा, राइट। एंड देन अगेन इज सेम, डिटर्मिनेशन हमें कैसा चाहिए, वी कैन क्रिएट इंडिकेटर और विदाउट इंडिकेटर ऑल्सो वी कैन गो, राइट। देन डिटर्मिनेशन, सो यहाँ पे ऑलरेडी एक एंट्री है, राइट, वेयर मैंने खाली WPT के ऊपर डिटरमाइन किया है F1, मतलब जब भी WPT 2010 होगी तो उसमें जो सर्च सीक्वेंस होगा वो फीफो, और उसी सर्च सीक्वेंस में स्टोरेज टाइप ग्रुप ने हमने ऑलरेडी मेंटेन किया है कि फीफो, राइट। अगर हमें कुछ और चाहिए तो हम यहाँ पे वो मेंटेन कर सकते हैं, ओके। एंड देन डिटर्मिनेशन अगेन ओनली WPT स्टिक सी फर्स्ट, राइट। नाउ डिलीवरी में मैं जाता हूँ, एक डिलीवरी ऑलरेडी है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की हुई, आउटबाउंड डिलीवरी। सो फॉलो फंक्शन वेयर हाउस टास्क, okay, at the same time we'll open slash SAP monitor, stock, फिर मैं यहाँ पे लेट्स से ये मटेरियल 647 ढूंढता, यहाँ पे ये करता हूँ, सो अगेन आई विल stock type F2, or else we'll just remove this and we'll only go for F2 because F2 ही हमारा आउटबाउंड का स्टॉक है, राइट। और फिर यहाँ पे मैं फिल्टर डाल देता हूँ, ओके। और इफ आई स्क्रॉल हियर विल हैव GR टाइम एंड डेट, तो इसको मैं ड्रैग सिलेक्ट करके ड्रैग और ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर हम इसको सीक्वेंस वाइज कर देंगे, ओके। तो जो सबसे पहले आया था, राइट, इट्स दिस वन, राइट, बट हमारे सीक्वेंस में हमने LS10 मेंटेन किया है, राइट, फर्स्ट देन रैक ऐसा मेंटेन, रैक तो इसमें है ही नहीं, मटेरियल नहीं है। आई विल क्रिएट टास्क एंड विल सी सिस्टम क्या करता है। तो सिस्टम देखिए पैलेट 200101 ले रहा है, सो इफ यू चेक पैलेट 200101, राइट, इवन तो ये सबसे लास्ट में सीक्वेंस में है, राइट, हमने रैक और LS10 मेंटेन किया था, बट LS10 उसके बाद आया है, राइट, दैट द रीजन ये इसको पिक कर रहा है। सेम थिंग विथ सेकेंड मटेरियल, okay, now is going with the rack 646, so we'll के रैक में नहीं, कौन सा मत बीन है, 100101, ओके, सभी 100101 में ही है, बट इफ यू चेक HU3, HU3 मतलब ये, ओके, क्लियर। यस सर। यस यस। तो ये था जो लास्ट टाइम हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे, ओनली वो डिटर्मिनेशन ये हो रहा था। देन द नेक्स्ट प्रोसेस इज POSC इन SAP, मतलब आउटबाउंड में। सो आपने देखा है वीडियो इनबाउंड का, इनबाउंड POSC नहीं सर। दोनों ने? नहीं सर। ओके, नाउ इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। सो जो POSC इज प्रोसेस ओरिएंटेड स्टोरेज कंट्रोल,
ओके बेसिकली क्या है ना, जो पैकिंग किया जाता है, पैकिंग अनपैकिंग, राइट, वो तो अगर बिजनेस को लेट से वो ट्रेस करना है, ओके, तो उसको पीएससी से किया जाता है। ओके मतलब लेट्स से मटेरियल आ रहा है, राइट, ये बड़े वाले बॉक्स में, और उनको फिर ये बॉक्स ओपन करना है, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स है जो अलग अलग बिन में जाएंगे, राइट, तो वो एक एरिया में जाके करेंगे, सो उसको बोला जाएगा वर्क सेंटर, और ये पूरी एक्टिविटी वहां पे ट्रेस की जाएगी। We have somewhere आंसर ओबीडी पीओएससी क्या है? no OBD means outbound, PSC मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड स्टोरेज कंट्रोल। ओके ओके, यहाँ से ही चालू होता है ना, मतलब ओबीडी पीओएससी ये वाला। नो OBD मतलब आउटबाउंड प्रोसेस, आउटबाउंड डिलीवरी, ओके ओके, और PSC मतलब इनबाउंड, मतलब इनबाउंड में भी किया जाता है, आउटबाउंड में भी किया जाता है। ओके PSC प्रोसेस है, मतलब दोनों में, हम तीनों में यूज कर सकते हैं, इनबाउंड, आउटबाउंड, इंटरनल। ओके वेयर एज OBD मीन्स आउटबाउंड, आउटबाउंड प्रोसेस। क्लियर? यस सर। अच्छा, तो ये बहुत कुछ दिया हुआ है, इनबाउंड वीएस प्रोसेस, ये हो चुका है अपना। यस यस। ओके Okay, then I'm also confused actually. Okay, so now the POSC, right? So as मैं से बताया प्रोसेस ओरिएंटेड स्टोरेज कंट्रोल। ओके सो बेसिकली इसका जो सिंपल ये है, जैसे कि हम घर में कुछ सामान लेके आते हैं, राइट, वो बड़े बैग में रहते हैं, एंड देन व्हाट वी डू द सेग्रीगेशन, राइट, so same thing in यस EWM also. Let's say there is one pallet, then business want to store in different bin, right, so where they need to open, right, so ऐसा let's say एक बड़े बॉक्स में आ रहा है और फिर वो उसको छोटे छोटे बॉक्स में ओपन कर रहे हैं, राइट, so ये जो एरिया होगा इसको वर्क सेंटर बोला जाएगा, राइट, एंड देन एंटायर प्रोसेस इज POSC, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सब ट्रेस कर सकते हैं। ओके देन आउटबाउंड में अभी कैसा होगा, POSC इज अपोजिट, ये इनबाउंड का POSC है। ओके आउटबाउंड में कैसा होगा ना, विल पिक द मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट स्टोरेज टाइप, ओके, देन वो एक एरिया में यहाँ पे आएगा, राइट, वेयर वी डू पैकिंग, ओके, एंड देन डिस्पैच। क्लियर? यस यस पहले हमें मटेरियल पिक करना पड़ेगा और फिर डिस्पैच करेंगे, राइट, सो PSC उसमें बहुत कुछ सेटअप है एक्चुअली, इनबाउंड में हमने इसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है ब्रीफली, सो व्हाट विल डू, राइट, इट्स जस्ट डीमार्ट काउंटर, राइट? डिमांड काउंटर मतलब कैसे? बिलिंग काउंटर। नो बिलिंग काउंटर, या वी कैन से लाइक दैट। यस, we can pick the material from the rack. Yes. And then we'll do the picking, packing, and then dispatch. Yes. Okay. Yes. So इसमें कैसा है? So there is something called internal process. अभी सिस्टम पे समझ में आएगा कि कौन सी प्रोसेस क्या है, राइट, पिक कौन सा है, फिर पैक कौन सा है, राइट, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम कैसे समझ में आएगा। So if you go to the cross process setting warehouse task, right, here we'll find define warehouse process, a process oriented storage control. Okay. So there is something called external process step. Okay, just a moment.
Can you see my screen? Hello? No, no. Okay. No, sir. We'll stop. Okay, now अभी दिख रही है एसीपी की स्क्रीन? Yes. Okay. Okay, SPRO. Extended warehouse management. Extended warehouse management. Cross process setting. Warehouse task. Okay, process oriented storage control. Okay, so there is something called external step, right? So for example, 75 pick, right? 7500, it's for pick, right? अभी सिस्टम को कैसे समझ में आएगा कि ये पिकिंग का ही है, right? So this is assigned to the internal process. So we can create as many as external step, right? Which are assigned internal process step. So इसका जो है simple, if you remember storage type, right? हम कितने भी storage type बना सकते हैं, but storage type role same ही होगा, right? Yes. तो ये ऐसा है कि हम कितने भी बना सकते हैं as per customer requirement, and but we have to assign, okay, pick मतलब picking of the material, stock remove from the stock, right? Same like that. Pack. तो packing के लिए there is something called pack. Okay, then we'll also do stage Is there any restriction, sir? for This 4-digit number. no, up to 4 is there, so you can create one also. Only Okay. just to, क्योंकि बहुत सारी entry है already, so just to make easier to find, so that's why I'm going with our warehouse 75, so we can easily find. Okay. Okay. So stage and then load. Okay, last activity, right? Unload and then opposite load. Now if you check the direction, right, मैं इसको change नहीं कर सकता, right? But as soon as press enter, right? So pick is stock removal purely, then pack हम सब में use कर सकते हैं, right? Out inbound में हम packing कर सकते हैं. Then staging is again stock removal, and then loading is also stock removal only, right? अभी system को कैसे Yes. पता कि first sequence क्या है, second sequence क्या है? Assign करना पड़ेगा. Yes, हमें यहाँ पे storage process में वो देना पड़ेगा. That okay. In my Yes. warehouse OBD, okay, then POSC description OBD is stock removal. Okay, select this and then assign storage process. यहाँ पे हमें sequence देना है. So first sequence is pick, right? हम पहले picking करेंगे, then we'll pack, okay, then stage and then load, right? Now Yes. जैसे picking होगा, right? So picking के बाद जैसे पिकिंग कंफर्म होगा, राइट? सो पैकिंग का टास्क बनना चाहिए ऑटोमेटिकली. जैसे पैकिंग कंफर्म होगा, स्टेजिंग का टास्क बनना चाहिए. जैसे स्टेजिंग होगा, लोडिंग का टास्क बनना चाहिए, राइट? मतलब Yes. जो हम एवरी टाइम जाते हैं पीआरडीआई में वो क्रिएट करने के लिए, राइट? वो नहीं करना चाहिए, राइट? हमें. सो दैट द रीजन वी टिक. सो दिस इज ऑटोमेटिक वेयरहाउस टास्क. जैसे ये एक्टिविटी हो जाएगी, ये टिक है तो ये नेक्स्ट के लिए कर देगा. जैसे पिक हो जाएगा, अगर ये टिक है तो वो स्टेजिंग के लिए हो जाएगा. जैसे स्टेज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट दिस टिक इट विल create loading. अभी loading last activity, so that's why we don't need to tick this. And this Next product and stage HU carry where forward होगा. yeah create होगा basically. Okay. और ये जो product warehouse और HU warehouse task है is related to inbound. Outbound में product warehouse task नहीं है क्योंकि हम पैक करने वाले हैं. Okay, now go back. So इसका determination जो है ना वो
So आउटबाउंड में पीएससी का डिटर्मिनेशन देयर इज समथिंग कॉल्ड डब्ल्यूसीआर. तो डब्ल्यूसीआर से हमें करना पड़ता है. ओके, सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, विल गो टू द वेयरहाउस ऑर्डर. ओके, यहाँ पे विल डायरेक्टली गो विथ define creation rule for WCR. Okay, new entry 7500 WOCR. WOCR USC. ओके, और यहाँ पे मैं मेंटेन करता हूँ OBD. लेटर विल डिस्कस अबाउट WCR, इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, और ये जो WCR जो है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, आई विल गो एंड मेंटेन इन वेयरहाउस प्रोसेस टाइप. ओके, नाउ इसका जो डिटर्मिनेशन है, राइट, या जो वेयरहाउस प्रोसेस टाइप है इस 2010. ओके, स्टॉक रूम में जाके, सो यहाँ पे जो WCR जो है, राइट, यहाँ पे वो जो हमने अभी क्रिएट किया वो मैं मेंटेन करता हूँ. ओके, क्लियर? यस. देन अभी सिस्टम को कैसा है ना, ये जो पैकेजिंग जब होगा, राइट, ये जो पैकेजिंग जो होगा, राइट, ये फिक्स बिन होगा, इसका बिन एक ही होगा, राइट. मतलब सिस्टम को यहाँ से निकल के यहाँ पर ही रखना है, यस. बाद में यहाँ से निकल के यहाँ पर ही रखना है डोर, एंड देन लोडिंग, ये एक्टिविटी लोडिंग, राइट. सो पिक, पैक, देन दिस इज कॉल्ड स्टेज, एंड देन लोडिंग. सो ये जो बीन हो गए सब, ये सब फिक्स ही हो गए, राइट, एक ही बीन यस. हो गए. सो फॉर दैट बीन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट स्टोरेज टाइप. Okay, so we'll go with master data, storage type. And then we'll check. So I guess we already have GI zone, right? So we need to create packing for outbound. Okay, so we'll go with pack, OBD pack. So उसका जो work center होगा, it will be E. Okay, then confirm put away. Storage type role will be 4, general storage, and then removal indicator. And then yeah, so delete stock identification, sorry. So capacity check. So इसमें system should not check any weight. Okay. OBD. Right. Save it. Apart from this, right, we are also going to do the loading and staging, right? So यस. जो staging है वो तो यहीं पर होगा, GI stage के ऊपर, GI zone, that is staging. Only loading, right, ये जो ट्रक में हम लोड करेंगे उसके लिए हमें एक स्टोरेज टाइप क्रिएट करना पड़ेगा. ओके, सो फॉर दैट loading POSC, right, the role will be F, door, right, door से हम loading कर सकते हैं. Then all other setting are same. Save it. Okay, now we need to create bean for all one by one. Okay, so first it's pack bin. Pack bin. Okay, save. So then loading 01. Okay, staging का तो bean already है, right? Then so जो एक्टिविटी होगी, राइट, पैकिंग अनपैकिंग वाली यहाँ पे,
तो उसमें पैकिंग अनपैकिंग तो हमें सिस्टम को ही बताना पड़ेगा कि इस बॉक्स में हमने पैक किया है, यहाँ से अनपैक किया है, राइट। सो दैट एरिया विच वी कॉल्ड वर्क सेंटर, तो वर्क सेंटर भी एक मास्टर डेटा रहता है, राइट। तो विल गो हियर इन डिफाइन वर्क सेंटर, राइट। यहाँ पे न्यू एंट्री, सो 7500, राइट, वी कैन गिव एनी नेम, राइट, वर्क सेंटर फॉर ओबीडी, राइट। नाउ ये हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर पैकिंग, तो वो एक्सटर्नल स्टेप। देन स्टोरेज टाइप, नाउ इफ यू चेक हियर स्टोरेज टाइप, तो जो ई के लिए हमने क्रिएट की है, राइट, यू कैन सी ई स्टोरेज टाइप रोल ई, राइट, विच इज पैक, वही हमें यहाँ पे दिखेंगे। सो विल गो विथ पैक, ओके। एंड देन WPT, सो वी आर गोइंग टू यूज जो पैकिंग एंड पैकिंग के लिए जो WPT इज रीपैक विच इज 3040, ओके। एंड देन लेआउट, लेआउट मतलब वो स्क्रीन में कुछ ऑप्शन हो गए, राइट। तो मैं दिखाता हूँ, सो व्हाट विल डू हियर इज अ डिफॉल्ट लेआउट which is VPMX, okay, we'll go with this। and then inbound outbound section मतलब कैसा, अभी जो मटेरियल आएगा वो सबसे पहले वो यहाँ रखेंगे, right, for that activity। once that activity is completed, let's say they will put over here, so ये हो गया inbound section, ये हो गया outbound section, okay, वो भी हम यहाँ पे maintain कर सकते हैं, but we'll go with blank, okay। same key is already there, OB10 for example, yeah। नाउ वो जो लेआउट हमने किया वो क्यों किया, सो जो ट्रांजैक्शन है, okay, so if you go to the menu, basically transaction is pack, where you can see, if you go to the execution, this one pack, right now OB10, okay, we don't have any delivery actually, so or else because भी नहीं दिखा सकते, maybe okay, we'll see during example, okay। so कुछ ऑप्शन होते हैं VPMX में, क्योंकि हम पैक अनपैक करेंगे, राइट। so if you go to the layout, अभी VPMX मैंने क्यों लिया, if you go to the layout, VPMX, so ये स्टैंडर्ड लेआउट है, तो इसके अंदर जितने भी टिक जो है, राइट, रिलेटेड टू HU, सो इज ऑलरेडी टिक, राइट। तो ये लेआउट में हम जब पैकिंग करेंगे ना, तब ये विल सी कि ये क्या होता है, ओके। नाउ सिस्टम को कैसे मालूम कि यहीं पे लेके जाना है, ये तो हमने खाली बीन क्रिएट किए, राइट, पिकिंग होने के बाद यहीं पे लेके जाना है और या यहीं पे इसको रखना है, राइट। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, अगेन गो टू दी प्रोसेस ओरिएंटेड स्टोरेज कंट्रोल एंड देन प्रोसेस ओरिएंटेड स्टोरेज कंट्रोल, सेकेंड वन, यहाँ पे हमें वो मेंटेन करना है, क्या मेंटेन करना है, सो इन माय वेयरहाउस, ओके, व्हेन द एक्सटर्नल स्टेप इज पैक, ओके, पिकिंग के लिए तो हम मेंटेन नहीं करेंगे डेस्टिनेशन, क्योंकि पिकिंग के लिए तो मतलब सोर्स वो निकलेगा, बट जब पिकिंग मतलब वो पिक करके लेके आएगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप होगा पैकिंग। तो पैकिंग के लिए उसने कहाँ पे मटेरियल लेके जाना है, पैक पे, राइट, और उसका जो बीन होगा वो होगा ये, ओके। एंड देन WPT, सो ये जो WPT है, राइट, सो फॉर आउटबाउंड इज 3070C स्टॉक रिमूवल HU मूवमेंट, ओके। देन द सेकेंड क्या है, स्टेज, अगेन सेम WPT, ओके, 3070 एंड देन नाउ GI जोन, ओके, और फिर उसका बीन, okay, and then last activity which is loading, 7500 75LD, and then हमने जो स्टोरेज टाइप क्रिएट किया था, ये समझ में आ रहा है, Yes, क्या sir. कर रहा हूँ, Yes. 4 Sequence wise process determination. बीन मेंटेन कर रहा हूँ, मतलब हाँ. जब ये स्टेप क्रिएट होगा इट विल गो टू द पैक, जब ये स्टेप ट्रिगर होगा इट विल गो टू द स्टेजिंग, जब ये स्टेप ट्रिगर होगा इट विल गो टू दिस बीन लोडिंग, Yes. ओके, सेव इट। नाउ अभी कैसा है ना, हम स्टेजिंग के साथ जब स्टेजिंग में होगा मटेरियल GI जोन में, तो हम उधर भी ट्रिक ये कर सकते हैं, गुड इशू कर सकते हैं, राइट। बट हमें एक टास्क चाहिए, कौन सा वाला, GI जोन टू लोडिंग, लाइक जब ट्रक आएगा तभी हम लोडिंग करेंगे, राइट। सो फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो बैक टू द स्टोरेज टाइप सेटिंग,
again. ओके और यहाँ पे स्पेसिफिकली जो GI जोन वाली जो स्टेप है, स्टोरेज टाइप है, राइट, वहां पे जाके यहाँ पे जो 75 स्टेजिंग वाला जो है, राइट, वो हमें मेंटेन करना है, क्योंकि तभी जाके सिस्टम जो टिक है, राइट, टास्क ऑटोमेटेड टास्क क्रिएशन फॉर लोडिंग, वो सिस्टम क्रिएट कर देगा। अगर ये ब्लैंक है, सिस्टम टास्क क्रिएट नहीं कर देगा, एंड देन वी कैन डायरेक्टली डू द गुड इशू ऑल्सो, बट अभी हमें गुड इशू वहां पे नहीं करना है। ओके, नाउ आवर configuration is ready, so we'll create one delivery. So we'll go with without reference. So 500, delivery type is LO, is 0001, 000101. Okay. So 646 data supposed to plant, yeah. And then for plant GI date, just go with some future date. Okay, quantity, let's say I will pick 1. Okay, and then यहाँ पे हमें ये आउटबाउंड में नॉट नेसेसरी कि आपको ऑर्डर ही क्रिएट करना है, जैसे हमने इनबाउंड में देखा था। वी कैन डायरेक्टली क्रिएट विदाउट रेफरेंस ऑल्सो, वी कैन डायरेक्टली मेंटेन द स्टोरेज लोकेशन, एंड देन विद कॉम्बिनेशन दिस सिस्टम अगेन ट्रिगर दी EWM, मीन्स EWM वेयरहाउस ट्रिगर हो जाएगा और वो डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ओके, नाउ आई विल कॉपी दिस डिलीवरी एंड विल गो फॉर पिकिंग, मतलब /n/SEWM/PRDO। ओके, ना हमने जो WPT मेंटेन की है पैकिंग करते वक्त, राइट, हमने मेंटेन की है 3040 विच इज रीपैक। ओके, 3040। तो मतलब हम पैकिंग क्रिएट नहीं कर सकते, हम पैक टू अनपैक करेंगे। अभी उसका मतलब क्या है, अगर आप डीमार्ट में हम जब जाते हैं, राइट, सो ऑब्वियसली विल गो विद दैट कार्ट और दैट स्मॉल बास्केट, राइट, और जब हम बिलिंग काउंटर के ऊपर जाते हैं, हम उसको हमारे बैग में पैक कर, दैट इज नथिंग बट रीपैकिंग। हम कौन सा भी प्रोडक्ट हाथ में लेके नहीं आते, राइट। सो जो कार्ट रहती है, राइट, या जो स्मॉल बॉक्स रहता है या वो ये रहता है, उसको बोला जाता है इन EWM लैंग्वेज पिकेचू। ओके, so while doing or like picking is mandatory to create pikachu, so we can go here, follow task, follow our function, then warehouse task. Here we can create warehouse task, create. Okay, yeah, one more thing, I will not save it. So अभी हमारा जो बीन है, राइट, फाइनल बीन, वो स्टेजिंग वाला बीन है, राइट, और वो बीन सिस्टम कहाँ से लेता है, WPT से, बट नाउ आवर लास्ट बीन इज स्टेजिंग, राइट, तो हमें खाली वो स्टेजिंग वाला बीन रिप्लेस करना है। इफ यू चेक 2010, राइट, तो यहाँ पे देखिए स्टेजिंग बीन है, बट अभी यहाँ से डिस्पैच नहीं होगा मटेरियल। कहाँ से डिस्पैच होगा, जब वो मटेरियल लोडिंग में जाएगा तभी, राइट। सो आई विल जस्ट चेंज बीन टू लोडिंग। ओके, सेव इट। ओके, नाउ विल चेक। Okay, now we have changed some settings, so it's not possible. So okay, we'll create new delivery again without reference. Okay. This is loading bean. Okay,
So we'll create plus save. Okay, we'll go to this confirmation. Right now यहाँ पे हमें वो Pikachu create करना है. Right, go to here Pikachu. Right, add or create. Right, form view. Right, then packaging material. So हमारा packaging material क्या है? I'm not sure, so we can search packaging material. So हम ये इसको automate भी कर सकते हैं, वो हम देखेंगे next इसमें कि कैसे वो system Pikachu create कर देगा. Let's say box. Right, so click on create. राइट, तो मैं इसको खाली सेव करता हूँ. जैसे मैं कंफर्म कर दूंगा सिस्टम वो जाके पैक कर देगा. राइट, मैं क्या करता हूँ, सो मॉनिटर में जाके इसको हम कंफर्म करेंगे. मॉनिटर से भी हम कंफर्म कर सकते हैं. सो /scwm/monitor आउटबाउंड डिलीवरी डॉक्यूमेंट. ओके, वेयर हाउस टास्क सी, ये होगा यहाँ से जाके सी पैकेजिंग के लिए जा रहा है. राइट, यू कैन सी द स्टेप पिकिंग. राइट, बीन उसने कहाँ से लिया, जहाँ पे हमने वो बीन मेंटेन किया था. राइट, WPOSC के इसमें. राइट, सो एज सून एज यू कंफर्म दिस, राइट, अभी ये पैक हो गया मटेरियल, मतलब सॉरी पिक हो गया. राइट, इस HU में. राइट, सॉरी नॉट दिस, इन दिस HU, डेस्टिनेशन HU में. मतलब अभी वो कहाँ पे है, पैकेजिंग के ऊपर. यहाँ पे वो पैकिंग हो रहा है. पिक HU मतलब किसने, तो वो जो है जो ये जो मैनुअल फोर्कलिफ्ट है, राइट, उससे वो मटेरियल आया. सो दिस इज कॉल्ड पिक HU. यहाँ पे रख दिया एंड देन ये लोग पैकिंग करेंगे. राइट, तो वो कैसे करेंगे पैकिंग. नाउ वी नीड टू गो टू द पैक ट्रांजैक्शन जो मैंने पहले ओपन किया था. Okay, that is /SAWM/pack. अगर मैं इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता हूँ, सो ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं, राइट, ये बिकॉज ऑफ दैट लेआउट VPMX. अगर मैं कॉन्फ़िग में जाता हूँ फिर से, okay, we'll go to the master data. Okay, then work layout. So ये जो लेआउट है, राइट, तो इसको मैं अनटिक करता हूँ. फॉर एग्जांपल स्कैनर एरिया, इससे होगा क्या, विल चेक. ओह, लेट्स सी कुछ चेंजेस हुए क्या. So if I go back and execute, okay, scanner area is still there. क्यों लोग इसमें कोडिंग की टेस्ट करते हैं, समझ में नहीं आता मुझे. Maybe we can check any other tick. तो स्कैनर एरिया जो है, अगर उसको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया तो उससे होगा क्या, जो साइड में जो है, राइट साइड में VPMX, ओके, ये जो पूरा है ये गायब हो जाएगा. राइट, और फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं इसको डिलीट HU को ये कर देता हूँ और empty HU को. ओके, और सेव करता हूँ फुली. ओके, इंस्पेक्शन काउंटिंग पॉसिबल. ओके, empty HU. सो empty HU मतलब ये वाला. ओके, empty HU. सो हमने सेव कर दिया. विल सी. ओके, व्हाई वी आर नॉट एबल टू सेव इट. ओके, किसने कोई तो नथिंग टू डू विथ क्वालिटी का कुछ है ही नहीं इसमें. ये किसने तो कुछ करके रखा है और तरीका भी नहीं है. बेसिकली ये अगर आप अनटिक करते हो ना, राइट, तो वो ऑप्शन यहाँ से चला जाएगा. वही उसी के लिए लेआउट है. ओके, नाउ यहाँ पे हम उसको रिपैक कर सकते हैं. राइट, न्यू पैकेजिंग क्रिएट करके वी कैन ड्रैग एंड ड्रॉप. राइट, फॉर एग्जांपल मैं अभी
नया बॉक्स क्रिएट करता हूँ। पैकेजिंग मटेरियल 659, ओके, पैक बीन में एग्जीक्यूट, राइट, ये क्रिएट हो गया एंड देन यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप टू पैक, राइट। मैं इसको सेव करता हूँ, ओके, मैंने सेव किया एंड इफ आई गो टू द मॉनिटर, राइट, इफ आई रिफ्रेश, राइट, ये पैकिंग वाला टास्क क्रिएट हो गया, कंफर्म भी हो गया, राइट, तुरंत। सी पैकेजिंग वाला, बट वो पैकेजिंग के ऊपर ही है, राइट। सिस्टम ने वो मूव करना चाहिए बेसिकली फ्रॉम पैकेजिंग स्टेशन टू स्टेजिंग बिन। तो सिस्टम ने क्यों नहीं किया? क्योंकि सिस्टम को पता नहीं है कि आप कितने बार एचयू चेंज करोगे, राइट। इज अप टू द यूजर, वो कितने बार भी एचयू चेंज कर सकते हैं। फिर उसको सब कब समझ में आना चाहिए कि यस ये हो गया। सो व्हाट दे हैव टू डू एवरी टाइम, तो यहाँ पे एक एचयू स्टेप टिक है, एचयू कंप्लीट, okay, HU step complete. So if you tick over here HU step complete, see this tick means then only system will understand that whatever packaging you want to do is completed, right. Now if you go to monitor and if you refresh, you will see one task is created, which is blank, means we can confirm this is from packing to staging, right. So I will confirm this, okay. Now we'll wait for truck, right. Once truck is or container is arrived, right, then we'll do loading, right, staging to loading. So we'll also confirm this one, okay. You can see, and then if you go back to the delivery, see packing, and this is completed, right, and then we can complete good issue. This process is complete. Clear? Yes, sir. Okay. Value-added services that you have to do own, because it's the same setup only. Okay, only LOC will discuss. मतलब value-added आपको check create करके, if possible document create करके मुझे दिखाना है, okay, because all other steps are same, which we already discussed in inbound, okay. But जो LOC है वो हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे, okay, but LOC के लिए will wait, हमें उसके पहले WCR कवर करना है, बिकॉज उसमें एक छोटा सा एक कंसेप्ट है, वो मुझे LOC के साथ देखना है, मतलब आपको दिखाना है बेसिकली, ओके। एनी क्वेश्चन? No. Okay then, don't have any question, we'll stop. Yes. Okay, then thank you. Thank I you. will update for next session, okay. Sure. Is it tomorrow or what? Tomorrow I have some plan, but yeah, I will update. Okay. No issue. Okay, Good night. good night. Okay, sir. Good night. हाँ सर। प्रैक्टिस कैसे चल रही है? सर फिलहाल वीडियो ही देख रहा हूँ आपके, जो पुराने वीडियो है वही देख रहा हूँ। 27 के बाद it's 20, no sorry it's 2, नहीं 3 आज नहीं, सॉरी। Okay, so OPD started ऐसा लिखा है, let me check, /EWM/monitor, ऐसे भी देख सकते हैं।
Yes, task. So if you check at document item level, yeah, good issue is done. Right, ये हमने देखा था PUSC last time, right? Last session में I'm doing recording also, I guess, yes. Yeah, okay. So this is what we have checked. If you go here, for example, check the task for this one. Yeah, picking, packing, staging and load. Right, ये हमने last time देखा था. Okay, now the next topic is a WCR. Okay, warehouse order creation rule. Now, but what is warehouse order creation rule basically? Okay, so PL31, sorry, 01NO, if we create 500 LO 00010101. सर आपकी आवाज लो आ रही है थोड़ी. Hello, now is fine. Hello. Hello, now it's okay. Yes, yes. Okay, this is my then 2802. It's 646. 646. Okay, and then 647. Okay, now अगर मैं इसका like create delivery S. Okay, we'll save it. Okay, now yeah, DO. So if you observe one thing कि जैसे हम task create करते हैं, right? Picking task, right? अगर मैं सब create कर रहा हूँ, for example, okay, then you check the task. Here you can see, right? एक warehouse order है और उसके अंदर ये सब task है, right? और जो मतलब picking जो होगा, right? When we go for picking, जो assignment होगी user को, so वो warehouse order की होगी. Because if you check this one form view, यहाँ पे you can see the resource and queue. Basically, let's say resource is nothing but the picker, right? Who is going to pick the material, right? तो picker जब ये order है, right? ये जो assign होगी picker को, so that person need to pick all these three material. मतलब यहाँ जितने भी task हो गए, right? उस सबको वो picker को pick करना पड़ेगा. So the definition, or not actually a definition actually, but we can say the number of a combination of tasks are called warehouse order. Okay, ये clear है यहाँ तक? Now, why we want to control? मतलब with the warehouse order creation rule. Okay, with the warehouse order creation rule, we can control creation of the task. Now, why we want to create, or why you want to control the task, right? Creation. Now, for example, यहाँ पे जो एक मटेरियल है ये वाला 646, okay,
उसका जो वेट है लेट्स से इज 50 kg, ओके, इज 50 kg। सो ऑब्वियसली अगर ये सब 50 kg के है फॉर एग्जांपल, ओके, ये 50, ये 50, ये 50, मतलब कितना हो गया 150 kg, राइट, टोटल। अगर एक रिसोर्स जाके ये 150 kg पिक करेगा, राइट, टाइम ज्यादा लगेगा, या बेसिकली वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। दैट पर्सन कैनॉट पिक 150 kg इन सिंगल गो, राइट। मे बी विल गो वन बाय वन, सो वो पहले ये मूव करेगा, देन ये, बट इट इज रॉन्ग, बिकॉज वो फिजिकली एक जगह पे होगा, सिस्टम में वो टास्क ओपन ही हो जाए रहेगा, राइट। क्लियर? हेलो, am I audible? Yes sir, yes. Okay, so what we can do, I will create 3 different warehouse order, 1 2 3, because of the weight. Okay, clear? Because of the weight. 3 different sir. Yeah. Yes, 3 different warehouse order. Okay. Yes, 601 आपका and वॉइस थोड़ा लो 602, आ रहा है सर 603. आज। Now is fine. आ रहा है बट बीच में ऐसा लो हो जा रहा है वो। ठीक है सर। Okay. Okay. Or let me check another headphone, just a moment. Hello, check, hello. Now is fine. Yes sir, yes. Okay. So instead of creating one warehouse order, we'll create different warehouse order, right? Weight का तो मैं एक example दे रहा हूँ, वैसे अलग अलग भी हम कर सकते हैं, right? Sometimes weight ही नहीं होगा, there are other condition also, right? But is this clear कि क्यों उसको differentiate करना है? Yes sir. Okay. सर वेट Now की जगह साइज वगैरह कुछ भी हो सकता है ना? साइज या बेसिकली बिजनेस बोलेगा नहीं, हमें करना, हमें वन ऑर्डर में एक ही टास्क चाहिए, कुछ भी रीजन हो सकता है, राइट? तो उस केस में so it is our SPRO. Okay, so if you go to the SPRO, SAP reference IMG, okay, then extended warehouse management, okay, cross process setting, warehouse order, okay, then in warehouse order here you can see warehouse order creation rule. तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने एक ही क्रिएट करके छोड़ दिया था, सो क्या था अपना 7500. Okay, so first of all I will just delete all this. Okay, हमने इसमें WOC का डिटर्मिनेशन डाला था, राइट? सो मैं भी वो डिलीट कर देता हूँ, सेव इट, राइट? नाउ न्यू एंट्री, सो फॉर एग्जांपल WOC1, okay, WOCR1 for example. Okay, then I will just copy this one, C2, this is 2, save it. Okay, then I will go to this creation rule search sequence. Okay, now again first of all we'll check on, and then we'll first delete all this entry and save it. Okay, new entry, then 7500. So activity area, okay, here we don't have activity area. Anyone remember activity area क्या रहता है? हमने ये डिस्कस किया था I guess, right? एक्टिविटी एरिया याद है? इनबाउंड में पुटावे में देखा होगा, ये पुटावे स्ट्रेटेजी में. ओके, सो एक्टिविटी एरिया का क्या कंसेप्ट है एक्चुअली?
सो वेयर हाउस में ओके समटाइम ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको जिगजैग मटेरियल रखना है, मतलब उनको ऐसा चाहिए कि राइट साइड लेफ्ट साइड रखना है। ओके राइट लेफ्ट ऐसा मटेरियल, मतलब फर्स्ट बीन फ्रॉम दिस देन दिस, ऐसा सीक्वेंस चाहिए। और एल्स पिकिंग करते वक्त राइट, अगर लेट्स से एक मटेरियल है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है राइट, और अगर बिजनेस एवरी टाइम वो यहाँ पर यहाँ का मटेरियल पिक कर रहा है राइट, विच इज रॉन्ग राइट, क्योंकि फिर यहाँ पे कोई वो जाएगा ही नहीं मटेरियल पिक करने के लिए। फिर उससे अच्छा वो क्या करेंगे, एक पार्ट डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल if you have any top view, yes, so for example let's say ये आइले, so we'll go like this one, then यहाँ से यहाँ राइट, मतलब जब भी मैं यहाँ पे जाऊँगा तो सिस्टम ने इस पाथ में जो भी बीन हो गए वो देने चाहिए, फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे एंड होगा एंड देन यहाँ से वो ऐसा जाना चाहिए राइट। सो वी कैन अचीव दिस विद द एक्टिविटी एरिया, ओके with the activity area. Yeah, here you can see. So instead of going this then coming back again, what we'll do, we'll start here, we'll go at end, then हम पीछे से start करेंगे, यहाँ तक आएंगे, then यहाँ से start करेंगे, then end तक, और फिर यहाँ से ऐसा आएंगे, ओके zigzag way, और एक पाथ हम डिसाइड करेंगे राइट। मतलब सर अगर एक ही मटेरियल 3 जगह पर होगा, या अगर अलग अलग सिस्टम मटेरियल पहले होगा फॉर एग्जांपल, नहीं यस पहले सिस्टम पहले जगह का मटेरियल उठाएगा, और अगर बाद में अगर वो दूसरे जगह का उठाने जाएगा, पहले जगह भी अगर मटेरियल फिर से अवेलेबल होगा तो भी वो सेकंड जगह का ही लेगा मटेरियल, सही ना? नहीं, अभी मुझे बताइए लेट्स से अगर आप डीमार्ट गए हो, डीमार्ट रिलायंस हाँ यहाँ पे गए हो राइट, और आपको बहुत कुछ मटेरियल या प्रोडक्ट आपको जो कुछ है आपको लेना है राइट, हाँ तो आप ऐसा तो नहीं करते कि लाइक मतलब एक एक जगह पे जाएंगे, यहाँ से देखेंगे, फिर से यहाँ पे पीछे आएंगे, फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं पार्ट डिसाइड करते हैं राइट। हाँ हाँ राइट, एक एक ओके हम ओके आगे ओके से जाके पीछे से जाते हैं क्योंकि उससे टाइम सेव होगा राइट। हाँ हाँ फॉर एग्जाम्पल अगर आप अंदर गए हो वो डीमार्ट के, और एवरी टाइम एक एरिया का हो गया तो दूसरे एरिया को जाने के लिए आप फिर से स्टार्ट पॉइंट में आ रहे हो, हाँ 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 समझ तो गया उसमें सर। टाइम वेस्ट हो जाएगा राइट। यस ओके यस सर समझ गया। सो यस, तो उसके लिए वी कैन यूज एक्टिविटी एरिया। ओके activity area definition is logical sequencing of the bean. So if you go to the activity area right, so is there are so depending on activity you can do that, मतलब कौन सी activity put away के लिए भी कर सकते हैं like this right. So what we'll do is simply generate activity area for all right in single go. So here if you go to the let's say palette, so if you don't, so you can see the activities, there are different activities, see internal, then physical inventory, फिर हमें अभी पिकिंग के लिए करना है, जो आप WCR हम कर रहे हो पिकिंग के लिए, बट आप पुट अवे के लिए भी यूज कर सकते हो राइट। सो आई विल सिंपली एग्जीक्यूट, सब वो सबके लिए हो जाएगा राइट, देन विल गो फॉर 20 ओके, एंड देन किधर गया रैक, ओके नाउ इफ यू चेक दिस वन, सो इससे होगा क्या, जो शॉर्ट सीक्वेंस होगा ना वो बन गया। इफ यू चेक मतलब ये हम जाके मैन्युअली भी कर सकते हैं, ऊपर के जो 3 टेबल है 1 बाय 1 भी जाके कर सकते हैं, बट इससे वो हो जाएगा। नाउ इफ यू जस्ट चेक रैंडमली फॉर एग्जांपल 7500, see storage type activity area 001, sorry is physical inventory right, and then this is storage type, ये वाला नहीं है, not 01 because we have created this, so here you can see not this one, yeah here palette, okay picking, okay inventory, physical inventory replenishment right, मतलब for this activity area this is storage type
right? ये होने के बाद you can simply go and maintain the SBST sort sequence of the bean, right? So ये mandatory है to use WSER, right? अदरवाइज वो काम ही नहीं कर, क्योंकि वहाँ पे वो नहीं दिखा रहा था, राइट? जब से हमने देखा थोड़ी देर पहले तो वहाँ पे नहीं दिखा रहा था, बट अभी दिखेगा. Go to the cross process setting now again and search sequence. Now new entry 7.5, and now if you go for activity area, okay, for example palette, अभी हमें वो देखना है मटेरियल कहाँ से पिक हो रहा है अभी के हिसाब से, so we'll directly maintain that. Okay, rack and palette 20. Okay, so we'll go here, right? Activity picking. Okay, और उसके लिए let's say WOC1 चाहिए. Okay, and then अगर second sequence है, right? So WC2. Okay, I will just delete this line. So you can see sequence number 1, sequence number 2 means system first इसको priority देगा and then sequence number 2 को देगा, right? Now what I will do, let's close this one. Okay, मैं ये task cancel कर देता हूँ. Okay, and save it. Okay, I will again create task. Now only एक ही मटेरियल का करेंगे, right? क्योंकि हमें उसका ही देखना है, right? So okay, is taking rack 1. Okay, हमें palette वाला देखना है. Okay, is palette 20. So what I will do, rack 10 ही था, right? Yeah, rack 10. Okay, pick WC1. Pick WOC2. Okay, ये मैंने maintain किया. Now again I will just refresh. We'll create new task again. Yes, rack 10, right? I will save it. So WSCR में, sorry, activity में दो चीजें हैं, right? Here you can see DEF, right? Default. DEF stand for default. अभी यहाँ पे वो WCR आना चाहिए था, जो हमने WOC1 जो हमने मेंटेन किया है, right? Basically वो आना चाहिए था, बट नहीं आया. क्यों नहीं आया? बिकॉज सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन या मास्टर डेटा नहीं मिला. दैट द रीजन उसने डिफॉल्ट ले लिया. अभी क्यों नहीं मिला? बिकॉज व्हेन यू मेंटेन द सर्च सीक्वेंस, हमने जो अभी मेंटेन एक्टिविटी एरिया के लिए किया था, राइट? तो वी आल्सो नीड टू मेंटेन द SBST. ओके, जो हमने बीन के लिए मेंटेन किया था, कहाँ पे? यहाँ पे हमने सीक्वेंस मेंटेन किया कि ओके, इस एक्टिविटी एरिया दिस पिकिंग, दिस इज फॉर दिस एक्टिविटी, ये WCR ट्रिगर होना चाहिए. और उसके लिए हमने एक्टिविटी एरिया में वो जो सीक्वेंस था बीन का, गो टू हियर. ओके, सॉर्ट सीक्वेंस फॉर एक्टिविटी एरिया. यहाँ पर ब्लैंक है, मतलब वो मेंटेन है, राइट? वो बीन के लिए है, ये वाला जो था पिकिंग, राइट? ये मेंटेन है बीन के लिए, बट हमने इस बीन का सीक्वेंस मेंटेन ही नहीं किया है, मास्टर डेटा. वो कैसे मेंटेन करना है? SBST जाना है. सो इस कटोर एक्टिविटी, यहाँ पे डालना है एक्टिविटी RK10, and then activity you can execute for all also, or you can also execute for specific also, which is pick. Okay, execute. तो ये सर्च सीक्वेंस हो गया इसका, सॉर्ट सीक्वेंस 1 2 3 4, ये बीन ऐसे देखेगा सिस्टम. ओके, नाउ यू कैन सी created successfully. Now if I close this, we'll cancel the same. Okay, then I will go back, and now again I will create. Okay, directly create plus save. Now see कौन सा लिया? Okay, still DEF लिया, Q,
एक्टिविटी एरिया उसको मिल गया, बट व्हाई नॉट दिस वन IDEF? So let's check. Yeah, it's the first sequence. System is not able to fulfill some condition. समझ में आ रहा है ना क्या देख रहा हूँ? हेलो सर थोड़ा थोड़ा। ओके, सो हमारा बीन तो ट्रिगर हो गया, राइट? आर्केड 10, राइट? बट वो जो एक्टिविटी जो हमने मेंटेन की थी WC1 वो ट्रिगर नहीं हो रही है, तो वो हम चेक कर रहे हैं क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमने शॉर्ट सीक्वेंस भी मेंटेन कर दिया है। हियर यू कैन सी स्टिल कमिंग DEF, यहाँ पे वो आना चाहिए WC1, ओके? बिकॉज हमने कॉन्फ़िग अभी एक्टिविटी तो मेंटेन कर दी, बट WCR वो ट्रिगर नहीं कर रहा है। सो वी नीड टू गो टू दी WCR कॉन्फ़िग सर्च सीक्वेंस, वी नीड टू चेक कि क्यों नहीं कर रहा है। ओके, आर्केड 10 ये वाला, ये उसने वहां पे देना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दिस वो क्या दे रहा है? EF DEF। ओके, सो वी कैन चेक can go to the monitor, outbound document, ये टास्क है, राइट? दिस इज द टास्क, so we need to check सिमुलेशन। सो WOC1 सिमुलेशन मोड में हम देख सकते हैं कि क्यों नहीं ट्रिगर कर रहा है। ओके, तो कुछ एरर तो नहीं दिखा रहा है। सो एरर तो कुछ नहीं दिखा रहा है। सो इस लोडिंग बीन इज फाइन। वेट का भी हमने कुछ मेंटेन नहीं किया है। ओके, व्हाट विल डू, C1 में शुभम इज यू? यस सर। अभिषेक तो लेफ्ट हो गया और कौन तो बीच में आया था वो भी लेफ्ट हो गए। DEF ये क्या है सर अपना? डिफॉल्ट है, वो कॉन्फ़िग उसको नहीं मिल रहा है। सो दो चीजें रहती है, एक तो कॉन्फ़िग नहीं है तभी, और एक मास्टर डेटा मेंटेन नहीं है तभी। मास्टर डेटा नहीं जब मतलब नहीं है तो एक्टिविटी एरिया मतलब समझ में आ गया है, पर हम ये DEF क्या कर रहे हैं? क्या ये डिफॉल्ट सो नहीं है? DF, यस DF डिफॉल्ट मतलब ये गलत है, वो गलत ले रहा है, ओके वो ट्रिगर नहीं कर रहा है। वो WCR जो WC1 ट्रिगर होना चाहिए, राइट? ओके सो वो नहीं हो रहा है ट्रिगर। इंस्टेड ऑफ दिस डिफॉल्ट इट शुड बी DEF, WC1 सॉरी WC1। WC1 मतलब क्या है ये? WC1 क्या है ऐसा? ये कैसा एक्टिविटी WC1, RK10 है? यस ये WC1 मतलब ये WCR जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है ना, राइट? अभी WC1 ही ट्रिगर क्यों होगा? बिकॉज इफ यू चेक द सर्च सीक्वेंस, राइट, हमने यहाँ पे वो डाला है,
राइट कि जब एक्टिविटी एरिया रैक आर के 10 होगा, एक्टिविटी पिकिंग होगी, सो फर्स्ट सीक्वेंस इज WC1, तो ये ट्रिगर होना चाहिए लाइक दिस, ओके ओके जो कि नहीं हो रहा है हमारा। ओके सर, समझ गए। ओके, ये हमने शायद इनबाउंड डिलीवरी में किया था ना सर, इनबाउंड में भी कौन सा वाला? यही सीक्वेंस मेंटेन किया था शायद। ये सीक्वेंस मेंटेन किया था। यस यस। I guess we are missing I guess we are missing the pick path. Let's maintain is for the picking. Okay, it's for picking pick path. So let's maintain this one for both. Okay, now I will again cancel and save. Go back. DF आ रहा है क्यों? सर सीक्वेंस भी हमने मेंटेन किया है, फिल्टर का तो अभी कुछ है नहीं वैसे। ओके, लेट्स डू वन थिंग, जो एक्टिविटी एरिया जो है ना, लेट्स मेंटेन, बट या उसका कुछ इम्पैक्ट तो है नहीं। लेट्स ट्राई दिस वन। पिकिंग /n/SEWM/SBST. Okay, I will go with all now. Internal picking. Hi Sachin. हाय। Oh shit, हमने कैंसिल ही नहीं किया। Can go here. Okay, let's create for all and see. YDEF. Oh yes, I guess yes. Yes, POSC के setting में we had not POSC, it's warehouse task. So इसका determination जो है ना वो WPT से start होता है. Okay, कैसे? So what is WPT for outbound? 2010, right? This one.
तो हमने यहाँ पे क्या किया, हार्ड कोडेड कर दिया था WCR, राइट, जो कि हमने डिलीट कर दिया है, राइट। अभी C1 और C2 है, तो इसको निकाल देना है, ये हार्ड कोडेड के लिए। अभी सिस्टम वो WCR कैसे देखेगा, लास्ट टाइम हमने हार्ड कोडेड कर दिया था, बट इफ नाउ हमें ऐसा चाहिए कि उसने जाके सीक्वेंस देखना चाहिए। सो ये जो है WCR एक्टिविटी एरिया, इफ यू चेक इज ब्लैंक, राइट। ब्लैंक मीन्स क्या, सोर्स, सोर्स मीन्स व्हाट, सोर्स मीन्स व्हाट, जहाँ से मटेरियल पिक कर रहे हैं ना वो तो। एग्जैक्टली, सोर्स मीन जहाँ से मटेरियल पिक कर रहा है, राइट। तो विल जस्ट सेव इट। तो हमने खाली जो हार्ड कोडेड था, जो हमने POC के लिए किया था, वो हमने ब्लैंक निकाल दिया, तो वो अभी जो कि वो सर्च सीक्वेंस देखेगा। Okay, so I will select now and I will cancel. See, small छोटा सा छोटी सी एंट्री भी कितने बड़ी इम्पैक्ट कर सकती है SAP में। So now if you check, now it should work. See, WC1, okay. अब ये WC1 क्यों लिया, बिकॉज एक्टिविटी एरिया का कॉन्फ़िग है, एंड देन सीक्वेंस, जो हमने सीक्वेंस मेंटेन किया है, राइट। The first sequence is WC1, that's the reason, as simple as that. Sequence number 1. ओके, रैक में सीक्वेंस नंबर 1 इज WC1। अगर मैं इसको 2 करता हूँ, देन इट विल गो फॉर 2, राइट। 1 और 2 को मैं रिप्लेस करता हूँ, राइट। नाउ इफ यू चेक, यहाँ भी 1 हुआ है, राइट। तो क्या होगा, 2 होगा, राइट, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द सीक्वेंस नंबर ऑल टुगेदर, राइट। जो पहले 2 था, जो पहले 1 था, हमने खाली 2 कर दिया, राइट। क्योंकि लेट्स से 2 अलग अलग सिनेरियो है, सिस्टम SAP बिजनेस को ऐसा चाहिए, ओके। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। बट ऐसा हम हर टाइम चेंज तो नहीं कर सकते कॉन्फ़िग में जाके, राइट। एवरी टाइम वी कैन नॉट से 1 2 1 2, हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते। और जो हमने एग्जांपल पहले डिस्कस किया था वेट वाला, राइट, कि वेट इतना हो, तो लेट्स से वो वेट का जो है वो 1 में है और नॉर्मल प्रोसेस 2 में है, राइट। मतलब उसने पहले जाके वेट देखना चाहिए, अगर वो वेट है तो फिर वो 2 में जाएगा, नहीं तो 1 में जाएगा, लाइक दिस, राइट। बट ये सिस्टम को कैसे क्या पता कि 1, क्योंकि वो हो तो हर टाइम 1 और 2 में देखेगा, राइट। सीक्वेंस वो ऑलवेज, सिस्टम ऑलवेज गिव द प्रायोरिटी टू सीक्वेंस नंबर, जो भी हमने इनबाउंड में देखा था, आउटबाउंड में देखा था, स्ट्रैटेजी के जैसे, राइट। इट विल चेक, ओके, ये दिस वन फॉर दिस एंड देन आई विल गो विद दिस वन, आई विल गो विद सीक्वेंस नंबर 1 एवरी टाइम, right? But now we want that system, forget about the sequence, system need to go with some data, master data or something like that, okay. So for that, right, we have something called filters, okay, filters. So in filter there are 2 types of filter, item level filter and subtotal level filter, okay. So first we'll go with item level filter. In item level filter we can go with maximum, minimum, weight, volume, okay. Then root, wave category, that we'll check later, and then full palette withdrawal we'll check with LOSC. Is very mm, good or like interesting concept, but that we'll check later, okay. So what we'll do, we'll create filters, okay, new entry. So filter 1, okay. So filter 1 में क्या होगा, up to 6 kg 6 kg, okay. So whenever the weight is up to 6 kg, तब ये filter चलना चाहिए, and then is that item level filter. Now up to 6 means maximum 6 kg, बराबर, max to max 6 kg अगर है, राइट, मतलब 6 के अंदर कौन सा भी मटेरियल है तो ये
ये मटेरियल सॉरी ये WCR या ये फिल्टर उठाएगा. Okay, again maximum 6 kg, and then we'll create one more filter which will say minimum 10 kg for example. Clear? Again item level filter, minimum 10 kg. मतलब 10 kg के ऊपर अगर वेट है देन ये फिल्टर लेना चाहिए, मतलब 12, 13, 15 kg वेट है तो. क्लियर? अभी मैं क्या करता हूँ, जो फिल्टर है ना ये सिंपली मैं जाके जो अपना WCR जो रूल है सो 1 में मैं क्या मेंटेन करता हूँ, यहाँ पे आप फिल्टर मेंटेन कर सकते हो. 1 में मेंटेन करता हूँ filter 1 which is for up to 6 kg. Okay, और 2 में मैं मेंटेन करता हूँ filter 2. Okay, but now we need to check weight, so we'll go to the /o mm02. Okay, or semi material. So first of all we'll cancel this task. So obviously we need to create new delivery because he already created a, right? So इसमें will be weird 464 sorry 646. Okay, basic data. So इसका 5 kg, so it's fine, already 5 kg है. Okay, so we can use this delivery. Okay, so again I will try to create task. अभी ये किस इसमें आएगा, कौन से फिल्टर में आएगा ये? पहले फिल्टर में. Right, so we'll see. We'll create plus save. We'll go to the confirmation. WC1, right? But sequence wise if you check, हमने sequence को हाथ नहीं लगाया. Sequence is still 2. WC1 का sequence 2 है अभी भी. See, okay, but because of weight सिस्टम ने देखा कि ये सीक्वेंस जो 1 है विच इज WC2 जिसमें वेट 10 किलो के ऊपर चाहिए तो वो फुलफिल नहीं हो रहा है. दैट द रीजन इट गो फॉर सीक्वेंस नंबर 2 विच इज WC1. क्लियर? नाउ इफ वी क्रिएट न्यू डिलीवरी PL ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो विथ 3 पीसेस. 15 kg हो जाएगा वो. राइट, I'll save this, then I will just go and cancel this task. नाउ मैं कैंसिल क्यों कर रहा हूँ कि मुझे चाहिए वही से वो मटेरियल पिक करे. दैट द रीजन, दैट्स ऑल. यू कैन जस्ट इंक्रीज योर स्टॉक and then yes, you in your case you should go for end-to-end process. Don't skip anything. Okay, now there's 3 pieces, so we'll see what system will do. सिस्टम को स्टॉक एक बिन में मिला ही नहीं, दैट द रीजन उसने उसको अलग अलग बिन से उठा लिया. सी, ओके, सो व्हाट वी कैन डू, ये कहाँ से लिया इसने, LS10 से. What I will do, go to the monitor. Okay, storage and pin, physical stock 646. Okay, so जो LS10 जो है it will
First of all, we need to cancel this task again. Okay, LS10 वाला जो है इसको मैं मूव करता हूँ from here. WPT in this case it is 99, RK10, any bin, create. Okay, now let's see. Still it is going with different bin because of the GR date. Different bin से क्या होगा फिर? Condition satisfied जो हमारी होनी चाहिए, right? If you check, yeah, WC में था, right? 2 में था. ये वेट का हर टाइम कंफ्यूजन हो जाता है, कौन से इसमें मेंटेन किया है. Oh sorry, see, maintain in volume, it should be in weight. Save it. वैल्यू में मेंटेन किया था, वेट में मेंटेन करना चाहिए था मिनिमम 10. C1 ही जा रहा है बिकॉज एक्टिविटी एरिया मार्केट 10 1 में कौन सा मेंटेन किया है. ओस ऑन द सर्च सीक्वेंस से 2. should go for 2. There must be some small issue. Let me check again. For example, if we maintain, let's say minimum 7, क्या रिजल्ट कितना था? 6 था, max to max 6. Then is minimum 7 kg. फिल्टर नंबर 2 समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम? हेलो, why it is going for 1 only?
can go and check in monitor simulation mode. W. Okay, this look fine. There is no any error. Number of tasks 15 kg. Let's say maximum 20 if we maintain. Now let's, but yeah, then minimum 35. But yeah, even though it's then it will, I will delete filter number 1 altogether. And then in here, 15. UNDE, undefined conflict. Conflict नहीं मिल रहा है. We are missing, we are doing some silly mistake. Last time भी okay, maximum हमने 6 किया था. Okay, then minimum 7. Filter number 2. Then okay, minimum अगर
Okay. Okay, we'll do one thing. Okay. We'll maintain minimum 7. Okay, minimum weight. Copy this one, filter 1, and then maximum 6. Okay. Max 6. Okay, and then weight of the material instead of 5 will go with 2. 6 for 6. Okay. Then PL03NO. Okay, so in quantity, what we'll do for one is we'll maintain 2, and for second line we'll maintain 4. Okay. So we have 4 and 8 kg. Okay. 508. Yes. See, ये हमें करना था 2 and 1. Okay. जहाँ पे क्वांटिटी 4 है, राइट. सो कुछ तो वेट का इशू हो रहा था, राइट. सिली मिस्टेक हो रही थी कैलकुलेशन में, राइट. बट अभी क्या किया हमने कॉन्फ़िग में, एक हमने मैक्स 6 किया था, राइट. मैक्सिमम 6. उसमें हमने वेट कितना मेंटेन किया था, प्रोडक्ट क्वांटिटी हमने कितनी ली थी, 2, मतलब 4 kg, राइट. तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही थी. फॉर सेकंड कंडीशन हमारा वेट कितना था, 8, और ये यहाँ पे था मिनिमम 7, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही थी. क्लियर. सेकंड कंडीशन कैसे फुलफिल हो रही थी सर? हमने तो 8 kg किया था ना, तो मैं या बट यहाँ पे यस मिनिमम ओके 7 ओके है. मिनिमम 7 है, ओके ओके मिनिमम ओके. 7 है, तो वो मैक्सिमम कम से नहीं कम. हमने ये. यस यस यस, राइट. तो ये एक मतलब ये हो गया, राइट. बट लेट्स से अभी ये जो प्रोडक्ट है, एज्यूम करते हैं ऑल दो यार इसका वेट इतना है नहीं, बट मैंने जो बताया कि बिजनेस रिक्वायरमेंट है 1 वेयरहाउस ऑर्डर शुड बी 1 वेयरहाउस टास्क. इट शुड बी 1:1, जो अभी 1:2 है, 1:n है, राइट, बिकॉज ऑफ द वेट. बट अगर ये मुझे 1:1 चाहिए, मतलब एक टास्क में या एक वेयरहाउस ऑर्डर में एक ही टास्क होना चाहिए, डजंट मैटर अबाउट द वेट, राइट. तो अगर ये करना है, सो फॉर दैट वी कैन यूज लिमिट, मतलब सेम इसके लिए हम लिमिट से भी कर सकते हैं. सो आई विल जस्ट क्लोज दिस, कैंसल. सो फॉर लिमिट, okay, so here we can see limit value. Go to the limit, new entry, limit 1 warehouse order is equal to 1 warehouse task. Okay, इसमें क्या करना है, सो यहाँ पे जो मिनिमम मैक्सिमम नंबर है, राइट, अगेन वी कैन यूज दिस.
ओके, सो हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम, राइट? मैक्सिमम 1 item per warehouse order. Again, volume we can use, HU we can also use. ओके, तो हमें कितना चाहिए? 1. तो मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन इस फिल्टर को हमें, ये बहुत कॉमन रिक्वायरमेंट है, ये इंटरव्यू में पूछी जाती है कि 1 वेयरहाउस ऑर्डर का 1 ही टास्क असाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं? सो विद द लिमिट्स वी कैन डायरेक्टली मेंटेन. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डायरेक्टली गो इन फिल्टर 1, सॉरी WCR, और यहाँ पे जो लिमिट है वहाँ पे मैं वो लिमिट मेंटेन करता हूँ. 1 वेयरहाउस ऑर्डर इज इक्वल टू 1. ओके, तो वो हो गया. नाउ विल चेक क्या होता है. सेम टास्क जहाँ पे 2 टास्क एक वेयरहाउस ऑर्डर में थे, राइट? सी क्या हुआ? WC और 1 में 1:1 का रेशियो हो गया, राइट? क्लियर? नहीं सर, नहीं समझा। मतलब ये हमने एक वेयर हाउस टास्क में, एक वेयर हाउस ऑर्डर में एक ही टास्क ये किया ना। यस. सो रेशियो इज, मतलब अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि ठीक है वेट का तो है, राइट? हाँ या लेट्स से वेट नहीं है, वेट को इग्नोर कर दीजिए फॉर एग्जांपल, बट उनकी रिक्वायरमेंट है कि 1 वेयरहाउस ऑर्डर इज इक्वल टू 1 टास्क, मतलब हाँ। एक वेयरहाउस ऑर्डर में एक ही टास्क होनी चाहिए. ओके, बट यहाँ तो पर हम, कैसे शो हुआ वो सर? आपने एक वेयर हाउस ऑर्डर रन किया अभी, तो यस, तो उसमें एक पहले ही केस में टास्क है। क्या हो गया था? यस, अभी वेट कितना है मटेरियल का? 4 kg, 2 kg, राइट? यस। हाँ। और हमने कितने पीस लिए? 2, मतलब कितना हो गया? तो 4. 4। 4 हो गया, मतलब जो कंडीशन कौन सी फुलफिल हो रही है? WC1 की, राइट? WC1, हाँ। बिकॉज उसमें कितना वेट है? मैक्सिमम 6. 6। यस। मतलब बेसिकली उसने पहले क्या किया था? बिकॉज ऑफ 6 था और वो 4 ही था, तो उसने एक ही टास्क बना दिया था, राइट? एक ही वेयरहाउस हाँ ऑर्डर हाँ। बना दिया था और उसमें 2 हाँ। आइटम कर दिए थे. बट यस। अभी हमने उसमें और एक फिल्टर क्या डाला? यस, मैक्सिमम 6 इज फाइन, राइट? हम्म। But at the same time, it should be 1 warehouse order is equal to 1 task. ओके ओके ओके। तो इसलिए Okay? 26 नंबर का टास्क और एक क्रिएट हो गया। Yes, yes. उसमें भी ओके if we say WCR is 1, because उसकी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है इसके लिए भी. इस और मैक्स वो दोनों में 6 दो के दो अंदर केजी ही होगा है. ना सर? यस, दोनों में 2-2 kg होगा. ओके ओके, समझ गया सर। क्लियर? यस सर, यस। एनी क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं, समझ गया सर। समझ गया ना? ये मतलब ये कैसा है ना, WCR थोड़ा सा ट्रिकी है. ओके, क्योंकि हाँ। एक्टिविटी एरिया का कॉन्फ़िग आ रहा है और वो फिल्टर और लिमिट्स एक दूसरे में मास्टर डेटा के हाँ। अनुसार वो ट्रिगर होता है. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बिलीव मी, इवन जो एक्चुअल 3-4 साल काम करते हैं ओके हाँ। EWM में, उनको उनके लिए भी ये बहुत कंफ्यूजिंग है और यही पूछा जाता है इंटरव्यू में. ओके। ओके, अगर आप इतना ही बता दो कि यस वो वेट से भी हम कर सकते हैं या लिमिट से भी कर सकते हैं या वो कैसा बेसिक बेसिक लेवल पे कैसा ट्रिगरिंग होता है, सो हम्म। आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा. ओके, यही जो आपने अभी किया था वही, कि वेट से यस, हम कैसे फिल्टर लगा सकते हैं और लिमिट से कैसे यस, लगा सकते हैं, या फिर यस, एक वेयर हाउस टास्क में, सॉरी, एक वेयर हाउस ऑर्डर में एक वेयर हाउस टास्क कैसे डाल सकते हैं। यस. समझ गया सर। एनी क्वेश्चन? नहीं सर। Okay, okay, then we'll stop.
Okay, sir. Okay, please practice. Yes, sir. As you can see, is very important now, right? Because आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि एक्टिविटी एरिया हमने देखा था, right? इवन हाँ हाँ इनको भी याद आ गया था, सचिन. सचिन को भी. Yes, sir. बट मे भी उन्होंने लेट ज्वाइन किया तो वो थोड़ा सा WSC और उनको कि ये क्या हो रहा है, तो इस फाइन मतलब थोड़ा सा होता है. नहीं सर, प्रोसेस पूरा समझ में आता है, बट जब प्रैक्टिस करते हैं तभी क्लियर होता है. यस, ऐसा तो सब समझ अगर में मैं आ रहा है, इसमें जो आप समझा रहे हैं ना यस कि एक्टिविटी एरिया क्या है, ये आप कैसे कर रहे हैं, ये फिल्टर कैसे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, ये सब समझ में आ रहा यस है. या, और इसमें अगर मैं और एक ऐड करूँ, ओके, और एक छोटी चीज ना, अभी WC1 में जो है, राइट, हमने वहां पे POSC मेंटेन किया है, सी ओवर हियर, राइट, OBD, और हाँ 2 में नहीं है, ब्लैंक है. हाँ मतलब ऐसा एक सिनेरियो कि अगर वेट इतना है तो वो WCR को जाएगा, अगर नहीं है मतलब जो हेवी प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली आउटबाउंड को जाएगा, राइट. जो छोटे छोटे प्रोडक्ट है ऑब्वियसली उसको पैक करना पड़ेगा, हाँ राइट. तो नाउ इफ यू चेक टास्क यहाँ पे देख लिया आप, राइट. सो WC1 में POC ट्रिगर हो गया, वो पैकेजिंग के लिए मटेरियल जा रहा है, राइट. हाँ. और WC2 जो है वो डायरेक्ट लोडिंग के लिए जा रहा है. ओके. ओके, मतलब यहाँ पे और एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगर किसी ने पूछा कि मेरे पास 2 मटेरियल है, एक को हाँ पैकेजिंग होना चाहिए और एक का नहीं हाँ. होना चाहिए, ओके, और इंटरव्यू. ये हमें अभी कॉन्फ़िगर करना है, तो कैसे कर सकते हैं, तो आंसर इज WCR, WCR. राइट. विद मैक्सिमम एंड मिनिमम वेट वी कैन मेंटेन, बट इन दैट वी हैव टू मेक श्योर कि उन्होंने वेट मेंटेन किया है प्रोडक्ट मास्टर में, देन ओनली इट विल वर्क. और फिर WCR में अगर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि WCR में क्या मैंडेटरी है, तो आप बोलोगे एक्टिविटी एरिया, तो बोलेगे यस, और क्या है. सो मतलब एक एक छोटे छोटे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो HBST हमने देखा, अगर HBST हमने किया ही नहीं, शॉर्ट सीक्वेंस बनाया ही नहीं, तो ये ट्रिगर ही नहीं होगा, राइट. WCR रूल हाँ हाँ. उसमें वो क्या था डिफॉल्ट सर, और वो WOCR ना? डी, कौन सा, ये लोडिंग को गया और पैकेजिंग को गया, वो हमने क्या मेंटेन किया था? W. स्टोरेज प्रोसेस, स्टोरेज ओके, प्रोसेस. स्टोरेज प्रोसेस, स्टोरेज प्रोसेस. यस यस. WCR में जाके हमने यहाँ पे स्टोरेज प्रोसेस मेंटेन किया था PSC ट्रिगर होने के लिए. ओके ओके ओके, समझ गया सर. आउटबाउंड मतलब इनबाउंड के जाते वक्त है ना, ये EWM थोड़ा सा बोरिंग लगता है, और जैसे वो आउटबाउंड में चला जाता है ना, तो सब चीजें वो एक के साथ एक मर्ज होके चलती है, तो बहुत मजा आता है सीखने को. सर वही मैंने एक नोटिस किया है कि पूरा WPC में ही ये अपना जो वेयर हाउस प्रोसेस टाइप है अपना, उसमें ही सब सेटिंग है कि अपना मटेरियल कैसा मूव होगा पूरा. यस. और ये भी अभी 2-3 विंडो है, जैसे आप ये बता रहे वेयर हाउस ऑर्डर क्रिएशन टूल है, WOC सॉरी, उसमें यस. मतलब 2-3 विंडो में यही हम जो मेन सेटिंग टॉपिक करते है, हैं उसी के हिसाब से अपना मटेरियल उसी के मूव होता है. हिसाब से. और अगर आप और एक देखोगे ना, सो ये जो WPT डिटर्मिनेशन है, राइट, वही हाँ सब कुछ चेंज कर रहा है. WPT में ही सब कुछ सब चीज है, राइट. अभी WCR का डिटर्मिनेशन भी वही है, इनबाउंड का भी सब वही पे था. हाँ हाँ हाँ. वही वही. सो ओके. यस सर, यस. ओके, देन विल यस स्टॉप. सर, ठीक है. बाय सर, गुड नाइट. यस, बाय. Can you see my screen? Okay. Okay, so we have discussed the wave, sorry,
/CWM/PRDO. So last time we have discussed about the let me just check WCR. Okay. We can check over here all the tasks. I'm sure. Yeah. For example, okay, WCR. So ये हमने check किया था. Okay. WOCR. Then today it's the 11th. Okay. So उसमें एक चीज रह गई थी. That is there are two things, filters, right? Limit we have checked. Filter में yes. Recording is started. Yeah. Okay. So cross process setting, warehouse order. Okay. So we have checked filters, right? But in filters, I told you there are two filters, right? Item level and subtotal level filters. Okay. So the difference between these two is only the consolidation group. Now, what is a consolidation group? Okay, so consolidation group is actually, for example, let's say if you want to pack the, for example, let's say ये दो delivery है, right? These two delivery are from same customer. Oh, let's go for delivery. Sorry. Okay, are from the same customer. So obviously customer wise, they are okay to pick the material, like to pack in one box only, right? This is what happened when we order from Amazon, right? So we are okay if it's, you know, if it's packed in one box, right? अगर हम Amazon से कुछ पैक करते हैं तो, right? Yes. Hello, right? So consolidation group help us to do this kind of activity. It's not only for packaging, okay? Sorry, not only for customer. There are different options then. Okay, so what are the options? So now first of all, how to check? Okay, if you go to the item level, so here you will see consolidation group and pack consolidation is tick. When it's tick, then only we can pack these two delivery, right, into the one box, right? Now if you check 506 and even 507, you will find the number is 1. There is some configuration, right? On basis of that, system create or assign this number. Okay. Now the configuration wise, it's very easy, right? So define consolidation group, right? So here, so basically ship to party that we can use. We can use root also, or priority, or the door. So in this example, so by default, right, is maintained for ship to party. Okay. So it's tick, right? Now, so number range. So if you go to this number range interval group, right? So if you just search for our warehouse, so 0, 1 number, and then internal number range is already maintained. Okay. But where we maintain, or like where we tick this one. Okay. So basically is an EWM menu. If you go, okay, so it's in, yeah, DSGR. This is the transaction.
Okay, consolidation group. So over here you can see, right, partner Tata, this is a consolidation group. So we can create, right, we can maintain the number, and according to that, according to this number, system will allow us to use, system will allow us to do the packing or pick the material. Clear? Hello, is this clear? हाँ सर. Any question? मतलब सर हम जब कस्टमर सिलेक्ट करते हैं तभी हमें अलाउ करता है कि 2 मटेरियल एक ही कस्टमर के लिए पैक करना है. Yes. ओके. That too, while creating the task, obviously you have to select, right? We have to select this like this. For example, if you दो now प्रोडक्ट try, सिलेक्ट करने के बाद कस्टमर yes. सिलेक्ट करना है. Now here you can see system will create task accordingly because it's allowed, right? If it's not allowed, then obviously system will not allow us to create. It will give some error. Consolidation group is deactivated and like this. Because now all the material going to same customer, so it's fine, right? For example of DMart, Amazon. So even we can also use this one in WSER. Okay. Only that in that case, go back. Okay, consolidation group we can use. Okay. Now, can anyone tell me what is activity area? We have discussed activity area, I guess 3-4 times. Hello. What is activity area? Specific area, sir. Specific area. Specifically, I don't get it actually. No, in simple language, what is activity area? तो डोर के बाहर जो एरिया उसे बोलते हैं. Activity area, door के बाहर. जहाँ पर हम मटेरियल जब इनबाउंड मटेरियल जब आता है तभी मटेरियल कहाँ पर रखना है वो करने के लिए एक्टिविटी एरिया यूज करते हैं. वर्क सेंटर रहेगा ना जहाँ पे पैकेजिंग वगैरह करते हैं. हाँ. No, that is a work center. जहाँ पे हम ओके जीआर जोन में करते हैं क्या फिर एक्टिविटी? एक्टिविटी एरिया के डेफिनेशन क्या है? Something like logical sequencing of the bin.
right? Logical sequencing of the bin. Okay, it will be very difficult if it's this scenario. Okay, activity area हमने कहाँ पे देखा था? अब भी just WCR में देखा था, right? This one. That depending on the activity, we can make some sequence, right? Sort sequence हम create कर सकते हैं, right? Now, in warehouse, right? For example, so let's say if you want to pick any material, or in very simple language, in DMart, right? Whenever we visit DMart, right? We follow some path, right? Path means we never go like, okay, we'll first pick this material, then we'll go here, then again we'll come back, we'll pick here or here like this, right? What we do, we'll start from here, then we'll check this aisle, right? Start to end. Let's say from back there is entry for this C, then we'll check the C rack from back side to front side. Again we'll enter in the front side, from the front side into the A again, like this, right? Zigzag, right? So even this also we can do in WCR. जो sorting होगा bean का, right? That sorting we can also do. Okay, so for that sort rules are there. Okay, now there is a consolidation. So again, this is just name and description. Okay, see there is no any F4. So consolidation group and then pick path. So consolidation group means जो अभी हमने group create किया है. So system will create that group, right? And that according to it, system first create the group and then it will create the path for picking, or else we can directly create the pick path. Okay, now if you check this one, define sort field, यहाँ पर भी, okay, consolidation group, so field is DSGPR. Okay, so there are different one. So the consolidation group we can use, or else the pick path. Pick path means, what is pick path? The bin. Okay, sort sequence means activity area का जो हमने config किया होगा, right? वो वाला. And then according to it, system will sort the bin. Clear? Hello? Yes, sir, clear. Yeah. Only thing is that इसके लिए it is mandatory to have material in different bin, जो कि हमारा